Hello. Welcome back to Almighty Blues FC, a fan channel for all to see. और हाँ, it's just a formality यार. कौन मीट करने वाला है मेसी के अगेंस्ट? We all know the stories are written. भाई, the stars are already written. The stars are there. Would you all agree कि यार it's Messi's World Cup? लेकिन नहीं, Mbappe and co will have something to say about it. और उतना ही नहीं, why not Morocco and co यार? क्योंकि यार you have to say कोई भी टीम अगर सेमीफाइनल तक पहुंचती है, दे डिजर्व इट. आई डोंट थिंक हम डिजर्व नॉट डिजर्व का बात कर सकते. इनफैक्ट आई थिंक कुछ कुछ रील्स यहाँ पर वायरल हो रहे. लास्ट मैच का मोरक्को का अगेंस्ट पोर्चुगल का जो दिखा, दे वर एक्चुअली प्लेइंग वेरी गुड फुटबॉल एंड ऑफ कोर्स डिफेंसिवली दे आर राइट अप देयर विद द वेरी बेस्ट इन दिस वर्ल्ड कप. तो देना पड़ेगा. तो देखते हैं कौन जाता है उस वर्ल्ड कप फाइनल में अलॉन्ग विद अर्जेंटीना. बट अगेन थैंक्स एवरीवन जो भी यहाँ जुड़े हैं. एंड यस, थोड़ा अर्ली नहीं, एक्चुअली ये टाइम पर ही है. मैंने एक्चुअली नोटिस किया कि यार मुझे खुद को नोटिफिकेशन नहीं आई. मेरे ऑलमाइटी स्पोर्ट्स अकाउंट में है ना, मुझे नोटिफिकेशन नहीं आई रिमाइंडर का LM10. तो व्हाट आई डिड इज आई पुश्ड इट बैक बाय 10 मिनट्स जस्ट टू सी व्हेदर आई गेट नोटिफिकेशन उसके लिए. और भाई वापस से यूट्यूब भाई साहब, करो करो यार कुछ. पता नहीं, कुछ लोग को आ रही नोटिफिकेशन, नहीं आ रही, कुछ लोग को आ रही है, पता नहीं. आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग. मुझे खुद को नहीं आई आज दोनों बार. तो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था. सॉरी अबाउट दैट फॉर द कंफ्यूजन. लेकिन हाँ, वही है, 11:30 बजे पता ही था हम लाइव होने वाले. थैंक्स अ लॉट LM10 अगेन फॉर कमिंग. बिग शाउट आउट आपको और ऑफ कोर्स एवरीवन इन द हाउस. ग्रैंड पॉटर इन द हाउस. ग्रैंड पॉटर भाई आ रहे, वी आर कमिंग क्लोज टू यू इन टर्म्स ऑफ द सीजन, क्लब सीजन भी. एंड आई नो आज ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ गया चेल्सी से दैट ब्रोया इज आउट. तो दैट्स वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग एज अ चेल्सी फैन. ऑफ कोर्स चेल्सी मैनेजर ग्रैंड पॉटर, क्या बोलोगे उसके बारे में? लेकिन दैट मीन दैट अ सर्टेन क्रिस्टियानो रोनाल्डो अभी भी चांस है? और डू यू वांट हिम, और आर यू लुकिंग फॉर बुकुको एंड द लाइक्स? क्योंकि यार क्रिस्टियानो रोनाल्डो एज थिंग्स स्टैंड, वो सुनने में आया वो मैड्रिड में ट्रेनिंग कर रहा है. आई डोंट नो इफ इट्स जस्ट training or little bit more. Let's go into that deeper later on. Hello FTWB, कैसे हो? Nice to see you always. Hopefully Mbappe will go one ahead for golden boot today. हाँ, नीरज is supporting Mbappe आज के लिए. देखते हैं. Morocco winning on penalties. नीरज, thanks for joining us. Javis Gaming as well. Morocco winning on penalties. तो भाई long night इट्स गोइंग टू बी. भाई अभी 11:30 बजे इंडिया में. तो अगर पेनल्टीज होता है ना, तो दिस मैच विल इजीली फॉर दोज ऑफ यू ऑल वाचिंग फ्रॉम अब्रॉड यार, ये जाएगा 2:30 तक. डू यू वांट अस टू गो देयर? मतलब 2:30 नहीं, ज्यादा. इनफैक्ट 12, 12:30 बजे मैच किक ऑफ हो रहा है. तो आई थिंक इट गो ऑन टिल 3:30 बजे. सॉरी यार, ओ माय गॉड. मोरक्को, इट इज अ टीम. ओ ओके, गुड लक. ओ माय गॉड, आई गेट नोटिफिकेशन. थैंक्स फॉर लेटिंग मी नो. मुझे खुद नहीं आई यार, ये ऑलरेडी स्पोर्ट्स प्लस का क्यों नहीं आ रही है नोटिफिकेशन, पता नहीं. नाइस नाइस टू नो, आज ज्यादा लोग का आई है. हेलो चिदम्बर, कैसे हो? ट्रेनिंग है अंकित भाई. बट आई होप कुछ it's more than that. Honestly, आज देखते हैं. Honestly, you can say that it is France जो एकदम मतलब ऑन पेपर फेवरेट्स है वर्सेस मोरक्को. लेकिन हर एक गेम इंक्लूडिंग द ग्रुप गेम भाई, मोरक्को हैज बीन द अंडरडॉग्स. लेकिन हैवंट दे डन वेल और व्हाट? होपिंग हकीमी FC पुल 1-0 हराम बॉल टुडे. भाई एक्चुअली हराम बॉल नहीं है, वही मैं बोल रहा था एमशे. हराम बॉल नहीं खेल रहे वो लोग खेल रहे गुड फुटबॉल. पीपल फॉरगेट. Yes, they don't score enough goals. That doesn't mean वो हराम बॉल खेल रहे. There's a difference. Somehow people यार, लोग बोलते हैं हराम बॉल वर्सेस देम. भाई ग्रीस तो हराम बॉल खेल रही थी 2004 में. ये लोग नहीं खेल रहे हराम बॉल, जहां तक मैं मतलब कंसर्न हूं. बट अगेन, जो भी लोग देख रहे हैं, फर्स्टली इट विल मीन अ लॉट इफ बाय ईच एंड एवरीवन वाचिंग लाइक्स योर स्ट्रीम. जो अभी नंबर है इजीली भाई 4 गुना हो सकता है. वो कैसे होगा? आप लोग लाइक करोगे, यूट्यूब याद दिलाएगा बाकी लोग को भी कि हम लाइव है. एंड आई हैव आल्सो पुट अ नोटिफिकेशन बोल रहा है, also put a community post, be it on Almighty Blues FC के कम्युनिटी पेज पर या Almighty Sports Plus के कम्युनिटी पेज पर. भाई दोनों ही जगह मैंने डाला है. तो कम्युनिटी पोस्ट सब लोग जो देख रहे हैं, 1 सेकंड लगेगा, जाकर लाइक कर दीजिए. मींस अ लॉट along with liking the stream and my Instagram post अगर you have access to that. देखो, नोटिफिकेशन नॉट गेटिंग, हाउ आर यू? मुझे खुद नहीं आई यार हसीब, कुछ लोग को आ रही है नोटिफिकेशन, नहीं आ रही. यूट्यूब पता नहीं दुश्मन बन रखी है यार हम अपना यार. बट कोई नहीं. आई ऑलवेज से यूट्यूब इज लाइक दैट. यूट्यूब का एल्गोरिथम में बस है यार. इट्स मेंट टू बी लाइक दैट. अमीरों को ज्यादा अमीर बनाना, गरीबों को ज्यादा गरीब बनाना. लेकिन हम तो बीच में आते हैं, तो पता नहीं कुछ लोग को आ रहा है, कुछ लोग को नहीं आ रहा. क्या ही तो बोल सकते हैं. बट अगेन थैंक्स फॉर जॉइनिंग हसीब. बिग अप टू मिकाइल एज वेल. बिग अप ब्रो. कैसे हो? एंड ऑफ लाइन फॉर मोरक्को. दे मे बी एबल टू बीट फ्रांस, बट दे can they beat the referee? Oh, okay. I get it. Absolutely. भाई कहीं ना कहीं I think थोड़ा बहुत सेटिंग नहीं बोलूंगा. It's a subconscious thing where the referees have had softer decisions for bigger teams
in the knockouts? Would it be fair or is it a bit too controversial to say that? I don't know. Being a team जहां पर हमने सफर किया है, मैं तो बोलूंगा वो we are all Morocco, aren't we? भाई, I would have loved to be Morocco आज, honestly. Mikhail, Emshe, ग्राम पॉटर, हसीब, भाई सब लोग जो देख रहे हैं, संजय, FTWB, चिदम्बर, जारविस, ये भी. बट ऑनेस्टली मैं जी चाहता हूँ कि मोरक्को जीते. यस, सो अनलाइक मी, राइट? लेकिन वही, आई वांट दैट वर्ल्ड कप फाइनल टू बी अ बिगर स्पेक्टिकल दैन इवन टुडे. हाँ, अच्छा गेम हो. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द गुड गेम. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मोरक्को प्रूव एवरीवन कि दे आर टोटली मेंट टू बी अ सेमीफाइनलिस्ट ऑफ अ वर्ल्ड कप, जो बोलते हैं ना. जो क्रोएशिया आर्गुबली बोलना चाहेंगे दैट they did not turn up yesterday. They did not turn up. In fact, 30 मिनट्स के लिए अच्छा था. I think मैकायल का मैंने एक ट्वीट देखा था जहां पर I think Kovacic arguably was the best player for Croatia का, लेकिन वही है, he got into a position where he had a 1 second to shoot and Kovacic forgot that, in a striking zone, आप अगर मिडफील्ड हो या डिफेंडर हो, आपको स्ट्राइक करना पड़ेगा भाई. आप वेट नहीं कर सकते, आप पास पास नहीं खेल सकते. अगेन मैकायल, वेरी गुड ट्वीट यार. I just read your tweet just 2 minutes before the stream started, bro. Absolutely. I will talk with YouTube, no tension. Thanks, Graham Potter. I need your influence big time. Not that others are influencing us, but that's how it is. Morocco is playing 5-4-1 and France is playing 4-5-1. चलो भाई, लाइनअप देख लेते हैं. इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि लाइनअप भी शेयर करना है, उसके बारे में हमें शेयर करना है. लेट्स गो टू इट. यस, बिकॉज द लाइनअप इज आउट. आर देयर एनी सरप्राइजेस? यस, there is a surprise and a big one at that. मेरे लिए tactically it's a big one for sure. In fact, दोनों ही टीम्स का है. दोनों ही टीम्स का आप बोल सकते हो. तो मोरक्को आर गोइंग 3 at the back. ये एक डिफरेंस है, क्योंकि दे हैवंट बीन गोइंग 3 at the back. हाँ, यू कैन आर्ग्यू दैट अमराबाद वाज प्लेइंग एज अ सेंटर हाफ, वो ड्रॉप डाउन करते थे जैसे जॉर्जिनियो एंड चेल्सी लॉट ऑफ टाइम्स डज इट, व्हेन वी प्ले फॉर द बैक. लेकिन वो अमराबाद बेसिकली समवन दैट ही प्लेज प्रॉपर इन मिडफील्ड एज वेल. और आज दिख रहा है विद यामिक, बहुत अच्छा यामिक ने कवर किया था for an Agued who is back. Yes, Agued is back. By the way, Agued is the only player who has scored a goal for Morocco or against Morocco इस World Cup में. That's a known goal, unfortunately. उसके अलावा एक भी गोल कंसीड नहीं किया. Saiss, yes, Saiss is back as well, जो injured थे. So that's brilliant to see. Last game में injured हुए थे, but I think let's see if he's 100% fit or not. हो सकता है that 100% fit नहीं है, इसीलिए उसको ज्यादा कवर चाहिए ऑन ईदर साइड, इसलिए ना माजरावी और अगवेड आ गए. दैट्स हाउ इट इज. माजरावी हिमसेल्फ हैज कम बैक बाय द वे आफ्टर एन इंजरी. बट मिडफील्ड जो 4 मैन दिख रहा है, दैट विल बी अगेंस्ट नॉट अ राबियो. यस, जर्मनी है, ग्रीजमैन है ही, लेकिन फोफाना, भाई फोफाना इज प्लेइंग. फोफाना जो जर्मनी के पार्टनर रहे हैं फॉर अ गुड कपल ऑफ इयर्स, आई बिलीव, इन मोनाको, इज प्लेइंग आज एंड नॉट अ राबियो. तो क्या हुआ है भाई? अगेन इन सेंटर हाफ देयर वर रिपोर्ट्स कि उपमैकेनो माइट नॉट बी 100% फिट. लुक्स लाइक इट इज ट्रू, क्योंकि कोनाटे खेल रहा है. इंटरेस्टिंग रहेगा, can Konate do as a left center back what he was doing as a right center back? मेरे ख्याल से he's not a naturally left sided player. That might be an issue. कहीं ना कहीं मुझे लगता है जियेश ओवर कोनाटे ज्यादा भारी पड़ सकते हैं, इसलिए शायद फफाना आया. आई डोंट नो, लेट्स सी. लेकिन मैं अगर बेंच को देख रहा हूँ, अगेन आप लोग बोलिए भाई, बेंच में Rabio is ill. Okay, got it. Shadira तो suspended है. We know that. But apart from that, I think, I don't know, मतलब क्या हुआ यार? मतलब उपमैकेनो यहाँ तो बेंच में दिख रहे हैं. What happened to उपमैकेनो यार? पता नहीं. देखते हैं आप लोग क्या बोल रहे हैं भाई. सब लोग again do not forget to hit that like button. It'll mean a lot if you can do that. Of course, if you can get us to 7K. Again, मैंने कल भी बोला था भाई, there are certain set of people जो रोज आते हैं स्ट्रीम में, रोज देखते हैं स्ट्रीम को, अच्छे से पार्टिसिपेट भी करते हैं. आई एम गेसिंग दैट. और बाद में सुबह होते ही यार, दोपहर होते ही यार अनसब्सक्राइब कर देते हैं. भाई आपको क्या मतलब है यार उससे? आपको एक सब्सक्रिप्शन बटन दबाना है बस, फ्री है एब्सोल्युटली. आप अनसब्सक्राइब मत करिए, आप सब्सक्राइब तभी करिए अगर आपको लगता है कि यार आई एम टॉकिंग सम सेंस. अगर आपको लगता है यू रिलेट टू मी समहाउ, देन ओनली यू सब्सक्राइब. आई एम नॉट पुशिंग यू टू सब्सक्राइब, ब्रो. एवरीवन डू सब्सक्राइब अगर इफ यू फील दैट. एंड लेट्स गेट अस टू 7K एनी, होपफुली विल वर्ल्ड कप फाइनल वी गेट टू 7K एज वेल. ठीक है, with all your help as well. Of course, आज मैंने yearly report भी tweet किया. I know some of you have already seen it, and that's great, all because of your help. Of course, that is just the beginning of maybe things to come, hopefully. Morocco breakfast will be in Africa. Oh, that's a way of putting it, Graham Potter. Hello, Just Joshua, कैसे हो भाई? आज नोटिफिकेशन नहीं आया आपका लाइव का, बिल्कुल. एग्जैक्टली भाई. संजीव भाई, हो क्या रहा है भाई? यूट्यूब से प्लीज एवरीवन डू लाइक माय स्ट्रीम्स, डू शेयर इट, डू
do whatever it possible. Community post जाकर like कर दीजिए because YouTube is not helping me. Sanjeev, thanks for letting me know भाई. France left out Mbappe and Hernandez and Ziyech. Okay, France left off. मैं बता left out. Left off Mbappe, Hernandez, Ziyech. Okay, Mbappe, Hernandez versus Ziyech Hakimi will be a key battle today. Amrabat versus Griezmann will be a key battle. Okay, I hear that. Su बोल रहे आशीष भाई. Su is basically in Madrid, I believe. क्या हो रहा है उसका आशीष? Let me know. Switzerland beat France in Euros. Today it will be Chelsea legend Ziyech beating France. Well, let's see. Let's see. Big up to Mudit. Absolutely. Thanks for joining, bro, as always. MPPAL needs humbling. Why, bro? Why? मतलब बंदे ने किया है. मतलब आई नो लास्ट मैच में ऐसे करके पता नहीं कैसे करके हंसते यार भाई. एकदम निंजा टर्टल लग रहे थे उसमें तो जब केन ने मिस की थी पेनल्टी. बट दैट इज व्हाट ही इज. दैट्स व्हाट मेक्स इन द कैरेक्टर ही इज. Whether you like it or not, that's how he is. Over the years, that's what a lot of people felt about Ronaldo. I think his inspiration is Ronaldo, clear है क्योंकि I think he has जाके पोस्ट भी किया है गोट किंग रोनाल्डो, which is fair. मतलब उसका मर्जी यार. मतलब again we don't like it but needs humbling. Let's see. MC again, much respect to you. How's your leg or hand? अभी हैंड तो भाई बिल्कुल ठीक है. हैंड तो बिल्कुल ठीक है भाई. नाच सकता हूँ, भांगड़ा कर सकता हूँ. टेंशन नहीं है. लेकिन हाँ, पैर लाइक आई सेड, इट टेक अ व्हाइल. मैं आई कैन वॉक अबाउट. हाँ, ये बहुत डेफिनेटली बताना चाहूंगा. अभी ब्रेस निकल गया है एटलीस्ट फॉर द टाइमिंग. ऑल्दो दे हैव आस्क्ड मी टू पुट दिस क्रेप बैंडेज जो मैं नहीं डाला है आज. तो देखते हैं आज कैसे जाता है. आज के बाद आई शुड हैव बीन पुटिंग इट बट इट्स ओके. लेट्स सी. मतलब 2 महीना लगे यार पूरा निकलने में जो भी हो रहा है मेरे पैर में. बट आई थिंक आई एम नॉर्मल. डोंट वरी. बट लेट्स गो. Mbappe, why change the formation when it's working? I don't know. We'll come to tactics. Kylian Mbappe, please यार do it for Ronaldo. डेरेन बोल रहे. Okay, अनुज हाय, कैसे हो? Nice to see you always. Again, like कर दीजिए. By the way, everyone watching यहाँ पे, glad to say that this stream has been powered by Sporticos. Sporticos is a brilliant website. Do check it out. They give a lot of information as well. At the same time, भाई, along with Almighty Blues FC and Almighty Sports Plus, Sporticos is bringing a great opportunity for you. 2 jerseys जीत सकते हैं. उसमें से एक आई थिंक ट्रेनिंग जैकेट भी है. वो कैसा होगा? विद अ लिटिल इन्वेस्टमेंट बट यू गेट टू प्ले विद इट एज वेल एज गेट अ बोनस. तो डू चेक इट आउट. जो भी प्लान है फर्स्ट लाइन में डिस्क्रिप्शन आपको डिटेल्स मिल जाएगा. तो बुकमार्क कर लेना और चेक कर लेना क्या है इफ यू आर इंटरेस्टेड. राइट. They beat Spain on penalties. Okay, luck support them versus Portugal. Now they are here and people support them. My prediction is rain in Africa of tears. Oh my god, बहुत ही ज्यादा रूड है भाई ग्रैम पॉटर. लेकिन कोई नहीं. The honest opinion is that भाई एक बार लकी हो सकता है, 2 बार लकी हो सकता है. They cannot get lucky all the time. Graham Potter, everyone. Again, जो लोग देख रहे हैं भाई, tactically you have to give it. मेरे ख्याल से again आप लोग भी बोलिए, who has been the best coach in the World Cup? For me, along with Lionel Scaloni, it has to be Walid Regragui. क्या नाम है उनका? I don't know how his pronunciation is. That is Morocco के. आज भी देखिए, he has made a change. Tactically he has made a change. वो क्यों किया है? क्या लगता है आप लोग को? The fair reason is that maybe Saiz is not 100% fit, Agued 100% fit नहीं है, Mazraoui 100% fit नहीं है. तो in a back four with that pace जो Dembele और Mbappe रखते हैं, बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है. और अगेन हकीमी का बेस्ट इज एज अ विंग बैक. वी ऑल नो दैट. ठीक है. आई नो लास्ट 2 मैचेस में काफी अच्छा किया था डिफेंसिवली, बट हकीमी का बेस्ट एज अ विंग बैक. प्रॉब्लम यहां पर है कि Ziyech in this formation does not bring out his best. I don't know for whatever reason. हो सकता है that the wing back is too close to him. He needs space around him. वो हो सकता है मे बी. और द फैक्ट दैट उसको बेसिकली चाहिए टू काइंड ऑफ पिंग बॉल्स. तो वहां पर 4-3-3 में ज्यादा विड्थ मिलती है उसको वर्सेस 3-4-3. क्योंकि कभी 3-4-3 में क्या होता है ना कभी ही हैज टू बी इन द इनसाइड फॉरवर्ड एंड नॉट द आउटसाइड. मतलब आप बायलाइन में इतना नहीं रहोगे, आपको इनसाइड आना पड़ेगा. तो यू हैव टू फंक्शनिंग एज द नंबर 10 अ लॉट ऑफ टाइम्स. तो दैट इज व्हाई मे बी Ziyech डज नॉट लाइक इट. अब देखते हैं वेदर दैट वर्क्स, क्योंकि हकीमी के साथ है. आई थिंक ही हैज अ गुड अंडरस्टैंडिंग. लेकिन आई थिंक टैक्टिकली भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज रिमेंबर फ्रांस की जो मिडफील्ड है वहां पर दे डोंट हैव अ राबियो. वो इल है आज. तो लुक्स लाइक फोफाना बीइंग अ न्यू पर्सन इन द टीम, लेकिन हैविंग प्लेड विद जर्मनी वो एक टारगेट बनेगा. तो आमराबाद तो सर फोफाना डायरेक्ट बैटल है. एंड एज वेल एज यू हैव ओनाही वर्सेस जर्मनी. तो अगेन इसलिए 3-man डिफेंस है क्योंकि यू हैव अ ग्रीजमैन फ्री मैन और अग्वेड विल बी टेकिंग केयर ऑफ ग्रीजमैन इज व्हाट आई अस्यूम. तो आई थिंक टैक्टिकली बहुत ही ब्रिलियंट है यार. आई डोंट थिंक देव गॉट लकी. रिमेंबर उनका जो बेंच है इतना अच्छा नहीं है. तो दिस 11 हैज टू डू द जॉब. फॉर मी दैट इज द बेस्ट चांस. अगेन एननेसरी ने स्कोर किया था बट इज नॉट लुक ग्रेट. सच में बोलूं तो उनकी फॉरवर्ड लाइन इतनी इंप्रेसिव नहीं है सिवाय बुफाल के. आप फॉर्म देख सकते हो.
फॉर्म में देखिए क्लियरली, इज इट लक, इज इट रियली लक? भाई 4 क्लीन शीट्स ऑलरेडी, आप देखो 1 2 3 4, एंड द वन क्लीन शीट जो नहीं मिला था वो ओन गोल था अगुएट द्वारा, तो आप देखो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इट्स नॉट लक। एंड ऐसा भी नहीं कि यार 0-0 सब हुए, 1-0-0 था बस, तो आई डोंट थिंक यू कैन कॉल इट लक। अगेन लास्ट मैच पे देयर वर रील्स अबाउट देम प्लेइंग सेक्सी फुटबॉल एज वेल, आई थिंक दे कैन डू द अदर साइड ऑफ द कॉइन, वो भी कर सकते हैं, तो आई थिंक थोड़ा बहुत अनफेयर रहेगा टू टेल दैट दे आर जस्ट लकी और बोरिंग। लेकिन फ्रांस बहुत ही अच्छा है इन टर्म्स ऑफ गोइंग फॉरवर्ड, स्कोरिंग गोल्स फॉर फन, एक्सेप्ट फॉर वन गेम दे स्कोर्ड इन एवरी गेम, और वन गेम में भी उन्होंने चेंजेस किया था। हैविंग सेड दैट, दे हैव ब्लडी कंसीडर्ड इन एवरी गेम, तो आई थिंक इट्स डिफेंस इज अटैक क्लियरली। क्या बोलोगे सब लोग? नॉट फॉर रोनाल्डो टू सेव फुटबॉल। ओके, हाय भाई देवानी, कैसे हो? नो वे मोरक्को गोना बीट दिस फ्रांस टीम with full of superstars and point to be noted in form superstars. Okay, as a Ronaldo fan and overall football fan, I want Messi to win it. Okay, मतलब काफी लोग ऑब्वियसली चाह रहे मेसी का। आज बहुत ही एक मैसेज दिया है, ब्यूटीफुल मैसेज वन रिपोर्टर हैज गिवन टू मेसी। तो आज आई थिंक अर्जेंटाइन रिपोर्टर है, उन्होंने बोला है दैट आप वर्ल्ड कप जीतो या ना जीतो, इट डजंट मैटर, क्योंकि आपने दिल जीत लिया। आपने कैसे दिल जीता है? हार्डली एक हाउस होल्ड होगा अर्जेंटीना में जिसके पास आपका कोई जर्सी या कोई भी प्रकार का जर्सी नहीं हो, बीट बारसा अर्जेंटीना या बीट एनी ऑफ द यूथ क्लब दैट ही प्लेड फॉर, एनीवन, बीट ओरिजिनल और डुप्लीकेट कैसा भी हो, आपके पास है जर्सी। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, कहीं ना कहीं एवरी हाउस होल्ड में देयर इज एटलीस्ट वन पर्सन हु लुक्स अप टू मेसी, who really brings a मतलब who gets a smile looking at Messi. तो कहीं ना कहीं I think Messi has already won it. तो honestly I just want a good game of football, and same चीज मैं फाइनल के बारे में बोल रहा हूँ यार। I just want a thriller. Honestly ये मैं बोलता हूँ as a neutral, मैं तो थ्रिलर चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैंने टीवी ऑन नहीं किया, just noticed anyway. Konate selection is very good. He is very good in headers offensively and defensively and has more pace and good recovery rate than Upamecano. He was not 100% fit for previous games. हाँ फेयर इनफ, लेकिन भाई नीरज आपने बोलना है मुझे, हैव यू सीन कोनाटे प्ले एज अ लेफ्ट सेंटर बैक? आई हैवंट सीन हिम प्ले एज अ लेफ्ट सेंटर बैक इन अ बैक फोर, आई हैवंट रियली। तो वहां पर प्लस रिमेंबर द लेफ्ट सेंटर बैक इज वेरी क्रूशियल फॉर फ्रांस, द रीजन बीइंग वहां पर जियेश और हकीमी है, और फ्रांस के लेफ्ट बैक है हर्नांडस, थियो हर्नांडस हैज अ टेंडेंसी टू मूव इनवर्ड मिडफील्ड में या तो बॉम्ब फॉरवर्ड, तो he's one of the best attacking full backs। लेकिन प्रॉब्लम है when it comes to the defense, उस एरिया में थोड़ा होल क्रिएट हो सकता है। तो आई थिंक फॉर जियेश इट विल बी अ फील्ड यार, अगर कुनाटे डजंट कीप फोकस। लेकिन अगेन वहीं पर आते हैं फोफाना, दैट्स वेयर फोफाना कम्स, दैट्स वेयर दे विल मिस राबियो। याद रखिए मैंने लास्ट मैच में बोला था दैट एम्बापे वर्सेस द राइट बैक वो मेन बैटल होता है ऑफ द ऑपोजिशन, राइट? लेकिन एम्बापे लास्ट मैच में क्या किए थे, कट इन किए थे, तो वहां पर क्या होता है, ग्रीजमैन या राबियो आपके लेफ्ट विंग में शिफ्ट हो जाते हैं फॉर फ्यू मिनट्स, और वो आज मिस हो सकता है क्योंकि फफाना आपके नेचुरल लेफ्ट फुटर नहीं है। दैट माइट बी एन इश्यू। सेकंड वर्ल्ड कप लोडिंग फॉर एम्बापे इज व्हाट एवाना बज सेइंग, लेट्स सी। रोनाल्डो टू रियल मैड्रिड लग रहा है यार, मतलब अगेन द फैक्ट दैट इज ट्रेनिंग देयर प्रीटी श्योर दैट दे विल बी हैप्पी फॉर 6 मंथ्स, मुझे लग रहा है। एंड अगेन देयर आर आल्सो रिपोर्ट्स, आई डोंट नो कहां तक ट्रू है, ये मैं बिलीव नहीं कर रहा, लेकिन रिपोर्ट तो है मैनचेस्टर यूनाइटेड will put in a bid for someone called Karim Benzema, one of the other kings. Man, I don't know what to say. Are thanks, bro. Devani, thanks a lot. Much love to you, Sonak, as well. Referee, after giving 3 penalties to Morocco in 37 minutes, Paytm पर 300 crore प्राप्त हुए। अरे दिवास, थैंक्स, नाइस टू नो। उपमेकानो राबियो इंजरी आउट, हाँ वही है प्रॉब्लम है। हाँ मैंने चेंज किया था जस्ट जोशुआ अगेन बिकॉज मेरी नोटिफिकेशन खुद को नहीं आई थी, तो आई एम लाइक लेट मी चेंज एंड सी इफ आई गेट द नोटिफिकेशन सेकंड टाइम। मुझे वापस से नहीं आई, लेकिन आई नो सम पीपल हैव गॉट, सो दैट्स गुड। One day Ankit bhaiya got a hit 1 million mark and I'll be proud that I was in channel since 2K। अरे तो भाई ब्रिलियंट यार, अगेन मतलब आई कैन प्रॉमिस यू दैट इतना जरूर है जब भी कहीं भी रीच करेंगे भाई, आई ऑलवेज रिमेंबर द पीपल हु बीन देयर always, in my bad times as well as good times as well, or we've had both, let's be honest। at you pata nahi, I don't know about what it is, sometimes it's a matter of just about टेक्निकल एरर्स, क्या बोल सकते हैं, हमारा बैड लक बोल दो। बॉयज इन सलीबा स्टार्टिंग ओवर कोनाटे, आई डोंट डेयर, ये पन इंटेंडेड है, प्रीटी मच श्योर। नहीं, ऑनेस्टली आर्सेनल फैंस आर यू डिसअपॉइंटेड? सलीबा को बहुत ही कम मिनट्स मिले, आई थिंक ये खाली तुनिसिया के साथ में आए थे, वो भी एज अ सब्स्टिट्यूट। कहीं ना कहीं आई थिंक दैट्स अ बिग I don't know, plus point for Arsenal that he's fresh. I don't know what to say.
क्लियरली मुझे लगता है दैट कोनाटे का जो पेस है प्लस उन्होंने अच्छा किया था 2 परफॉर्मेंसेस में, आई थिंक दैट इज व्हाई ही इज बीन गिवन द नॉट जब उपमैकानो मिस कर रहे, और कोई रीजन नहीं। आई डोंट थिंक इट्स अबाउट सलीबा बीइंग बैड अगेन। लाइनअप असेसमेंट, हाँ अगेन मैं फॉर पीपल जॉइनिंग लेट यहाँ पर फिर से मैं शेयर करने वाला हूँ। रिमेंबर पीपल, इन टर्म्स ऑफ स्टैट्स इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी नो दैट अगर मोरक्को यहाँ पर क्लीन शीट रखती है वापस से, remember they will be only one of 3 sides to be doing it, or the previous 2 sides who has got 5 clean sheets have actually gone on to win the tournament. And not just that, we all know that 2010 mein Mata, 2014 mein it was Shirley, 2018 mein it was Giroud, or 2022 mein will it be Ziyech? 4 Chelsea players potentially winning the World Cup, 3 तो already जीत चुके हैं, with them wearing 10, 14, 18 in the respective years, and it might be Ziyech, who knows? तो कहीं ना कहीं that's also important, right? To know as a Moroccan player, just to get some confidence going. लेकिन हाँ, just again मतलब talking about left wing, हमने बात की थी right wing, because right wing of Morocco was the left wing of France is an obvious battle. ठीक है, midfield battle हमने बात कर ली है, like for like होने वाला है, फोफाना चुआमनी वर्सेस अमराबाद ओनाही, और ग्रीजमैन वर्सेस अग्वेड होने वाला है, इसलिए 3 द बैक सिस्टम है मोरक्को का, अपार्ट फ्रॉम नॉट बीइंग 100% फिट विद रिस्पेक्ट टू साइस माजरावी। ठीक है, तो आई अंडरस्टैंड वाई वो है। लेकिन लेफ्ट विंग ऑफ मोरक्को मेरे ख्याल से, और इन माय ओपिनियन लेफ्ट विंग ऑफ मोरक्को इज द स्ट्रॉन्गेस्ट विंग। हाँ आप बोलोगे जियेश हकीमी, अब कैसे बोल सकते हो भाई? आई थिंक जो वर्क रेट है ना, माजरावी और बुफाल ने दिखाया साथ में, भाई ब्रिलियंट। और ना ही बुफाल माजरावी साइस, ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुंडे इज अ मोर डिफेंसिव राइट बैक कंपेयर टू पवार्ड, कंपेयर टू मे बी थियो हर्नांडेज दूसरे फुल बैक में। तो इन माय ओपिनियन दैट प्रेस जो बुफाल करेंगे, थोड़ा सा प्रेशर डलेगा ऑन अ कुंडे, और इसलिए हो सकता है चुआमनी ड्रैग हो जाए थोड़ा सा टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, और वहीं पर आई थिंक बन सकता है ओनाही के लिए एक पाथ, और कैन ओनाही पास इट टू एन नेसेरी एंड गेट दैट ब्रेक थ्रू, दैट कैन बी वन ऑफ द वेज जहां पर वो करे। थोड़ा सा आप बोल सकते हो अनलकी अतियातल्ला, अतियातल्ला का काफी अच्छा गेम था व्हेन माजरावी मिस्ड द लास्ट मैच अगेंस्ट आई थिंक वाज इट अरे मैं भूल गया, पोर्चुगल, पोर्चुगल के साथ खेला था कि स्पेन के साथ, आई थिंक पोर्चुगल के साथ खेला था। अतियातल्ला पोर्चुगल के साथ खेला था, आई थिंक ही वाज द असिस्ट, और समवेयर डाउन द लाइन इज अनलकी। लेकिन माजरावी एंड बुफाल, आई नो काफी लोग बोल रहे फॉर मोरक्को इट हैज बिन आमराबाद, साइस, हकीमी एंड जियश। मैं बोलना चाहूंगा आई स्टिक ऑन माय नेक, आई नो बुफाल 90 मिनट्स नहीं खेलते, लेकिन फॉर मी बुफाल का जो प्रेस है, आई थिंक दैट इज सेकंड टू नन। आई नो बुनू भी है उनके गोलकीपर, भाई गोलकीपर बैटल भी हो सकता है व्हेन कम्स टू पेनल्टीज, वी ऑल नो दैट। एंड यस आई नो कल लिवरकोविच डिड नॉट लिव अप टू दैट एक्सपेक्टेशन, लेकिन विल बुनू लिव अप? बुनू ज्यादा एक्सपीरियंस है, सो आई थिंक ही कैन। couldn't come after the game ended because I was in tears seeing Messi smile. अरे no problem यार, मतलब हम उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे विशाल, absolutely. The Sioux legend has been training in Madrid ground, but वो अकेला ट्रेन कर रहा था, not a teammates. But क्या ये तूफान आपने आने से पहले की शांति है? पता नहीं है, देखते हैं। विशिंग, अरे थैंक्स ब्रो, मच लव टू यू मिकाइल, ऑलवेज यू नो दैट। या एग्जैक्टली, पता नहीं वो क्या क्या मिलता है उनको, क्या संतुष्टता मिलती है लोग को यार वो करने से, आई हैव नो आइडिया। एनीवे थैंक्स दिवानिक बोलने के लिए, वो माता वोर, या एग्जैक्टली जैसे मैंने शेयर किया जस्ट हुआ था, थैंक्स फॉर शेयरिंग। ओके, फ्रांस जीतनी चाहिए बिकॉज इफ अर्जेंटीना विल थ्रैश मोरक्को इन फाइनल देन पीपल विल से अनडिजर्विंग फाइनलिस्ट्स। ओके, आप यहां पर बोलिए, सब लोग जो भी देख रहे सब लोग बोलिए, which has been the best वर्ल्ड कप फाइनल जो आपने देखा है? इट मे नॉट बी लाइव, मेरा वर्ल्ड कप फाइनल तो आपने काफी देखा होगा इवन प्रीवियसली। कौन सा बेस्ट वर्ल्ड कप फाइनल है जो आपने देखा है अभी तक? मेरे ख्याल में है बेस्ट वर्ल्ड कप फाइनल, भाई मैं वापस 2006 में अटक के रहता हूँ यार, मैं 2006 वाले ही मैं बोलूंगा। ऑनेस्टली मैं वो 2010 का बोल सकता था, लेकिन हारी थी मेरी टीम, लेकिन बहुत टैक्टिकली इंटरेस्टिंग था। लेकिन आई थिंक 2006 में सब चीज मिला था आपको, पनेन मिला था, आपको ड्रामा मिला था व्हेन कम्स टू हेडबट, आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिला था व्हेन कम्स टू पेनल्टीज, बहुत अच्छा एक टैक्टिकल प्लॉय मिला था। तो मुझे लगता है 2006 ही बोलूंगा, लेकिन अगेन आई माइट एक्चुअली से दैट टैक्टिकली 1998 वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था, सच में बोले तो। लेकिन हाँ, लेट्स सी, ऑनेस्टली आई वांट फ्रांस टू हम्बल मोरक्को फैंस, ओ माय गॉड। France 3, Morocco nil. By the way, I don't care Messi wins the World Cup or not, but where are those fans who are triggering Messi? Where is Messi? हाँ, Messi is in finals. अरे संजीव यार बिल्कुल,
I know your people are saying it for fun, but some people are actually being serious that Mbappe needs to beat Argentina to save football. Man, what do you mean by save football? Why so hatred, man? I think no, Aritra. I think the meaning is यहाँ पर मैं बता सकता हूँ, Aritra. मैं आप तो मुझे जानते हो, ट्राई क्या मतलब है, मैं बिकॉज यहाँ पर मेरी टीम है नहीं तो मैं तो न्यूट्रल ही हूँ. देखिए, आई थिंक या देयर इज वेरी थिन लाइन. आपको वो लाइन नहीं क्रॉस करना चाहिए. आई गेट इट आदित्य, बिल्कुल जो लोग के लिए बोल रहे हो आप, बट एट द सेम टाइम आई थिंक द मीनिंग यहाँ पर है, बिकॉज आई कम फ्रॉम दैट स्कूल एज वेल, कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है, आई थिंक व्हेन यू से फुटबॉल, एटलीस्ट मुझे, आई कैन स्पीक फॉर व्हाट आई सी, दैट मोर देन अर्जेंटीना एंड मेसी, आई थिंक इट्स जस्ट दैट द फैंस इतना ज्यादा कर देते हैं ना हाइप, कि यार पीपल, जैसे मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, जैसे इंग्लैंड का मीडिया है, इंग्लैंड का मीडिया गो मैड विद कमिंग होम ज्यादा क्लोज होता है, तो इस बार इतना नहीं हुआ, लेकिन जनरली दे गो मैड. तो वो एक पागलपंती वाला जो चीज होता है ना, परेशान हो जाता है आफ्टर सम पॉइंट, तो वो फ्रस्ट्रेशन निकल रही है. ठीक है, इग्नोर कर यार, इतना ही बोलता हूँ. ऑन द अदर हैंड, एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं इतना बोल सकता हूँ जरूर से, कि कहीं ना कहीं इट्स ग्रेट एंड एब्सोल्युटली लवली. आई होप दैट द गोट विंस इट. ठीक है, आई होप, आई रियली डू अरेथ्रा. लेकिन ऑनेस्टली मुझे इतना इश्यू भी नहीं है. रीजन बीइंग आई नो दैट a lot of fans unfortunately do not even watch or do not even hear others football, और they have a, एक बोलते हैं ना, एक सेंस बना दिए उनके बारे में. तो कहीं ना कहीं that's what the meaning is when you talk about say football, but I don't think it's meant literally, bro. But कोई नहीं. Again, I hope you guys are not fighting about it. And let me skip a few comments and get in Fateh एक सेकंड, मैं ईयरफोन्स लगा देता हूँ भाई. Yes people, Fateh OP हो जाए in the chat. Fateh is joining us for some time, so hopefully you'll have more fun even. एंड भाई सब लोग जो देख रहे हैं यहाँ पर लाइक कर दीजिए एब्सोल्युटली. एंड ओके, लेट मी ऐड फतेह ब्रो, व्हाट्सअप, क्या हाल है? What's up, Ankit? How are you feeling about yesterday's match? ओ मैन, थोड़ा बात कर लेते हैं. आई नो, बाय द वे यहाँ पर लाइनअप वाइनअप तो बात कर ही रहे हैं, हम टैक्टिकली बात कर रहे थे मैन, बट कल के मैच का आई रियली हैव टू से ब्रो, अगेन फतेह, आई नो ही वाज सपोर्टिंग क्रोएशिया बिकॉज़ ही वांटेड द अंडरडॉग टू काइंड ऑफ विन. अगेन इट्स मोर द अंडरडॉग स्टोरी मोर देन एनीथिंग, बट भाई आई हैव टू से मैन, मेसी इज कम विद अ मिशन. Messi has come with And a mission, and I or think he's all looking of like us, the teenage Messi, bro. Honest, yeah, and almost. yeah, and all I think all of us, like no, but you can't really be sort of you can't hate Messi, like you have to respect Exactly, everything you that cannot. he's yeah You exactly. cannot. And now like looking at it now, now that he's in a final, I really hope he wins it, man, because losing two finals, that'll be too much, man, that'll be too much. Like I really Yeah. hope that I mean he's had a lot of criticism too, with Argentina. 2010 he was criticized, 2014 okay, 2018 I mean the criticism that he took retiring after that Copa America, like all that stuff. So I think if it happens, I think it should happen. हाँ, मतलब वो रिटायरमेंट वाला तो चीज, वी ऑल नो दैट, दैट वाज जस्ट एक रिएक्शनरी वाला चीज. बट अगेन एक क्वेश्चन सब लोग से पूछा था फतेह, एंड फतेह हैविंग सीन सो मेनी फाइनल्स एज वेल, लाइक मोस्ट ऑफ अस, लाइक फतेह, आपके लिए which has been the best World Cup final? So are you looking forward to an underdog versus Argentina, or are you looking forward to France versus Argentina? I think France Argentina will be a fantastic match. My Yeah. first the in 1994, my father didn't let me stay up. He saw the match. I was crying. I was like, "No, let me watch it." He didn't let me. 98 was the first World Cup final I saw, and I was so sad, Ankit. Like at that match, it really broke me. It really destroyed me. 2002, again, I was supporting Germany, so I knew that like the team wasn't as good. So it hurt me, but 2006 was beautiful. I mean, the fact that the match went, the Everything drama was that there happened. in 2006 final. सब चीज मिला आपको ना? Yeah, you got everything: goals, हाँ. great players, drama, the red card, everything that happened after. I mean, I think for Yeah. the next 1 month, everybody was just talking about that final. Like people who didn't Correct, even correct. know there were इनफैक्ट, games made. Yeah, या इनफैक्ट मैं तो वो जस्ट टू ऐड टू दैट फतेह, मैं आई नो हमेशा 2006 बोलता हूँ. फॉर मी ऑनेस्टली द बेस्ट नॉकआउट स्टेज ऑफ एनी वर्ल्ड कप हैज बीन 2006, बट द बेस्ट ग्रुप स्टेज फॉर मी वाज बेसिकली दिस टाइम. आई मस्ट से ग्रुप स्टेजेस में इतना ज्यादा, मतलब yeah, क्रेजी अमाउंट ऑफ रिजल्ट्स, प्लस आई नो काफी सारे yeah. अच्छे गोल्स भी हुए थे. आई थिंक दैट वाज गुड फॉर मी अगेन टू सी. बट अगेन I remember yesterday, I think someone was asking which was that. यहाँ पे डेरेन का क्वेश्चन लेने वाले एक सेकंड में, लेकिन फतेह, मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्योंकि कल का क्वेश्चन मैंने स्टार करके रखा है फॉर फतेह. आई डोंट रिमेंबर हु एग्जैक्टली आस्क्ड द क्वेश्चन, सॉरी फॉर दैट ब्रो. लेकिन किसी ने पूछा था
which side do Morocco resemble of most? In if you see prior World Cups, मेरा एक जवाब था. I don't know if you would agree, but you think it, let me know. As in, people are saying they are like the Greece of Euros, but Greece of Euros did not really play football. Morocco is still about a much better side playing football, like a Hakimi, Ziyech. I've seen them balling as well at times, bro. Yeah, counter Uh, attacks. Yeah, yeah. वहां पर I think Karistias was the guy up front, or Karagunis in Karagunis, midfield. Karagunis. Yeah, 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 Come on, they hardly played football, right? By the way, Fateh, I yeah. don't know if it's my internet or yours. थोड़ा सा lag तो हो रहा है, लेकिन I don't know Maybe. if it's one of us. But हाँ, um, तो you can think and give me the answer about that. But यहाँ डेरेन का question मैं लेता हूँ meanwhile, while Fateh fixes it. Best UCL final giving you nail biting moments and you were like गया अब तो गया. भाई, it has to be 2012 है भाई. 2012 was literally that, bro. As in every second, oh my, ooh, ah, ouch. That was what 2012 का था. Absolutely. Not that 2021 का बहुत easy था. Again, you might think I'm biased, but honestly 2012 और 13 ना back to back years was classic finals. मतलब आई नो दोज आर नॉट ग्रेट हाई स्कोरिंग फाइनल्स, लेकिन मैं उससे Hmm. जाऊंगा बिकॉज 12-13 में अगेन इट वाज रॉबिन डिजर्विंगली बिकमिंग अ हीरो, बट दैट्स हाउ इट इज. ओके, आई थिंक फतेह अभी भी थोड़ा सा तो अटक रहा है. आई डोंट नो, पीपल इन द चैट डू हेल्प अस आउट इफ इट्स मी और फतेह. वन ऑफ अस सीम्स लाइक वी आर I'll be लैगिंग. back in 2 minutes. Then just give me a अच्छा, minute. ठीक है, गो एंड कमेंट, समटाइम्स इट हैपेंस. तो फतेह इज गोइंग टू जॉइन बैक, आई बिलीव. योर प्रेडिक्शन मैच इज वेल फ्रॉम फतेह, ये स्टार करके रखो. आई कम टू द प्रेडिक्शंस, क्योंकि 10 मिनट पहले मैच के, विल कम बैक टू इट इन डिटेल. कल तो मैंने दिया ही था, लेकिन लुक इन द लाइनअप आल्सो, वी आर गोइंग टू डू इट एब्सोल्युटली. हर्ष बेनीवाल इज बैक. फतेह के लिए भी दिखाऊंगा, भी स्टार कर रहा हूँ. आशीष प्रेडिक्शन भी आएंगे भाई, अंसारी, नो नो वरीज. I'm sure remembering his birthday again. नेत्रा भाई, नेत्रा, congratulations. How are you feeling today यार? मैंने बाय द वे शॉट आउट दे रहा अपने जी भाई को. भाई जी भाई का मैंने देखा था आराम से मैकडी में खा रहे हैं वहां पर. तो थिंग इज, व्हेन यू नो दैट योर टीम इज इन द फाइनल, यू कैन हैव सम मस्ती, एंड नेत्रा इज इन दैट मोड राइट नाउ. सो नेत्रा, आज तो बेटर लग रहा होगा आपको. लेकिन हाँ, विच टीम विल विन टुडे? आई थिंक आई हैव अ फीलिंग फॉर फ्रांस. फ्रांस, आई नो देयर आर चेंजेस, लेकिन साथ साथ में चेंज किया है मोरक्को ने भी. तो टैक्टिकली देखते हैं who's going to win. एंड मानव इन द हाउस, ब्रो. मानव, ऑलवेज गुड टू सी यू. एंड लाइक मानव से, सब लोग भाई लाइक्स बढ़ा दीजिए, सब लोग लाइक्स बढ़ा दीजिए. इट मींस अ लॉट. अगेन, आई नो सम पीपल आर गेटिंग नोटिफिकेशन, सम आर नॉट गेटिंग. भाई, आप लोग मेरा मदद कर सकते हो बाई लाइकिंग एवरी स्ट्रीम. और ये भी बताना चाहता हूँ, जस्ट एज अ स्टार्ट, भाई ये जो वर्ल्ड कप का सीजन रहा है बहुत अच्छा रहा है फॉर एवरीवन, बट फॉर अस एज वेल, नॉट टू बैड. कल फॉर इंस्टेंस भाई 3,500 लोगों ने शायद देखा था, उससे ज्यादा ही लोगों ने देखा था, और उसमें से लेकिन लाइक्स भाई 200 भी नहीं आया. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है लाइक्स की कंजूसी नहीं होनी चाहिए. लाइक का दबा दीजिए, दैट इज व्हाट यूट्यूब हेल्प्स, नथिंग एल्स. वो तो फ्री का मिलता है, तो वो आप यूज करिए यार, अपना अपना चैनल समझ के करिए. Denmark of Euros 92 is close to this year's World Cup. Denmark, huh? Actually, Denmark as a team generally, na, in Euros, they have been that kind of a team. I remember the year that they beat even Netherlands, was it? Yeah. Uh, uh, Denmark ousted us. I remember that. What it was it Thomason? I remember Thomason did well against us once. Anyway, तो फतेह is back. फतेह welcome. क्या हाँ, तो coming back to the question, फतेह, तो दो question आपके लिए. One is the resemblance of Morocco to which team, ठीक है? Which is the closest team which comes to mind, and the second thing is the UCL final that you remember. Of course, being an Inter Milan fan, you might say 2010, but again, generally But as a neutral as well. but one final that was very entertaining was Bayern Munich versus Valencia 2001. It went to Yeah. penalties. There was a Mhm. missed penalty. I think Mehmet Scholl missed a penalty. Then later on, Bayern got another penalty. Effenberg scored. I think Valencia scored through a penalty. That was a crazy, crazy final. And the penalty shootout went into sudden death. And then Khan made that save, and like I think they won 5-4 on penalties, and there were many missed penalties in that game. So that was one crazy final. Other than that, you have to talk about, I think, the Manchester Bayern game, the 2-1. I didn't see it live, but that was the first final that I knew about. I read about it, I saw it later on. That was a crazy game. The Chelsea Bayern game, obviously, like what was going on in that match, 2012. What else? I mean, Atletico Real. I mean, there are quite a I few. think actually I missed it. Yeah, Atletico Real actually has to be like, even as a neutral, I would say Both the 2012 के finals साथ were, में 2012 was more like a defensive वाला yeah, चीज. Oh my god वाला moment on yeah. the edge of the seat.
Lekin Yeah. those are baat kar in terms of wow, as in the drama towards the end was crazy. But Morocco is winning this penalty. Sarvesh भाई, Sarvesh big up आपको. By the way, Sarvesh उनका ये भाई सर्वेश का है sportshub.in. और yes, for people waiting for that giveaway, भाई किसी I know I've seen the comments यार, काफी लोगों ने किया है comment about England winning the World Cup, about I myself said that Portugal will win the World Cup, Brazil winning the World Cup. Unfortunately those comments will not be taken into consideration. लेकिन I know काफी लोगों ने अर्जेंटीना को बोला था, कुछ लोगों ने फ्रांस को भी बोला है, लेकिन जहां तक मुझे याद है किसी ने मोरक्को को नहीं बोला है. तो बाई चांस, जस्ट बाई चांस अगर मोरक्को जीत जाती है तो सर्वेश आप डिसाइड करना भाई किसको देना है अपने को गिव अवे. लेकिन जहां तक मुझे याद है किसी ने मोरक्को को शायद ही बोला होगा जो जीत रही है वर्ल्ड कप. लेकिन हाँ, कमिंग टू द लाइनअप एज वेल, फतेह, there are changes, bro. There are Yeah. changes. I No don't know whether it's Rabiot. panic stations, but No. what is your assessment? Three at the back jari bhai Morocco आज compared to the previous matches. और Fofana खेल रहे हैं and Rabiot is injured, I believe, or ill, as well Rabiot as and Upamecano. Upamecano have both gone out. Correct. So I mean, look, you last match we saw it, and you called it. You said that okay, Rabiot is doing well. I think you called it even when we did that France wala show. You said okay, look, Juventus, he's doing well. So you already knew that Rabiot is perhaps the heart of. We can't say the heart. I think the heart would be Griezmann, but he was a very good performing midfielder. So I think this is going to be. It could be. Yeah. I mean, I think you called it before the England game. You called it even before the tournament started. So Ankit, I think तो आज बेसिकली ग्रीजमैन हैज हिज टास्क कट आउट बिकॉज yeah. एम्बापे वाला पोजीशन, लेट्स बी ऑनेस्ट, एम्बापे should have a license to roam around, no, and being Mbappe, right, as in. तो और Theo Hernandez might be just flanking, ज्यादा मतलब इनवर्ड नहीं आएगा, या तो वो डायरेक्शन रहेगा या तो ग्रीजमैन should be going there, और वहीं पे फोफाना will be key, right. But again, आज कोनाटे लेफ्ट सेंटर बैक में खेल रहे, तो जियेश हकीमी जो अटैकिंग वाइज, आई थिंक दैट इज द मेन फायर पावर ऑफ Yeah. मोरक्को. So Konate is not naturally a left center back, is what I've called. So as in, do you see Konate winning the battle? क्योंकि बंदे में है, pacer strength तो है, लेकिन Fofana probably will be stepping back, but I don't think he's naturally left-footed, is he? So maybe Theo Hernandez might be asked to just stick there on the byline and not come in. As in, who do you see winning that battle? Ziyech Hakimi versus that See, left defense of France. no, on paper, I think Hakimi and Ziyech will actually have to defend far more. Like they can't just take chances and go ahead and whatever. But on the counter, I think we know that Theo is suspect at times. Like primarily because he's so far forward, like not because of the ability. I think ability wise he's good, but then like if he overcommits. So I mean, I think last night also the first 30 minutes I thought both the teams were very cagey. I expect the same even today, unless until Mbappe has something planned or Griezmann. So I expect both teams to be sitting back, be cagey. And you said to me that like what team does Morocco remind you of? Somehow I feel like 2002 Germany and 2016 Euro Portugal. ओके, इंटरेस्टिंग. तो मतलब आप Because थोड़ा ऊंचा बता दिया. मैं आई रिलेटेड इट टू 1998 पैराग्वाय. they were unbreakable. एग्जैक्टली, मोरक्को इज दैट. Yeah, exactly. Yes, yes, एक yes, गोल yes. कंसीड किया बस. एंड अगेन Yeah. पैराग्वाय, इफ यू रिमेंबर, दे हैड अ कपल ऑफ गुड फॉरवर्ड्स, ठीक है, वी वर लाइक ऑन द पेस. तो आई थिंक Santa मोरक्को Cruz हैज and दैट one सेम other one. थिंग विद जिएश बीइंग देयर एंड विद बुफाल बीइंग Uh, देयर. तो that's a आई very थिंक good कहीं ना call. कहीं, That's a very good call. हाँ, दैट, And yeah. Because Paraguay, they lost that game to a golden goal, the first golden goal. एंड दैट And वाज टू फ्रांस. 2002, they were nil-nil with Germany till the हाँ. 92nd minute, I think. And then Germany scored the winner, which was deep in injury time, 1-1-0. So, I mean, yeah, very good shout. Like, yeah, and very physical या team. जस्ट रिफ्रेशिंग मेमोरी. हमने बात भी की थी उसके बारे में इन द बिल्ड अप टू द वर्ल्ड कप फॉर फ्रांस. आपको याद हो, फतेह वाज देयर इन द Yeah. वीडियो वेरी मच Yes, सो. yes, yes. I remember Morocco watching. reminds me of Ghana of 2010, and even that Ghana team deserved semis. People were rooting for that under. अरे भाई, सुआरेज ने चेंज कर दिया. पलट दी थी सबसे. बाय बाय फ्रांस. बोला धीरज. Just while in the chat, Just while, always good to see you as well. Again, yes, we've had a very good year in terms of YouTubing Just while, and Just while has been part of the team very much, supporting the Yeah, channel I from remember this. almost month one. So that's a big up to Just while as well. But again, just a start. Hopefully we'll have double the year that we just had. And yes, Morocco is not to be taken lightly. If France reach, yeah, ये मैंने पढ़ा था नीरज का,
एंड दैट्स द वन रीजन जो मैं आई नो डीडियर डेशम्स का भी आपने बोला था पॉइंट दैट ही इज द नेक्स्ट चेल्सी प्लेयर ही हैज वन इट विद चेल्सी एंड ऑफ कोर्स नॉट जस्ट दैट ऑफ कोर्स यू नो हैविंग लॉट ऑफ टीममेट्स हु प्लेड फॉर चेल्सी एज वेल यू नो हमने बात भी की है पहले फतेह लेकिन द बॉटम लाइन इज नीरज का पॉइंट एकदम करेक्ट है फ्रांस Yeah, हैज बीन द डोमिनेंट फोर्स इन for दिस me. सेंचुरी okay मतलब after 90s at least even from the time I have been 98, born 2006. Yeah, absolutely. 98, correct 2006, 2018, and 2020. Wow, yeah. Four finals France we've has been seen the that. dominant force. So, kahin na kahin, I think this has to stop. Sorry, France fans. Sorry, PSG fans. Especially, I know a lot of them are PSG fans, but it's what happens. But again, I request everyone to like the stream here. Manav, thanks a lot for reminding everyone. It is required. Like, everyone watching, again, is just a press of a like button. I know, again, खाली 70% लोगों को notifications आ रहे हैं. For whatever reason, YouTube has decided not to give to 30-35%. तो भाई वो कैसे हो सकता है आप लोग ज्यादा लाइक्स करो ना तो यूट्यूब को बताएगा यार स्ट्रीम की यार कम ऑन अंकित का भी यार चैनल है उनका भी रिमाइंडर्स दीजिए करें और इट्स जस्ट द प्रमोशन व्हिच ऑटोमेटिकली हैपेंस एंड टॉक अबाउट प्रमोशन आई हैव टू प्रमोट स्पोर्टिकोस बिकॉज आई बिलीव इन देम this stream has been powered by Sporticos, and yes, that's a fantastic website. Do check it out. They might be fairly newish in the market, but trust me, they know their stuff. So do check out. Pehla line in description has that. Plus, there is a great possibility जहां पर आप जीत सकते हो not only a jersey of your favorite club or country but also a training jacket of your particular team, right? So whichever you want. So go for it. With a few little investment you can get two jerseys at the cost of one plus some bonus. So play around absolutely मैं तो बोलूंगा वही just while I just confirmed that she didn't get the notification. Yes, I myself did not get the notification on Almighty Sports Plus. I don't know Fateh did but I don't know. Let's see. अगर भैया एक बारी कभी रूम टूर दे दीजिए भाई सईद अभी तो रूम टूर तो देना ही है लेकिन अभी बनाना है यार अभी तो शुरुआत हुई है अभी तो अभी रूम को फिल करना है इसलिए लोग पूछते हैं आपका दीवार पीछे खाली क्यों रहता है भाई खाली रहता है क्योंकि हमें बनाना है इट इज वही है धीरे धीरे विल काइंड ऑफ गेट देयर लेकिन हाँ देयर इज अ लॉट फतेह नोज इट आई थिंक ऑफलाइन आई हैव शोन टू फतेह एंड टोल्ड हिम एज वेल Yeah, तो ऑल द जर्सी जो आप देख रहे हो पीछे आई विल नॉट क्लेम कि एकदम ओरिजिनल है प्लेयर की जर्सी है लेकिन ऑथेंटिक आई कॉल देम बिकॉज दिस इज एक्चुअली मैं तोड़ दिया जोश जोश में तोड़ दिया माइक this is actually a collection. So yeah, I think here, which you see the Lampard, I don't know if you can see MP. I know yesterday Lampard yeah. jersey. It was actually bought in 2005, and people saying that चलो यार भाई खरीदा ही है. भाई 2004-5 में फतेह आप बोलो यार कितना डिफिकल्ट था ढूंढना एक Yeah, जर्सी कुछ नहीं लैम्पार्ड मिलता का था इंडिया में स्पेशली तो कुछ नहीं मिलता था. ठीक है तो लैम्पार्ड का जर्सी उसके पीछे टेरी का जर्सी है 2004 में खरीदा हुआ है उस सीजन का है यहाँ पे जो कोल का जर्सी है 2006 का रेड वाला वो हाँ, इंग्लैंड का हाँ. जर्सी है 2006 वर्ल्ड कप का जहां पर ही वाज मैन ऑफ द टूर्नामेंट फॉर इंग्लैंड देन Hmm. यहाँ पर आई थिंक द येलो वन इज लैम्पार्ड अगेन ये 2006 का है उसके बगल में रॉबिन का है नेदरलैंड्स जो फ्लैग है 2010 का है जर्सी वाका वाका वाला इट इज रॉबिन नंबर 11 आप पुराना हो गया तो मैं पहनता नहीं हूँ but yeah, that's how it is. So most of them are there. And yes, my first jersey was Beckham. For people think it's only Chelsea and Holland. No, yeah. My first jersey was Beckham's, and that's how it is. I always love football, first of all. But कोई नहीं, I'm not a Manchester United fan. Huh? People wondering for Chelsea fans. I used to be a Beckham fan for sure. Yes, MJ मैंने काफी बार share किया है. भाई, Fateh, have you seen this? Yeah, I've So seen. Yeah, 2000 Mata, Chelsea yes. player, he won the World Cup. Shirley, 2014 Chelsea player, wore 14 shirt, won the World Cup. 18 Giroud, I don't know. Are you superstitious, Fateh, by the way? I'm not, but these things do come. They do end up coming true. Like there was that stat that every 24 years Italy wins the World Cup. Like they're in the final. Like every 14 or I don't know 70, 80, 90. Yeah, something like that. And that kept Haan, happening till 2006. So I don't yeah, know. I mean, maybe like there is some truth to it. And last year, I don't know. It could be, but exactly. do you think that see, we've never experienced a non-European, non-South American team lifting the World Cup? So do you think that can actually happen? Like that is massive. An तो African country winning. एक्चुअली एक और चीज मैंने कल नोटिस किया आई थिंक कल एक बहुत ही एक कंट्रोवर्सी होता है कम टू मानव कमेंट बट आई थिंक जेमी कैरेकर ने बोला था इंग्लैंड का मैनेजर होना चाहिए इंग्लिश एंड देन आई Huh. वाज लाइक क्यों भाई एंड देन आई नोटिस्ड actually for men's world cup other than localite no other manager the foreign manager has won a world cup I'm like so at least in modern times at least in the time मैंने जब तक जन्म लिया है do you remember a foreign manager actually Hmm. winning a world cup for them I don't मैं I went back and checked 94 से at least I counted literally जहां तक मैंने देखा है it Yeah. has been a Brazilian in 94 a Frenchman Yeah. in 98
2002 में it was a Brazilian, obviously Scolari. 2006 में obviously it was as an Italian. 2010 में हमें पता ही है भाई, it was Spanish all around. And 2014 में again it was if I'm not wrong, Low, who was German. And 18 में तो भाई Deschamps again, right? So it's all their country का ही manager है, and that's a great thing in itself. I Yeah, don't know if and it means something. that is what was said. I also heard this, when they were talking about having Thomas Tuchel take over England or whatever. And then, there was this one guy whose comment I sort of heard somewhere early in the morning today, who said that, look, like this is pretty much the only thing that's left. Like EPL is such a global, thing. So the only thing that's sort of left for somebody native is to get this job. And then if you look back, England tried with Fabio Capello, and that was horrible. Yeah. With Sven-Goran Eriksson, it was good. And I remember, Ankit, I remember हाँ. when he took over in 2000, it was, I remember because see, 1998, Glenn Hoddle, whatever happened, 98 World Cup, he resigned. Kevin Keegan, English legend, came on for Euro 2000. They were horrible. They lost the first game of the qualifier 2002 World Cup at home, the last match at that old Wembley, to the old enemy Germany, and he resigned. And they were like, there's nobody, like, who do we go for? Terry Venables is gone, everything has happened. And they went for Sven Goran Eriksson, and he was very good. Hmm. Like, initially, Exactly. he was very good. Like, Yeah. And by the way, ironically, I think यहाँ पर जहाँ तुम कोच पे बात कर रहे हैं, yeah, I have to say Didier Deschamps, भाई, if he yeah. wins another World Cup, his name will be in folklore, bro, as a manager. He'll be I think like, it already is. I mean, he's won the World Cup as a player. He's won the World Cup हाँ, as मतलब a as a man. manager खाली बोल रहा हूँ. अभी people say that Yeah, because he was a player, they think like that. But just as a manager alone, just like let me put it this way. जैसे Carlo Ancelotti has achieved a lot as a player. People might not be knowing. He achieved a yeah, lot, ठीक है? yeah. But in his As a man. initial managerial career, he was always known as the player who became the manager. Then he kind of won so much that now people forgot that he was a player. Yeah. ठीक है, तो वो चीज देशम्स के बारे में होने वाला है, आई थिंक, हो इफ सकता है, he yeah. goes to that. But again, coming to Manav's question or comment, don't know what will happen to Argentina post Messi. That side needs a lot of technicality in players who can Yeah. play between the lines and half spaces. But Manav, you have a point. Having said that, I think they have a lot of youngsters. Remember, भाई आपका है Manav, being a Man City fan. Alvarez is there. I know you need a winger, but remember, Dybala has hardly played any minutes इस World Cup में. Abhi is fairly young. Dybala has another World Cup in him. Pretty sure. I know he's not a Messi, nowhere close. Lekin Yeah. Enzo Fernandez in midfield can have the beautiful pass. He's a very good passer of the ball. और फॉर मी द बिगेस्ट विन फॉर अर्जेंटीना इस वर्ल्ड कप के पूरे कैंपेन और इनफैक्ट कोपा का भी है इज लियोनेल स्कलोनी. भाई टैक्टिकली हाउ गुड इज ही फतेह स्कलोनी? See, I've seen him play for that Super Depot team, Deportivo La Coruña, and he was very या good there. And then I don't know what happened to his career. He moved to Lazio and he really flopped. I mean, he was, हाँ, we देन didn't वेस्ट even, हैम भी आया. yeah. But he still played the 2006 World Cup over Javier Zanetti, which was a very weird choice. But in the end, या इट वाज वेरी okay, whatever. कंट्रोवर्शियल. And the way he took over the Argentina team, they were really, like after 2018, it was, and for him to have shown this much growth, I mean, after losing to Saudi Arabia, he changed a lot of players and he's stuck with it, like Lautaro Martinez is off. Okay, Martinez says that he has an injury or whatever, but he's made those changes and they are working. So full credit to him. And what happens to Argentina post Messi? See, look, I think all nations go through this. Even if you struggle in the next World Cup or not, as long as you win a World Cup, I think that goes down in history. So it doesn't matter what happens after this. Even if there's a rebuild phase, 4 years, 8 years, 10 years, I think Argentina will be okay. They're crazy about football. Talent will keep coming out. और बाय द वे यहाँ पर आई थिंक तनिष्क बोल रहे हैं आई थिंक मेसी विल प्ले द नेक्स्ट कोपा अमेरिका एज दिस फेयरवेल टूर्नामेंट. आई थिंक वर्ल्ड कप के बारे में तो ऑलरेडी बोल दिया दैट इट विल बी द लास्ट मैच फॉर हिम in terms of World Cups. Yeah, I But don't think he needs to. If he wins it, he should just yeah, retire I now. don't think so. He should also. Honestly, I know he's playing arguably Tanesh. Yes, I hear your point. I remember जब Messi का हुआ था that he has not played well with Chelsea and then he came to Stamford Bridge and he made Del Horno suffer. Like suffer जो Yeah, बोलते हैं ना, yeah, suffer, yeah. I proper remember suffering that. दी थी Del Horno को. And I remember Ian Roman ended up defending Messi whole night because Del Horno अपना job नहीं कर रहे थे, ठीक है? That was what happening. So I think somewhere down the line, I think that level of football is what he's playing today, Messi. And but again, मेरे लिए वो है, it's a tournament at the end of the day, right? Expecting him to do exactly the same for the next 2 years and then again a Copa, I don't think so. It'll be fair. 2 years नहीं, एक साल है क्या Copa next साल, if I'm not wrong. Correct me if I'm wrong, people. But anyway, भाई यहाँ पर मैं देख रहा हूँ in terms of lineup कुछ questions आ रहे हैं.
3-4-3 is an interesting play. Yes, just while I did see that question on Agued, Mazraoui, and Saiz. But Fateh, do you think that Morocco are playing 3-4-3 more like tactically man-to-man marking करने के लिए, be it Amrabat and Onahi versus I think Chouamani or Fofana, with Agued taking on Griezmann, or do you think it's to cover Agued himself, Saiz himself, as well as Mazraoui, because all the three are coming back from injury, right? So what do you think has been the ploy? Because for me, even along with Scaloni, this manager has been right up there, not conceding, bro, as an Yeah, almost. and we didn't like. I had no idea who he was before this. Is it right to change whatever it is that you've been playing for France? But at the same time, like you said, they have to go man for man. And no, I mean there are players that they'll have to double and triple up to, like Mbappe and Griezmann. So maybe I think it makes sense because more than the 3-4-3, I sort of look at it. Yeah, exactly. I look at it like this: the five Huh, four one. when not in position, यही होएगा. We all know Yeah, that. exactly. So that makes Huh. sense. That No, makes and sense, this is right? what they've been doing anyway. Like this is what they've been doing, Ankit, anyway. Like all the games, even against Portugal, irrespective of how they Yeah, started. exactly. और तब क्या होता था? Amrabat used to fall back, Yeah, yeah. or Amrabat used to become as. In fact, Portugal के साथ तो he was literally playing a centre half. I would say. The I will center argue half. Yeah, that yeah, वो तो yeah. literally centre half ही खेल रहा था. And एक और हो सकता है on the other hand, हमने बात किया था अबाउट टुडे रैबियो नॉट प्लेइंग, तो Hmm. टैक्टिकली अगेन अनमोलदीप और जस्ट वाला जो बोल रहे थे ना, आप देखिए, मुझे क्या लगता है ना, एम्बापे बीइंग दैट फ्री मैन माइट क्रिएट दैट स्पेस, एंड अगेन हर्नांडez का नेचुरल एबिलिटी है दैट ही विल बॉम्ब ऑन एज मच एज आप Yeah. उसको बोलो कि आप पीछे रहो, यू नो दैट Theo Hernandez is the attacking fullback that you can think of in world football. He will bomb on, or he will come midfield में जब Mbappe is on the wing, नहीं, so that will Hmm. happen, and that will create the space for a Hakimi Ziyech. इसलिए I think to exploit that space, I think they needed that fifth man in defense, In where defense, yeah. Hakimi can be that overlapping guy. और एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा विद जियश, क्योंकि यार दिस इज अ सिमिलर फॉर्मेशन एंड व्हाट ही प्लेड एट टाइम्स अंडर टूकल एट चेल्सी. So Hmm. Ziyech, you can argue that he did not work in this formation. Like, and again, for people out there who remember, Ziyech has had his best matches in Chelsea colors in cup games. ठीक है, कप गेम्स में व्हेन आपका ट्रांजिशन टर्न होता है, दैट इज व्हेन Ziyech इज द मोस्ट डेंजरस, बिकॉज वन बॉल पिंग क्या बूम टू बुफाल दिया, और बुफाल हैज टू गेट इन बिहाइंड देयर राइट बैक, इन दिस केस इट्स कुंडे. तो अगेन कुंडे का डिफेंसिव होना इज गुड फॉर फ्रांस. सो आई थिंक दैट whoever wins that battle, आई थिंक विल मेक श्योर कि यार मोरक्को का गोल आ रहा है कि नहीं हो रहा है. आई नो आतिया ताला ने किया था असिस्ट लास्ट मैच में, मुझे लगता है इस बार अटैक राइट साइड से होगा. माजराई और बुफाल के लिए आई थिंक कुंडे इज अ ब्रिलियंट प्लॉय. चुआमनी कुंडे विल बी ब्रिलियंट, आई थिंक. ये मेरा प्रिडिक्शन है. आप लोग क्या बोल रहे हो इन टर्म्स ऑफ बैटल, कौन जीतेगा कौन हारेगा? नीरज बोल रहे भाई सैम एलरडाइज ऑलरेडी एक बार याद है वायरल हुआ था भाई उसका I वीडियो. remember that. Yeah. नहीं यार, But सैम एलरडाइज but का नो चांस. do you think the Newcastle manager could be persuaded? Eddie Howe, is it? Eddie Howe, नहीं नहीं. The I was thinking Graham Potter, Eddie Howe पहले, when they were obviously not at this stage. लेकिन अभी यार, now that Newcastle are finally getting to grips, they are arguably looking better than a Chelsea, and they people are saying by they can replace Chelsea in that top four, top five maybe. So I think it's difficult for him to be get persuaded away. I think he's really happy. और अभी भी as things stand, और मैं यहाँ पे shout out दे रहा हूँ. I know I don't know if he's seeing, but again I think a fellow channel, basically Newcastle channel, top channel यार, वो आए थे, and I think he came and spoke to us. He along with Eddie Howe has is right now in I think the UAE or Saudi, and they are like having a lot of activities there. So a lot of off-field things goes on. Eddie Howe has a lot more to do now for Newcastle than what he had for Bournemouth. So I think responsibility-wise also, I think he's loving it. So I don't see Yeah. that. हाँ, और Graham Potter तो obviously is not available. So I think Sean Dyche again बहुत negative हो जाएगा यार sudden से, और not that Southgate wasn't. अभिजीत कैसे हो भाई? Barca boys in the house, Barca bros. चलो let's discuss a prediction. Oh, the prediction time, Fateh भाई सब लोग बोलिए. And I want to know what's exactly happening in terms of the goal scoring as well. I genuinely believe that France should get it better, Fateh. Yeah. I Best think chance का क्या दोगे? मतलब they have to score an early goal, Morocco, and just defend, right? I don't think they can take it deep because France का bench हमने देखा नहीं, by the way. Let's look at the bench. But what do you think will be the outcome of the match? Yeah, I think कैसे it, it जाएगा match? it's a lot like last night. As long as it's 0-0, it's okay. If Correct. France get the first goal, then Morocco having to open up, that can be a हाँ, bloodbath. So, एग्जैक्टली. और have to, इनफैक्ट मैं तो बोलना चाहूंगा अदर वे अराउंड, फतेह,
If France score early, no, they don't have to do a Croatia Morocco. They have to make sure कि half time तक 1-0 ही रहे at worst, Hmm. Yeah, because and they have that one goal. अब problem है कि the moment two goals come ना, I cannot see Morocco scoring two or three no, no, goals. no. I cannot, just cannot. Yeah, even one goal, I feel like, like yesterday too, the moment Argentina scored, and I don't know why Croatia opened up that way. They got caught on the counter नहीं attack. वो Okay. they mentally opened up, bro. I think tactically they were off after that first goal, I thought. Yeah, I mean, like there's a lot of the game to go, and I think for me the manner in which Lippi's Italy managed in 2006, like Zidane scored early on, and I was scared at that stage, but the manner in which the Italians managed that game and came back, so there's a lot of time left. So yeah, I think please Morocco, if the moment I think the French get a goal, it's going to be curtains. So Yeah. my And predictions, again, I'm I know hoping. that by Chelsea fans, you might expect me to say भाई जीएस की टीम जीतेगी, लेकिन ऑनेस्टली मैं यहाँ चाहता भी हूँ और मुझे लगता भी है कि फ्रांस की टीम ही जीतेगी. वहाँ पर आर्ग्युबली आई हैव टू मिलान players and an ex Chelsea player in Giroud there. So for me, Giroud, when again, मतलब I have to say that the guy has been underrated tremendously. आज लेकिन मुझे लगता है the fact that Mbappe did not score in the last game and the fact that Messi has equaled him now in number of goals, knowing Mbappe, रोनाल्डो इज हिज इंस्पिरेशन आई बिलीव वन ऑफ देम. तो मुझे लगता है एम्बापे फैक्टर आज होगा भारी, लेकिन आई कैन सी मोरक्को स्कोरिंग वन बिकॉज ऑफ फ्रांस चेंजिंग इन द डिफेंसिव मिडफील्ड एंड डिफेंस. और Hmm, ये लगता है एज मच एज कोनाटे इज क्विक, लेफ्ट सेंटर बैक आई थिंक इज नॉट इज वो, जैसे आई नो इट्स नॉट बी राइट टू कंपेयर, लेकिन पोर्चुगल में जैसे आई थिंक वन गेम आई रिमेंबर Danilo Pereira played left center back, he looked hmm, so hmm, out of place. yeah. Like Zuma used to look in Chelsea playing left center back. मतलब Hmm, I cannot see Konate playing left center back. तो मुझे लगता है with Theo being there एक गोल आएगा वहां से with Hakimi Ziyech either when getting a assist there. I feel that. लेकिन again that might be a consolation. I think France to score two and Morocco to score one. So I'm going 2-1 to France in normal time. मैं तो एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं जा रहा हूँ. टू गोल्स टू बी स्कोर्ड बाय फ्रांस. मैं होप कर रहा हूँ लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम हो और एक लास्ट सेकंड विनर आ जाए, बट अगेन नॉर्मल टाइम चाह रहे हैं यार, कम ऑन. Let's have penalties, extra time, whatever you want in the finals, baby. But अभी के लिए I want normal time. मैच कल है कि आज. मैच अभी 5 मिनट में शुरू है यार. डोंट वरी अबाउट दैट. बाय द वे यहाँ पर एक क्वेश्चन था. हाँ, वैनगाल का खत्म हो गया है नेदरलैंड्स के साथ एंड कोमन इज कमिंग. वो इट वाज नोन ऑलरेडी बिकॉज वैनगाल इज supposedly not 100% well, and of course he's taking a break. So let's see if it's a break or it's like the end. I you know don't think that i has been i announced yet. but Ankit, I understand football, and I understand the way Messi went to them, and that's okay. That happens in football, like, yeah, Correct. Van Gaal using the pre-match for comments and that. But I really like the way Edgar Davids was there, and look, हाँ Edgar हाँ, Davids कंट्रोल किया भाई एकदम बंदे ने. control, and if And you Edgar also, Davids doing it, imagine. yeah, yeah, that was really, and although I understand that emotions got the better of Messi, and like these things happen in football, so no criticism. But maybe if he hadn't done that, like, okay, I see. Look, it's like Jose Mourinho coming up, pre-game saying something. You know that, okay, that'll spice things up. But maybe that game was, like there were a lot of fights going on, and the referee was really trash. I mean, he lost Yeah. that game. But And I don't referee, know. by the way, sent home. I don't know if you read that. Yeah, yeah, He has been sent home. sent I home. agree. I agree. I agree. चलो कुछ तो किया भाई. But anyway, Look at it doesn't matter look at now. As the a Dutch passion. fan, too, it doesn't matter now anyway. It But really I doesn't. like the way Edgar Davids was there, and having seen Edgar Davids and I don't care, bro. seen his aggression. Like I was just thinking, like this guy is being so cool right now, and he's listening to Messi, he's keeping a hand. But if it was on the pitch, Edgar Davids would have murdered Messi. Again, the reason being that it was Messi, that's why. और Messi deserves it as well. You can argue that the guy has earned his respect. मतलब Yeah, आप ये yeah, बोल सकते हैं, yeah, लेकिन वही है. I was surprised just like Van Gaal was that भाई ये मेसी से आ रहा है सच में. ये सब कर रहा है. But yeah. anyway, that happens, bro. That's the That happens. football That happens. passion that we all have But it. And but people yeah, watching, भाई पता नहीं फतेह आपने देखा कि नहीं. I went mad, bro. Second goal जब आया था, I went mad. I went mad. Check Oh, out my I told you, reaction. no? I told you, like, started off as an Argentina sympathizer, but with the game, the way it was going, the moment that second goal, yeah, I इट वाज अ was बॉयलर. इट वाज अ we बॉयलर. turned आप down. प्रेशर कुकर में लिटरली बैठे थे, ऐसा ऐसा लग रहा था. बट Yeah, कोई yeah. नहीं. यहाँ पर तनिष्क पूछ रहे विल जियेश एंड लेब्रॉन जेम्स और सॉकर बी गेटिंग एनी मिनट्स एट चेल्सी. आई थिंक पुलिसिक एंड जियेश बेटर फॉर देम टू बी सोल्ड. जियेश एंड पुलिसिक, क्या बोलते हो? I mean, if it's if you have good money, sometimes what happens is you have a good World Cup, you have that form,
And if you can use that for 2 3 months, even if it Hmm. lasts for 2 3 months, get his value up, maybe sell in the summer, or unless until there is a team that's Hmm. giving you money now in Jan. सोने के वक्त क्यों शुरू होता है भाई? यहाँ पर आप सो रहे हो, ये हो रहा है कतार में, वहां पे प्राइम टाइम है। लेकिन कोई नहीं, बच सही है, 2 घंटा लेट है भाई। सेमीफाइनल 4 साल में एक बार आता है, सिंपल सी बात है। लेकिन अनमोलदीप, हाँ, माजरावी इज यूजुअली राइट बैक, ही इज नेचुरली राइट फुट। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, अतियात अल्लाह के लिए कहीं ना कहीं आई थिंक थोड़ा रफ रहा है ये सिलेक्शन, because I thought that Atiyat Allah defensively and offensively he had that balance in Portugal game and he got the assist. But at the Exactly. same time, Mazraoui, in my personal opinion, against Spain, he was the man of the match. He was the man of the match against Spain. I know people might say Amrabat, लेकिन actually आपने notice किया तो Saiz has not been 100% fit last 2 मैचेस के लिए, तो Mazraoui उसको cover किया है। तो I think Yeah, his work he's rate is covered. underrated, but at the same time वो क्या 100% fit है, इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है दैट इट्स अ बिट ऑफ बोथ, टैक्टिकली एज वेल एज इंजरी भी है। तीनों का इंजरी से बाद मारे ना, अगवेड, साइज, दोनों सेंटर बैक्स आपके इंजरीज के बाद मारे, एज वेल एज माथुराई। तो कहीं ना कहीं दे आर प्लेइंग 3 ऑन द लेफ्टिस्ट साइड रादर देन 2, सो दैट दे कैन कवर ईच अदर बेटर। ऑफ कोर्स भाई, डेम्बेले का क्या बोल रहे हो आप लोग? डेम्बेले भाई किसी ने बात नहीं की है। डेम्बेले वर्सेस माजराई ब्रो, कौन जीत रहा है यहाँ पे बैटल? इज बारसा वर्सेस बायर्न। पीपल हैव Oh, नॉट स्पोकन दैट। maybe Barcelona finally have their last laugh, today, because ओके, तो भाई आपने सुन गया है, एब्सोल्युटली भाई। नीरज विल हैव टू अटेंड ऑफिस ऑफिस टुमारो मॉर्निंग। I loved that meme, like where Muller, they showed that Germany has lost to they've qualified, they've not been able to go through, and then like there's that meme where Muller's like, but Barcelona will pay. And I was like, what the hell, man? I still don't understand that rivalry, but I'm here for it. Like, I love it. If I hope next season in the Champions League we get Bayern versus Barca, we'll do a watch या along, man. चलो भाई, Yeah. शुरू होने वाला है। बाय द वे, विशाल इस पर आएंगे भाई, इतना बुरा नहीं था डच डच टीम के लिए। आई थिंक फतेह विल ऐड ऑन देयर एब्सोल्युटली, बट जीरो इन I, फॉर्म। यहाँ आशीष बोले जीरो हगेगा। भाई आपने फतेह, फाइनली व्हाट वाज योर फाइनल प्रेडिक्शन? my Dil, I want Morocco to win, and I want them to win with drama. So that's what my heart wants. But my brain tells me that I think France will probably take this 2-1 or 2-0. ओके चलो। एंड क्या बोल सकता है, एम्बापे बीटिंग मेसी इन द गोल्डन बूट रेस एज ऑफ टुडे नाइट एंड? Yeah, I do think so. But ओके, then, लेट्स सी, लेट्स। in the final, what's stopping Messi from getting a hat trick? And By the way, you know what? If he gets 4 goals, he'll equal closer, bro. oh my God, All time. Messi? I know 4 goals, तो मतलब ऐसे बोल रहा हूँ जैसे कि लड्डू पेड़ा Yeah. है भाई। Already you can see the left wing of Morocco, or for all people saying that Morocco play boring football, is that why I'm telling you, beware of that left wing. I know right wing is what you'd expect. Hakimi Ziyech. Hakimi already Ziyech playing a little bit more centrally, I can see. I don't know if he's been asked to just be that central figure, just to kind of be the main playmaker. Amrabat लेफ्ट साइड, ये क्या हो क्या रहा है भाई? कौन सा फॉर्मेशन खेल रही है भाई? बोरो कुछ नहीं, कुछ भी खेल रही है शुरू में। इट्स लाइक हम स्कूल में खेलते थे ना, बॉल जा रही है, जाओ वहां जाओ बस। And Amrabat, I don't know about his fitness, but look at him running like the first. They were saying that he's on injections. बट अमराबाद यार, क्या लगता है यार, अभी कहाँ जाने वाला? प्रीटी श्योर he'll get a big move, not in January but at least in summer, right? Yeah, and again, I remember watching him. I think it was Ivan Juric's Hellas Verona, where he was very good. There was, Juric is a coach that is being slept on, and I saw him there, and then I think he's been okay. I mean, he's not been this good for Fiorentina, but he's been good. He's been good. It's not as if like this is a fluke to us Serie A fans. He's been good. I don't know. I mean, who in the EPL is interested? Somebody like say Newcastle. I mean, Yeah, but they have a Manu, different like kind of a they DM in do Gumaresh. Manu need a player like this? I was wondering, because या मे बी, आई I डोंट नो। mean, अच्छा भाई, वे मैं देख रहा हूँ भाई, कुछ लोग ड्रॉप हो रहे हैं भाई। ड्रॉप मत होइए, देखिए हम लोग सब रिएक्ट ही करेंगे मैच पर। लेकिन हाँ, प्लीज प्लीज लाइक द स्ट्रीम एवरीवन। यहाँ पर विशाल पूछ रहे, हैज एनीवन स्कोर्ड 4 goals इन वर्ल्ड कप फाइनल? आई थिंक अर्ली इयर्स देयर वर सम हाई स्कोरिंग मैचेस। आई डोंट रिमेंबर, स्टैट्स मैन नहीं हूँ मैं रियली, विशाल। एटलीस्ट आई डोंट रिमेंबर see, वॉचिंग इट। 1958, Brazil won 5-2 against Sweden. 1970, they beat Italy 4-0 or 4-1. हाँ, लेकिन इंडिविजुअल प्लेयर तो शायद नहीं रहा ना। Hmm. एक Yeah, सेकंड,
जस्ट फॉन्टेन का कब वाज इट अ फाइनल? No, but he scored a lot of goals. I think हाँ, he scored 1958, in he 58, scored 13 Indian World Cup. totally, लेकिन आई एम जस्ट Yeah, सीइंग व्हिच total. मैचेस ही स्कोर्ड। पता नहीं यार, अब देखते हैं, हम वो बाद में देखेंगे। स्टार का रखो विशाल, अभी मैच में करते हैं। भाई टाइम स्टैम्प मेरा 3-2, 3-3, इट्स ऑन Three स्पोर्ट्स five. 18 Yeah, एचडी। yeah. 3-5, 3-6, 3-7, This 3-8। is dangerous. I mean, losing the ball like this to Mbappe, that's dangerous. I mean, आशीष, आई डोंट नो अबाउट लूजिंग हियर ब्रो, लेकिन आप बोल रहे हो 19 साल के हो, मेकिंग मी फील ओल्ड ब्रो। I have, I've always had some white though, so I don't know. या बट ही इज नॉट अबाउट द कलर, ही सिंग विद द हेयर स्टाइल। Yeah, hairstyle. चलो यार, Yeah. विल टेक हिज कॉम्प्लीमेंट, इट ऑलवेज हेल्प्स कॉन्फिडेंस। लेकिन कोई नहीं, आशीष, द फैक्ट इज आप But जितना ज्यादा Ankit, बाल को ऐसे नोचे ना, उतना बेटर है आपके लिए। मैं Ankit, but तो फुटबॉल देखते हुए वही the करता thing हूँ। is, the World Cup has been known for some amazing hairstyles. Carlos Valderrama, Rene Higuita, you know, like, do you remember those 90s, that the Colombian with that huge hair? Oh, Valderrama, bro, and 94 Valderrama. World Cup was all about Valderrama, right? Valderrama, yeah. 1990, हाँ, 1994. मैं अगेन वो आई कलेक्टेड दोस कार्ड्स, मतलब मैं, यू नो व्हाट, Yeah, आई yeah. विल ट्राई एंड रियली फाइंड इट, वो घर Panini. में कहीं ना कहीं छुपा है। आई एम 100% श्योर माय Yeah, कलेक्शन yeah. ऑफ 94 Panini वर्ल्ड cards. कप कार्ड्स आर Yeah, देयर। yeah. वो एक्चुअली 94 वर्ल्ड कप चल रहा था ना, उस समय बिक रहे थे अलॉन्ग विद Yeah, yeah, च्युइंग yeah. गम यार। लेकिन हाँ, अगेन यहाँ पर शाउट आउट देना चाहूंगा फॉर स्पोर्टिकोस ब्रो, एंड दिस website is something that you guys need to check it out. Pretty sure they have a lot of information there, talk about all these clubs and countries, players. But yeah, it's been powered by them, and you can win two jerseys plus some bonus, so go for it. But as we say that, Griezmann with a through ball, and यहाँ पे गोल होने वाला है 100% श्योर भाई। एम्बापे Yeah. ऑलमोस्ट Oh, गोल हो गया bro. यार, हो गया Goal. भाई गोल। This is an early goal, and it is Theo Hernandez out of all the people, bro. Is it going to be a repeat of yesterday and more? इनफैक्ट यहाँ तो 5 मिनट के अंडर अंडर हो गया, ये क्या हो गया? Why did Morocco change the system? That is the Yeah, I mean, biggest question that's, जाने वाला है। yeah. हाँ, अरे तो इसका आंसर यस है भाई, क्रेजीली यस। और वी वेंट बॉन्कर्स। हुआ क्या भाई? जिदान, फॉर मी भाई, along with Messi, this World Cup for me individually, that has been the best individual performance of World Cup as an entire tournament जो जिदान ने किया था उस वर्ल्ड कप में। He played magic, he was magic in that World Cup. But anyway, uh, man, what terrible defending bro, what ये हुआ क्या? Why were in, मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ फॉर्मेशन का कुछ पता ही नहीं उन लोग को, कौन कहाँ पर है। सब लोग जस्ट जा रहे बॉल के पीछे। Yeah, I mean, this is very unlike Morocco, but this is the first goal they've conceded from open play, from the opposition, because they'd conceded an own goal. And narrow angle था यार, Theo Hernandez, well done bro, brilliant by Theo Hernandez. And yes, Deschamps, is he going to be a all time by one of those coaches bro? Let me know. I feel Amrabat will fit Liverpool, भाई लिवरपूल में हर एक बंदे को डाल दो भाई, मानव। मानव तो चाहेंगे नहीं, बीइंग अ सिटी फैन। भाई आम्रबात हो गए, एंजो फर्नांडिस हो गए, बेलिंगम हो गए। सॉरी लिवरपूल फैंस ब्रो, लेकिन सब लोग ले लो, आप लोग यार ले लो। But Fabinho has lost। with regards to 2006 headbutt, what happened was on TV they didn't show the headbutt initially, and there was a lot of commotion, and हाँ, there was no रिप्ले VAR. रिप्ले देखा था हमने। And the referee went to see, to check the footage, because the Italian players, Buffon, everybody, and the linesman told him, like, go and check. So that had never happened, and that was the first time that because there was no VAR at that या stage. कमेंटेटर्स बोल रहे थे, एंड देन द रिप्ले वाज Yeah, काइंड ऑफ and I remember the commentators also didn't know. And after almost 4 or 5 minutes, they finally showed the replay. And when we saw the replay, I was like, wow, this is beautiful. Like, यार give him a पीछे rest. आ मानव, कैसे हो गया भाई मानव आज? या बिल्कुल, दैट्स अ नाइस वे ऑफ पुटिंग इट मुदित। माय फेवरेट हेयर स्टाइल इज पेपे वन। या व्हाई नॉट ब्रो, दैट इज इन नाउ। गोल थियो, 5 goals incoming। देखते हैं, रियली बैड डिफेंडिंग, मतलब दे हैव बीन इन सिक्सेस एंड सेवन फ्रॉम द टाइम द मैच स्टार्टेड, टू बी ऑनेस्ट। कोई फॉर्मेशन दिख नहीं रहा है उनका। होता भी यार, इट्स लेट्स बी ऑनेस्ट, दे हैव ऑलरेडी क्रिएटेड हिस्ट्री, एंड इट्स अ ह्यूज, एज इन बाय फार इज द बिगेस्ट डे ऑफ द लाइफ, राइट फतेह? मोरक्कन प्लेयर्स के लिए, नॉट द फ्रांस के लिए नहीं है, बट एटलीस्ट सम ऑफ देम हैज वन द वर्ल्ड कप। Yeah, but, I mean, I don't understand why they're committing. Like, look at, there are more Frenchmen here, and Morocco is really attacking. Why is that happening? I have no आई clue. थिंक यहाँ पर बोला गया है उनको, शायद टू स्टे क्लोज, बीट अटैकिंग और डिफेंडिंग, और वहीं पर आई थिंक द क्वालिटी कम्स थ्रू, राइट?
See, again, they're getting caught on the counter. This is Is it Fofana running? Oh man, Mbappe. Nahi, Fofana giving it to Dembele. El Yamik has played instead of Amala and he makes the mistake of losing the. No, El Yamik to last match में भी था मानो. It's just that yeah, I get a point. The fact is they are going back three. Yamik actually played in place of Agued last match. Or Yamik actually did a good job last match. लेकिन वही है, he makes the mistake of losing it. In fact, not just Yamik, मैं तो बोलता हूँ even जो पहला शॉट आया था ना जहाँ पर they saved, तो कहीं ना कहीं I think Saiz and you can argue Mazraoui did not have the bearings because आप अगर normal situation में होते हो, they would be basically in a left center back and left back position because it's left wing back and left center back. कहीं ना कहीं I think they did not have the bearings. वही है, one looked at the other और कैसे ना कैसे सेव हो गया वो. हाँ, आप पीछे कर लीजिए यार. I think there's a way. I think Mudit has said that there is a way to, as in put the stream behind 25 seconds. You can actually. Ninja Turtle will take revenge for his idol. भाई who's this रिवेंज idol? पता नहीं यार. बहुत रोनाल्डो है ना आइडल. पुराना वाला रोनाल्डो, नया वाला? नहीं, नया वाला. ही हैज बेसिकली पोस्टेड आल्सो दैट ही इज अ किंग गोट एटसेट्रा. मतलब फेयर इनफ, एवरीवन हैज देयर आइडल्स. विराट कोहली हैज पोस्टेड ब्रो. मतलब लेकिन विराट रिवेंज की कोहली का क्या कौन है? बात है यार. No, मोनाको के लिए. but that'll be beautiful when if Messi was to beat Mbappe, and then probably come out with some tasty little thing for Mbappe and PSG because he's, I think, leaving PSG. There was talk about him going to Inter See, Miami. that's the thing. Either ways, as in the World Cup is going to PSG, man. Okay, nice Oh, shot. Oh, what a save, man. What a save. भाई ये क्या हो गया? Out of nowhere. भाई ओनाही था शायद. ओनाही with a brilliant curler. And it was Loris who again, trust me, for me, as much as people might disagree, by he has those great moments in him. I'm telling you. yeah. France will win the World Cup if they go in final. ये मेरी भी feeling है. But let's Let's see. see. Let's see. There is this thing about the Argentinians where they're so physical that they take you out of the game. I mean, with that Yeah, physicality. exactly. And if And they do tactically, that, I feel it'll be a yeah. battle, bro. And let's अच्छा see. I यहाँ mean, पर लेकिन फतेह, yeah. France has not got a single clean sheet in this tournament. So Interesting. Morocco इसलिए शायद I think there was a question कि why are they kind of committing, you yourself was saying ना, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुझे लगता है मोरक्को का ये है कि we need to get an early goal and then defend, that's why maybe they went the way that they went initial minute में. भाई नहीं, फ्री किक नहीं है, come on, offside था anyway. Mbappe trying to get a free kick. Messi's goat. Yesterday there were 21 players playing alongside an alien. Messi was simply sensational, just simply god-like. Messi's goat calling the goat the alien. But honestly, bro, मतलब मैं तो मतलब Fateh knows it, like my liking for wingers, especially left-footed at that. Messi That was going in. rolled back That the was years, going bro. in. Wow. I mean, That's what he did. there's a lot of time. I think Morocco don't have to sort of lose their balance. And has Hmm. Morocco even attacked this much? But okay, I think they don't have to lose. Oh my Amrabat, like they need. You better not get. I mean, they can't afford any injuries to guys like Amrabat in this game, and since he's already on injections, एक्चुअली वो भी कहीं ना कहीं ना, ये इतने सारे मोरक्को के प्लेयर्स इफ्स एंड बट्स वाले सिचुएशन yeah, में हैं yeah, that they might not be hesitant. Come on, they are giving the 100%. But yeah, I'm trying to say is यहाँ पर subconsciously ना you are having that in the back of your mind. yeah. So you're not in a natural position at times. France brilliant pinning the wing backs and then matching the midfield double pivot. हाँ, वहाँ तो लाइक फॉर लाइक होने ही वाला था मानव मिडफील्ड में. Dembele and Hernandez. Okay, keeping the width. Grizzy and Mbappe interiors. Giroud main man. Classic 3-2-5. 5-4-1. It's honestly it was supposed to be a like for like entire team में यार. 5-4-1 जो आप बोल रहे हो ना माना वही होना चाहिए था. लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है मोरक्को ने स्पेस दिया है because they have been Hmm. what do you say, unaware of their bearings defensively in the first few minutes. लेकिन अब देखो slowly but steadily they are creating a shape. जैसे ही मैं बोला
अमराबाद सुनकर दे देते पोजीशन, और जीरू भी दे देते पोजीशन, बैक टू मोरक्को फॉर अ थ्रो इन। फुटबॉल फैन, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, मैंने जिडान के बारे में बात की, आई थिंक फतेह विल ऐड टू दैट यार। 2006 में जिडान वाज ऑन अ मिशन, इट वाज वेरी क्लियर दैट ही केम आउट ऑफ रिटायरमेंट, हिम तुराम एंड मैकेलेली केम आउट ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। Yeah. एंड जिडान, despite not having the greatest of seasons with the Real Madrid 18 months before, he was still that, really looking that magic Zidane, of the yesteryears. A final में until that moment, मैं तो बोल रहा था that I still believed that, it might be France's night. वही है, he No, lost his cool. I had faith because the way the Italians had played with the scandal, the way Cannavaro was playing, the way the whole team was playing, and the way the Italians beat the Germans. I had faith. Even when Zidane scored, I knew I was scared, but I had faith that okay. And because Euro 2000 also played on the back of my head. That was a tournament I absolutely loved. By the way, Ankit, Euro 2000, what a tournament! हाँ, बट And वही है ना, अब लियोनेल मेसी का अलग है। देखो वही चीज yeah, हम मेसी में भी देखता हूँ। अब hmm, does Messi have that kind of mad head? No. Hot head? No. लेकिन no, no, against Dutch you saw that yeah. he is different Messi. He's not the same Messi either. Yeah, he wants it, and I think that the whole story with Messi versus Mbappe, that's going to be beautiful if it happens. Like, I Hmm. mean, for all we Ziyech know, with a free Morocco kick, have a bro. goal. Yeah, Important. Nesri has to basically connect with this, yeah. These moments are very crucial for Morocco. Ziyech and his, free kicks are underrated, I feel. I genuinely believe that. Anyway, अब देखते हैं, इतना मैं बिल्डअप कर दिया, फिर हगना है इसको। चलो, not a bad डिफेंड free करा kick. It was a करा गया decent free kick. by, again I think if I'm not wrong, it was Konate. So again Konate coming in today helps, yeah. He is taller, he's faster, he's stronger. Yes, Mudit will discuss on this. Bhai, Fateh, goal of the tournament for you till now? I would say that Korea goal. The one which Korea scored, right? Yeah, हाँ, because you know what? For me, that is the second best because of the context. I think the also first, the first one, the Brazilian one, the against Serbia, was that? the one where Richarlison scored the bicycle kick. Yeah, नहीं, was वो that? that is third for me. मेरे लिए first है ब्राजील का ही कोरिया वाले गेम में जो थर्ड गोल था, जहां पर Yeah, अनगिनत नंबर ऑफ पासेस हुए थे। yeah, yeah, रिचार्लिसन अगेन गॉट द गोल, बट इट वाज अ टीम गोल। yeah. I thought that was like a classic kind of a जोगा bonito वाला चीज almost. Messi is good बोल रहे, we need a new dictionary. We ran out of superlatives. हाँ यार, मतलब that is definitely there. Taking Guardiola for a spin. देखिए, as much as people are surprised with that, don't be surprised bro. देखिए, here is a young center back who got outwitted by the best player in the world on form, and the best player in the world arguably in Here history. comes Morocco though. Come on, you have to, अरे counter में, they don't have great final third decision making. We Yeah, know that. and that forward that comes on, what's his name? Chazi, what was that guy? छेदीरा वो तो आज नहीं है ना, he is suspended. But anyway, यार क्वेश्चन है फतेह के लिए। AC Milan. But I think AC Milan are doing very well with Pioli. Has Davids played for AC Milan? He's played for Juventus and he's played No, for no, us he's in not. So Milan. the thing is, for me, Oh, Giroud, almost. Bhai, what a strike! Anyone telling me Giroud just need delivery, bro? He created something out of nothing here. Come on, it was a ball in space, just generally random एक ball था भाई. Giroud ने उसको chance बना दिया. देखो, I think that is only Morocco's the Giroud for you. defenders. I think there's a fitness issue. Like the Moroccan defenders, they just can't keep up. It's definitely a fitness issue. Like I can see with even Amrabat, the way he's playing, the way he's Not running, and natural. his guys. Yeah, not हाँ, 100%. इसलिए शायद मे बी दे आर प्लेइंग थ्री द बैक, बट यार Yeah, but ऑनेस्टली यार, एडगार डेविड्स तो द अदर डे द वे ही हैंडल हिमसेल्फ, आई एम सरप्राइज, beautiful, सच में बोलूं तो। beautiful. आई नो Yeah, ही इज बीन असिस्टेंट कोच एटसेट्रा, बट दैट्स व्हाट आई वुड सी राइट नाउ। इज इट ट्रू but जिडान वाज if गिवन नंबर 5? हाँ, नॉट श्योर अबाउट दिस वन ब्रो मानव। I myself don't know, but yeah, Edgar Davids. See, he was so good for Juventus. He's also played for us at Inter. I don't know whether he's played for AC. Has he?
I don't no, no, it's a general question. It's a general question It's that can general he? question. So, Uh, I mean, if he gets uh, into coaching, why not? He should first be in the Dutch league, though. by the way, Manav, yeah, right up there, man. Absolutely. Moment of the World Cup तो मेरे लिए वो था यार. Yeah. The And I moment, remember the मतलब out next of day, nowhere. and the next day they showed those Weghorst free kicks for Wolfsburg also, where Hmm, like that has been practiced. So I was like, wow, correct. Neymar's 1-2 goal. हाँ, actually, yeah, Neymar का again, the crucial. guy's got a brilliant goal, bro, in a World Cup extra time knockout, bro. As in, imagine, but क्या करे? Are they The bringing fact somebody that on? They're bringing somebody on. Yeah, it's चलो. Morocco's fitness. I think already, and in a semi-final that you just can't take, you just can't risk it. But who? I think one of the defenders. I think Yeah, I don't think Saiz is probably fit. Agued or Saiz. I don't think I'm Saiz is guessing. fit at all. Ziyech is finding spaces. Hernandez is moving forward exactly like we predicted. That looks to be Morocco's only chance to create something. Exactly. देखो वापस से nice ball, लेकिन I think a bit too long and लोरिस ने अच्छे से कैच पकड़ लिया है. मैं मोरक्को डिफेंडर्स डेफिनेटली नॉट फुली फिट वही है. Uh, चलो देखते हैं भाई. आतिया And तला that आतिया is तला why कमिंग ऑन. I think they needed that nil-nil. Like just keep the same formation. Don't try anything new. That low block, just keep doing that, like more of the same. But okay, let's see. I mean, there's a lot of time left, but the way the French attack, like नहीं every करेगी attack, फ्रांस कंसीड तो करेगी यार. मेरे को लगता है कंसीड तो करेगी. I actually don't think so. I think if they get the second goal from फर्स्ट there क्लीन onwards, शीट फ्रांस के लिए. ओके. मतलब अगेन आई थिंक फ्रांस विल आल्सो स्कोर वन मोर. लेकिन आई फील गोल इज कमिंग. भाई आतिया तला आ जाए तो ठीक है. लेकिन प्रॉब्लम है कि माजराउई आई डू आई सी हिम एज अ वन ऑफ द थ्री सेंटर बैक्स. आई प्रॉब्ली डोंट. आई नो वो कवर किया है साइज को प्रीवियसली इन वन ऑफ द मैचेस. लेकिन दैट इज फॉर अ फ्यू मिनट्स आई बिलीव नॉट लाइक फॉर 75 look minutes at or this. all, right? Look at this though. Who's gone down? नहीं actually there was talks Ashish about Gattuso one day managing Milan, bro, again. That might happen again when he's ready. That might happen. I know He's doing previously. decently at Valencia. Huh, correct. I think he'll get them fighting for the fourth spot inevitably. Let's see. Let's see. And अभी he's a time है he's a लेकिन manager that deserves respect. I think even the time that he spent at Napoli, size, bro, size is off. yeah, size Man, this this is is very bad. bad. Captain going off, bro. Yeah, Again, arguably the defender of the tournament. Who yeah. has been the defender of the tournament for you? Guardiola after yesterday still, or See, I think we are. Yeah, I mean, yesterday obviously he got shown, but I would still say Guardiola though. And obviously size. Like you have to pick the Moroccans. I mean, why not? हाँ, Saiz or Guardiola for me. I would have gone for the English centre back duo, लेकिन I think against France they opened up. And I'm really, when people talk about England, like, see, I have no problems with Southgate staying because there are no options, but I think it becomes a bit stale, when the manager stays on, when there's not been success. Like, I understand Lowe was there in 2008. Was Lowe the coach? Euro 2008 onwards? 2006 assistant. नहीं No, कहाँ पे? assistant. 2008, he was the coach, main coach. Euro 2008. Euros. When they lost the final to Spain, 1-0. Was Low already the coach? Oh yeah, he Yeah. was. He was. You're right. He was. So, he is somebody that, won final in 2008, semi-final 2010, semi-final 2012, finally won in 2014. But I feel like 6 to 8 years is the maximum uh, national team. You need new ideas. And Gareth Southgate's been there for हाँ, 6 years and they now. make comebacks as well. लेकिन you're right. As in it's in cycles. Yeah. So I think, and I don't know, like, I mean, there's a lot of talent though, England. I mean, there's so much talent, but I mean, I don't know. Like, I think we need Chinmay in the house for that. But Yeah. oof. अच्छा यहाँ पे उत्कर्ष पूछ रहे can Mbappe ever get loyal fans like Ronaldo and Messi? I honestly don't know. I feel like he'll have to leave PSG though, because that's just not. But can he be the main man? I know he's not the main man there. Also, you can argue, but you know that he's owning PSG, na? मतलब you know what I Yeah, mean. तो no, but वो चीज आई थिंक से टुमारो कहीं ना कहीं से वापस से दे मेक अप अगेन रियल मैड्रिड एंड हिम इन द फ्यूचर मे बी से 4-5 years डाउन द लाइन ये हो जाए. मुझे तो अभी भी लगता है कभी ना कभी होगा. He is people might disagree, but I feel that okay.
I don't think it's going to be the main man there, right? Because Real Madrid will never have that guy becoming the main man No, I think, in see, terms for of Real Madrid, off Modric is field. going to leave, Cruz is going to leave. Okay, they don't need Cruz. They have a lot of, like अरे फ्री किक Valverde है is still यार. beautiful, but तो PSG में what I'm trying to say is I was almost going to say the big fish in a small pond, but not a small pond, but in world football in terms of history, PSG are not cannot compete with the Real Madrid. No, you know what I mean in terms of off field, being one of the main decision makers and all those things. When he becomes that, say 27, 28, ho jaye, when his age is that, I know he's already that, but Real Madrid I cannot see that happen. तो मुझे लगता है मेन मैन तो नहीं होगा कहीं ना कहीं मुझे लगता है फॉर हिम टू बी gaining that amount of loyal fans he has to become like the guy for a certain club for a good the guy, yeah, decade. yeah. ठीक है. At club football, he'll have to do that, like winning the हाँ. Champions League and just, yeah. और जो होने नहीं वाला है मेरे ख्याल से नहीं होगा मतलब ही माइट हैव अ हायर एंड आई नो देयर इज अ आर्गुमेंट अ वेरी वैलिड आर्गुमेंट कि यार वर्ल्ड कप्स में ही माइट गो ऑन टू बिकम द ग्रेटेस्ट एवर इन वर्ल्ड कप्स. ओके, देयर इज एन Hmm. आर्गुमेंट ऑलरेडी. ठीक है. Hmm. बट getting those loyal fans, I still doubt it because will he be that loyal for a certain club for so long, where he'll be the main man for so long? Knowing him, I doubt it. But again, I might be No, wrong. Let's that's see a if his bad advice well pass. or not. भाई बुनू playing with risk. I know काफी ये भी किया भाई. Morocco has played out from the back entire tournament. People forget that as well. Let's go with the next one. Look at the hunger of Mbappe. He definitely wants to score and wants that golden boot. Again, the fact is Theo Hernandez and Mara a goal. I think he'll be happy more than anything. But yeah, I hear you. Pudin. I think as fans who want, like if France get there, we want Messi to win the World Cup, so he can keep the Golden Boot as long as Messi wins the World Cup. He can have the Golden Boot. Messi Hmm. probably doesn't care about the Golden Boot at all. He just needs that World Cup, and then या his मैंने आई नो पोल legacy. वोल डाला था आज, लेकिन कम ऑन लेट्स बी रियल. फॉर मेसी उतना इतना फोकस, अगेन गोइंग बैक, आई थिंक इतना ज्यादा फोकस एक सिंगल प्लेयर लगा एंड बिल्डिंग अप टू टूर्नामेंट, इट हैज बीन जिडान. इट इज जिडान टू हैपनिंग अगेन. बट यहाँ पर द फैक्ट दैट व्हाट हैपेंस जिडान मे बी इज अ गुड लेसन फॉर मेसी एंड ही विल probably keep his no eyes and ears open all the time. By Indranil, good question. Real Madrid now has two Ballon d'Or winners playing in their 11 at the same time. Has this happened before? Of course. Real Madrid ने बहुत बार खुद ही two Ballon d'Or meaning अच्छा. So basically, current Ballon d'Or holder is Ronaldo. Oh, sorry, Hmm. What? Benzema. And Benzema से पहले, Modric. हाँ मतलब I think all anytime आप Ballon d'Or जीत, obviously यार Galacticos definitely had यार. Galacticos 2002 में, was Zidane. No, wait. 2002 was Ronaldo. No, अरे तो I'm confused. रोनाल्डो, जिडान, ओवन, आई But थिंक वर not एट द back to सेम. back. Back to back नहीं तो नहीं लेकिन था अंकित. जनरली मैं बोल रहा हूँ तीनों बैलेंस और विलर्स रहे और दे वर इन द सेम टीम एट द सेम टाइम. माइकल Yeah, ओवन, जिडान एंड yeah. रोनाल्डो हैव बीन इन द सेम टीम. Luis Figo also won the Ballon d'Or, right? या 2000. लुइस फिगो, आई थिंक सो. लेट मी जस्ट So, चेक इट अप. प्रीटी and श्योर then ही हैज आल्सो Michael बीन Owen देयर. in 2001. हाँ तो दे हैड एट अ लॉट ऑफ पीपल यार. And they आई say थिंक that ही Michael हैज. Owen one was a real robbery because Effenberg or Kahn or somebody from Bayern deserved it. बट इट इज व्हाट इट इज यार. बट एनीवे आई थिंक फतेह Oh, आपको जाना है penalty? ना अभी के लिए. Penalty पेनल्टी है shout. क्या? No. कार दिया यार ये तो. Card for a dive. नहीं नहीं, अदर वे राउंड. आई थिंक अटैकर ने डिफेंडर को फाउल किया है. तो यहाँ पे आई थिंक How is that a 2000 का बैलन d'Or, आई थिंक लुइस फिगो वन इट. how is या. that a card for the Moroccan though? That's just Theo Hernandez acting. भाई थियो हर्नांडेज, ही इज लकी टू बी प्लेइंग इन दिस गेम, लेट्स बी ऑनेस्ट. Let's be honest, absolutely. And what was that? एसी मिलान. या मानव, बिल्कुल, एब्सोल्युटली. No, they had everybody had those Ballon d'Ors, but was it back to back, like 1 year and the नहीं नहीं, next आई year? डोंट थिंक इट्स बैक टू बैक एनीवे ना. मॉडरिच वन इट 2018, बेंजेमा वन इट 2022. So I think the Who question won it is last year? generally if a team has had at any point more than two Ballon d'Or winners. That's what I understand. Ranil, do Oh, correct it if I understand right. So I think Manav का भी answer correct है यहाँ, based on that, as well as Real Madrid themselves had before. हाँ लेकिन Fateh भाई, I know you have to go for now, but Fateh again, if time permits and if possible, do come on and join us at half time. लेकिन great to have Fateh always. भाई सब लोग Fateh OP हो जाए. Fateh, alright.
क्या last prediction is sticking on to it for now, Yeah, I think now France will for win. this half at I least? don't see. Yeah, The I way just don't things are see going. how. चलो चलो, anyway, we'll see Fateh very soon. All Fateh, right, man. again, do come on if you get the time, ठीक है? I'll चलो. try. Maybe at full time. What time are you on Yeah, till? yeah, I'll be live. Definitely, I'll You'll be be live. live. Then I'll Yeah. try and come. Chalo, chalo. All See right, you. mate. All right. See you. Okay. Brazil legend Ronaldo has urged Neymar to seek psychological help following Brazil's shock exit. But talking about psychological help, yeah, what is happening to Jadon Sancho? I'm hearing a lot of reports. कुछ reports बोल रहे हैं that एरिक टेन हाग का उससे भी लड़ाई हो गया है. There was a fight and Sancho feeling that he'll be the first substitute anyhow, no matter what. अगर खेलता भी है तो starter जैसे, नहीं तो he'll be a substitute. There are other reports saying that नहीं, it's something off field and Sancho is got to have that sorted. Then some people are saying it's that plus physically fit नहीं है. जो खुद I think टेन हाग ने बोला है, but I think mentally and physically he has to be ready, is what Tanaga said. So, what do you think, people? Jadon Sancho, a Chelsea fan, remember, can he make a move so early out of Manchester United after a huge move? By Giroud doing fantastically well, bro. Giroud, man, Giroud OP हो जाए भाई, everyone that. क्या बढ़िया वर्क रेट है जीरू का भाई. अतिया तला जो आए हैं मार दिया उनको पकड़ के, लेकिन नेवर माइंड. अच्छा, अमला है, सॉरी, अतिया तला नहीं, अमला है. अमला हैज कम, दैट्स इंटरेस्टिंग. भाई एक सेकेंड, अमला क्या करते हैं? अमला मिडफील्डर है ना? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. या इज अ मिडफील्डर. तो बेसिकली क्या फोर द बैक जा रहे हैं क्या? इंटरेस्टिंग. मोरक्को. Argentina will be able to stop Mbappe and Theo at left side and Dembele on the right. I think they might play five at the back. Argentina. I know reason नहीं है to change, or four banks or two banks of four जैसे कल खेले थे. One or the other. They won't play narrow. Yeah, as in, to be fair to him, it deserves it. Bottom line, Messi is good. He deserves it. सिंपल एज दैट. इफ एनीवन डिजर्व्स, आई नो डिजर्व हम बोलते हैं, ये नहीं बहुत बार मैं बोलता हूँ कि बोलते फॉर द सेक ऑफ इट, बट सम करियर्स डिजर्व इट. बट एट द सेम टाइम, एज अ टीम, इफ यू आर देखो तो डेशॉम्स विल से व्हाई नॉट मी. वो बोलेंगे ना. डेशॉम्स, ओह व्हाट अ शॉट मैन, डिफिकल्ट टेक्निक, लेकिन ऑफ साइड यार. अरे मोरक्को का. Messi will end doing the 5 goals assist double, only the second after Diego Maradona 86. Wow, let's see. Zidane, Ronaldo, Figo were in the same team. हाँ, इनफैक्ट माइकल ओवन भी थे. मानव, ही इज ऑल्सो बैलन डोर विनर. प्रीटी श्योर माइकल ओवन वाज देयर एट द सेम टाइम. I personally don't rate Zidane as manager. Gaurav बोल रहे, he achieved 3 UCL and 1 La Liga because he had prime Madrid. I know people with Barca had his prime team, but they didn't. Still, Zidane hasn't proved himself. नहीं यार, मतलब honestly, three peat is मतलब for someone who's watched Champions League from 1999, मैं बोल रहा हूँ गौरव, it's not easy, bro. It's not easy. आप कितना भी strong करो ना टीम, you need a different mentality. आप knockout stages of Champions League, मैं तो बोलता हूँ Champions League, in terms of tournament football, people will disagree, but it's actually technically tougher than the World Cup. बहुत बहुत डिफिकल्ट है भाई चैंपियंस लीग जीतना. ईयर इन ईयर आउट यू हैव क्वालिटी साइड्स कंपीटिंग विद यू. 3 years बैक टू बैक आपने जीता है. आई नो, मतलब सी देखो, आप उतना ही कर सकते हो जो आपके सामने है. तो उसके जो सामने था वो रियल मैड्रिड था, एंड ही डिड वेरी वेल. तो ही डिड हिज जॉब. हाँ, ला लीगा में अगेन आई हैव माय डाउट्स अबाउट हिज लीग कोचिंग और इंस्पायरिंग वीक इन वीक आउट के लिए, लेकिन आई थिंक कप फुटबॉल के लिए आई थिंक ही इज राइट अप देयर. एनीवे, जस्ट एन ओपिनियन. एरिक टेन हाग ने बोला, बस बहुत हो गया, बहुत टाइम दे दिया, बहुत महीने दे दिया. नाउ जेडन सैंचो शुड टेक एग्जिट अकॉर्डिंग टू टेन हाग. नहीं नहीं, वो कहाँ बोला यार आशीष, कम ऑन. नहीं नहीं, वो नहीं बोला यार. आई थिंक ये आपका इंटरप्रिटेशन है. आशीष मच लव ब्रो, बट ये वो नहीं बोला है. दिस इज रॉन्ग इन्फॉर्मेशन. ओहो जीरू ने ब्लॉक कर दिया यार शॉट. चौमनी का था शायद, ऑफ साइड.
आई एम सीइंग डिफरेंट जीरू भाई. जीरू इज दैट. आप देखते हो ना एसी मिलान में, देखो ही इज जीरू एंड ही इज द मेन मैन ना इन अटैक. He can do things. It's just that in Chelsea he wasn't given that kind of liberty at times, especially in a Tuchel. That was a bad tackle. भाई ये गंदा टैकल था. किसके द्वारा था देखना पड़ेगा. Pretty sure that was a bad tackle by Moroccan player Dari, the centre half. Yeah. Imagine this team with Nkunku, Lucas, Pogba, Kante, Dam. Interesting was it? तो आप बोलिए, what would you change in this team? Like, Nkunku doesn't start for me still, for me, honestly, as much as I really like the guy. Lucas Hernandez, you can argue, yes, like he doesn't give those kind of run. At center back he starts actually. At left center back he starts. Pogba on form, I would argue he doesn't start. Kante on form doesn't start. लेकिन वही है, मतलब you need next to Chouamani, if you wanted, yeah, probably you could have played Pogba. Fair enough. यूपीए क्या है? कोई शॉर्ट फॉर्म है क्या? यूपीए फुल फॉर्म? भाई ये तो मिलेनियल्स. पता नहीं. मे बी आई मिस्ड इट. यहाँ पर एक कॉर्नर है, ग्रीजमैन ले रहे हैं और आई थिंक इट कैन बी अ शॉट, लेकिन छक्का मार दिया भाई. छक्का बाई फोफाना. मैन यूनाइटेड. अरे क्यों भाई? इंद्रजीत बिंदास. इंद्र लाइक डायरेक्टली भाई, मैन यूनाइटेड इज द डम्बेस्ट क्लब. क्यों भाई? व्हेन इट कम्स टू साइनिंग प्लेयर्स एंड हैंडलिंग देम. भाई हाँ, दिस थिंग आई एग्री अबाउट चेल्सी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, थोड़ा सा दैट the way that we have signed players, that we have done our transfers, haven't been right in the last decade. Definitely yes, I agree with that point. But dumbest class pata nahi yaar. But there's a lot which goes into it. I know, yeah, I get a point though. Yeah, four at the back. एकदम है Amala as a midfield, and now we having Amrabat in middle. I think Amrabat भी 100% fit नहीं है मानव. जो again for Fateh will watch this area like literally every game. मैं तो खाली अपने वाले टीम्स का देखता हूँ ज्यादा. लेकिन हाँ, तो he says that Amrabat is actually week in week out वाला player, लेकिन आज वो लग नहीं रहे. Defensive shape might be 4-5-4-1 with Amrabat dropping to Mark Griezmann. Probably in hindsight they should have started. यहाँ पे Mbappe गोल आने वाला है. People नहीं यार. I think it was not on target, but Giroud goal almost. Mbappe and Giroud almost got it. Still, France have more quality. Yes, exactly, but quality not always wins you. Again, 2006 final coming to picture. France was much more quality side than Italy. Italy जीती थी. That happens. 2004 Euros. कोई comparison नहीं था ना. Portugal side versus Greece. Arguably, even I don't know. Would you even say? I don't know. Maybe 2000 and नहीं 2016 बोलने वाला था. नहीं, 2016 यूरोस भी बोलेंगे ना. फ्रांस probably on paper had better side than Portugal, ना? नहीं? Do you think Mbappe can be the next goat or success at such young age? We'll get into it. देखो बहुत सारे प्लेयर्स नहीं बोलूंगा. There have been a few players who have had tremendous amount of success in the first few years, लेकिन इतना नहीं जितना एम्बापे. भाई ये डेफिनेटली फ्री किक है. चौमनी फॉलिंग डाउन. मिडफील्ड बैटल लग रहा है अब. अगेन ब्राजील का ले लो. आपके थे एड्रियानो. ब्राजील का ही अलेक्जेंडर पाटो एट क्लब लेवल. इंजरीज ruined his career, you can say, and a little bit of attitude. You can argue Hazard for Belgium got a lot of success very early on. He became the talisman of Belgium, लेकिन इतना pressure आ गया कि he couldn't kind of resist. Or was he so ambitious, was he so fit? We all know that Hazard का story. बहुत सारे पहले भी आ चुके हैं ऐसे. Like for example Rivaldo. Rivaldo was huge. Rivaldo was huge in fact. लेकिन उस समय डिफरेंस था that ब्राजील की टीम में इतने सारे क्वालिटी प्लेयर्स थे ना. अब फ्रांस में भी है, यू कैन आर्ग्यू दैट, बट आर दीज फ्रांस प्लेयर्स like world beaters for every position? I would not say so.
जिरू इज ऑसम, लेकिन आज के दिन में भी आई नो बेंजिमा इज बेटर देन जिरू, यू कैन काउंट बेंजिमा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ दैट फॉर हिम टू बिकम दैट गोट लेवल ही हैज टू अचीव सक्सेस एज अ टीम. इट्स अ टीम स्पोर्ट, दिबानिक. तो will he be able to win those Champions Leagues, those World Cups? I know though World Cup is more than enough, you would say, but to become that goat level, I think he needs to do something extraordinary. Because as much as he might stay in PSG for long, let's be honest, that will not create a बोलते हैं ना global kind of a loyal fan base as much. करेगा, लेकिन as much compared to maybe someone staying for that long, with all due respect, say in Real Madrid, Barcelona, Manchester United, even Chelsea for that matter. मैं just say बोल रहा हूँ मैं, that is something that I would like to really point out. लेकिन difference being that मेसी और नेमार का थोड़ा अलग है. मेसी नेमार ने ऑलरेडी एक लेगेसी बिल्ड की है बहुत, स्पेशली मेसी, यू ऑल नो दैट राइट. तो वहां पर यू कैन नॉट कंपेयर इट. तो डिफिकल्ट है एम्बापे का टू काइंड ऑफ गो दैट लेवल अगेन. इफ ही परफॉर्म्स एट द लेवल दैट इज परफॉर्मिंग, नथिंग कैन स्टॉप हिम, नथिंग. मैं तो बोलता हूँ ही विल बिकम द ऑल टाइम, मतलब ही विल, ये तो मैं बोल रहा हूँ, डेफिनेटली आई थिंक ही विल बिकम द ग्रेटेस्ट वर्ल्ड कप प्लेयर टू हैव एवर प्लेड द गेम. यू हर्ड इट हियर. भाई नाइस डिफेंडिंग यहाँ पे, जस्ट अबाउट यामिक ने किया क्या. इट्स अ कॉर्नर फॉर फ्रांस. Ronaldo, Kaká, Modric, Benzema have also played together at one point though. हाँ, लेकिन Benzema at that point wasn't a Ballon d'Or winner. Modric at that point also wasn't, correct. 2018 में कहाँ खेला था काका ना, एग्जैक्टली नहीं था. तो रोनाल्डो काका, या व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स. जिडान बॉल कंट्रोल वर्सेस मेसी बॉल कंट्रोल. हाँ मेसी यार, मेसी मेसी. आई थिंक मेसी जो टेक्निक स्किल, मेसी मैन, मेसी अबव एनीथिंग. बाय द वे एवरीवन वाचिंग, यहाँ पे क्विक शाउट आउट टू स्पोर्टिकोस. दिस स्ट्रीम हैज बीन पावर्ड बाय देम. डू चेक आउट उनका लिंक यार इन द डिस्क्रिप्शन, पहला लाइन है. एंड there's something of great opportunity for you to win jerseys and some bonus. ओहो, नियर पोस्ट में ऑलमोस्ट वरान का हिट था. आफ्टर प्राइम Madrid, Zidane didn't win UCL and La Liga. एक सेकेंड. फेयर इनफ, बट ओके आई हियर यू, मतलब मैड्रिड के साथ ही, यू मीन. फेयर इनफ, मतलब वही है, मतलब आई वुड स्टिल नॉट जज हिम. आप देखो यार, आप हर एक साल जो खेलते हो हर एक साल जीतते हो क्या, मतलब इतना मैं बोलूंगा. आई डोंट नो, मतलब आई फील दैट इट्स इजी टू से दैट, बट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीवन टू विन एवरी ईयर. मैंने 3 चैंपियंस लीग जीता है यार. कम ऑन. आई डिसएग्री विद दैट. गौरव, मच लव टू यू ब्रो, लेट्स अग्री टू डिसएग्री. मैं ऐसे नहीं बोल रहा ही इज अ गोट मैनेजर समथिंग, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट आई थिंक व्हाट वाज आस्क्ड ऑफ हिम ऑफ मैड्रिड उसने किया है मोर देन दैट. ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ सच में. Okay, okay, get it. Nutcrackers in the house. France in the lead, but Morocco are attacking quite well. Ankit bhai is supporting Giroud today. हाँ, Giroud is a player. Why not, bro? I know Mbappe तोड़ने वाला है उसका record, तो भाई get as many goals as you can. But I want a good match as well. अभी भी 1-0 है people. You never know. It's still 1-0. France national team also Real Madrid UCL final. Let's go. हाँ. उपम मकानो, अच्छा मैं सोचा उपम यूपीए. मैं लिटरली गूगल कर रहा था क्या है भाई उपम मकानो. ये क्या हो गया भाई मेरा. रोनाल्डो ट्रेनिंग एट रियल मैड्रिड. या ही इज एब्सोल्युटली, लेकिन ट्रेन ही कर रहा है, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस. नाइस बॉल बाय कुंडे ब्रो, बहुत अच्छा बॉल था, लेकिन डेम्बेले ऑन हिज हील्स इनिशियली. जॉ फिलिक्स टू मैन यूनाइटेड, यू वांट गैक्पो इन चेल्सी. भाई मैं बिटवीन जॉ फिलिक्स एंड गैक्पो, अगर आप चुनने के लिए बोलोगे ना, एज मच एज आई वांट गैक्पो इन चेल्सी, आई थिंक एट दिस पॉइंट चेल्सी नीड्स जॉ फिलिक्स मोर. हमें चाहिए, बिकॉज ब्रो इज आउट, वी नीड समवन हु कैन प्ले एज अ स्ट्राइकर एज वेल एज समवन हु कैन प्ले वाइड. आई नो गैक्पो कैन डू बोथ द थिंग्स, बट आई थिंक जॉ फिलिक्स हैज हैड अ मोर लाइक अ मोर अ नंबर 9 देन अ विंगर काइंड ऑफ फील देता है मुझे. आई नो हैवर्ट्स का भी सेम चीज मैंने बोला था बहुत बार, लेकिन ही डिडंट टर्न आउट टू बी दैट वे, बट जॉ फेलिक्स एक्चुअली हैज दैट एबिलिटी. इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ रफाइल लियाओ, रफाइल लियाओ को ले आओ, दैट इज द बेस्ट. नहीं. आशीष ब्रो, एम्बापे शुड हैव स्क्वेयर द बॉल टू जिरू. या ये डेम्बेले बारसा के लिए ऐसा क्यों नहीं खेलता, पता नहीं यार. मे बी आई पर्सनली फील बारसा में he has been given
फार टू मच अश्योरेंस आई फील, मतलब मुझे लगता है ना दैट उसको पता है वो बाहर ही नहीं जा रहा यार बारसा के 11 से। आई थिंक ये एक रफीनिया के अगेंस्ट अनफेयर रहा है। नो, रफीनिया हैज हैड अ डिफिकल्ट सेकंड कपल ऑफ मंथ्स। मेरे ख्याल से he probably deserves more Rafinha just to get chances over Dembele in that wing. बारसा कभी ना कभी चेंज करना चाहिए, प्रेशर बनता है यार। भाई यहाँ पर गिफ्ट कर दिया ऑलमोस्ट मोरक्को ने, माजरावी ऑलमोस्ट गिविंग इट टू डेम्बेले, लेकिन जस्ट अबाउट शेविंग ग्रेस। अगेन भाई सब लोग डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द स्ट्रीम। मैंने कुछ स्टैट्स शेयर किए भाई, कम ऑन, 5% लोग भी लाइक नहीं कर रहे स्ट्रीम को, 60%, 60% लोग आर नॉट सब्सक्राइबिंग टू चैनल। कम ऑन, हु आर वाचिंग पीपल, दीज आर ऑल पीपल हु आर वाचिंग बाय द वे। तो भाई कम ऑन, इतना तो कर ही सकते हैं नहीं। यहाँ पे कॉर्नर है, प्रिटी श्योर, जस्ट अबाउट, हाँ कॉर्नर है। कोनाटे कंसीडर का कॉर्नर, भाई कोनाटे लेफ्ट सेंटर बैक इज नॉट लुक्ड आउट ऑफ प्लेस, आई मस्ट से। Chelsea should sign Guardiola immediately. I know what happened yesterday, but it was Messi overall in tournament. Guardiola, भाई either way Guardiola का वैल्यू सब लोग बोल रहे नीचे चले गया होगा, नहीं गया होगा मेरे ख्याल से। Guardiola is still very young. He's still one of the best center backs in tournament. Oh हाँ, Zidane won the La Liga in his second stint, that too with a very injured squad, and also made a semi-season. Yeah, fair enough. I'm not quoted that. Like, the fact is the guys won. Simple as that. Doesn't matter. Squad. Oh, what a goal! Oh my God! What a goal! भाई ये bicycle kick. This would have been a goal of the tournament. कॉर्नर से भाई, जियश का कॉर्नर, एंड ऑलमोस्ट यमिक द सेंटर हाफ विद अ बाइसिकल किक ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर ब्रो। व्हाट अ बाइसिकल किक! इनफैक्ट एननेसरी भाई क्या कर रहे थे, इनफैक्ट इफ ही वाज अवेयर एननेसरी ही कुड हैव इवन टक्ड बैक इन द रिबाउंड यार। अरे भाई यमिक, मैन, ही हैड अ ट्रेमेंडस कपल ऑफ गेम्स यार, यमिक। व्हाट अ मोमेंट! वही बोलता था ना, 1-0, यू आर नॉट आउट ऑफ इट, यू आर नॉट आउट ऑफ इट। थैंक्स फॉर करेक्टिंग दैट पुदिन। वाओ, नटक्रैकर्स, ग्रेट ग्रेट टू नो दैट यार। अगेन नटक्रैकर्स, मुझे याद है आपका कमेंट पहले का। विश यू हैप्पी जर्नी एंड एंजॉय ब्रो। अगेन डू शेयर सम पिक्स यार, आई ट्राई एंड गिव यू शाउट आउट लाइव। इंस्टा में मुझे डीएम करिए। डेम्बेले 1 out of 10 मैचेस, प्राइम मैराडोना, रेस्ट 9। भाई हैरी मैग्वायर इज एट अ गुड टूर्नामेंट, आप नहीं बोल सकते, मैं तो फैन भी नहीं हूं हैरी मैग्वायर का। कॉर्नर है, चलो एक और कॉर्नर है कि फ्री किक है? 3 मिनट है स्टॉपेज टाइम। जियश बॉलिंग इन द लास्ट फ्यू मिनट्स बाय द वे। एट वर्ल्ड कप फाइनल विल यू सपोर्ट अ मिलान प्लेयर्स और मेसी? नेशन वांट्स टू नो। भाई अगर फ्रांस और ये आती है ना अर्जेंटीना, मैंने क्लियरली बोला डेरेन दैट इट वाज अबाउट नॉट वांटिंग फ्रांस टू विन, दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग, बट इट्स डिफिकल्ट चॉइस है थोड़ा सा। आई नो द वे यू पुट इट, नाउ इट रिमाइंड्स मी, कम ऑन मैन, जिरू के लिए भी लास्ट चांस है यार, कम ऑन, देखते हैं। मोमेंट पर डिपेंड करेगा। आई एम अ प्लास्टिक फैन ब्रो, डेरेन बता दो दुनिया को। लेकिन अगेन भाई मेरी टीम तो है नहीं, अगेन फुटबॉल इज अ टीम स्पोर्ट, मेरी टीम तो है नहीं, इंडिया या नेदरलैंड्स है नहीं, दैट्स व्हाट आई वाज सपोर्टिंग। फ्रांस और क्रोएशिया थर्ड प्लेस वुड बी लिट। ओके लेट्स सी। तो अभी भी आप, गौरव इज बैकिंग मोरक्को। हाँ ये ऑन लोन हुआ है, मतलब अगेन आर्सेनल आर डूइंग क्रेजी थिंग्स। एमरी इज वन ऑफ द रीजंस फॉर श्योर, प्रीटी श्योर, not that they beat Chelsea just 2 days back. Yep. अरे बिल्कुल, नेग्रेडो इनफैक्ट ही हैड अ वेरी गुड सीजन यार। He, correct me if I'm wrong, bro. He almost scored 20 goals or more. Crazy season he had, yeah, in the Israel. Negredo had a good, very good season. I think he was homesick. There were issues off the pitch. इसलिए वो गए थे. That was the reason why he left, or he was moved on. Just like a Crespo for Chelsea ना, बहुत अच्छा सीजन था 2005-6 में, बहुत अच्छा सीजन था। लेकिन कहीं ना कहीं वही हो जाता है ना कभी कभी। फ्रांस रीचेस नो चांस ऑफ अर्जेंटीना विनिंग, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, पार्थ आई रिमेंबर दैट कमेंट, इट हैज टू बी मेसी, सपोर्ट अर्जेंटीना। मैं खुद बोल रहा था यार, मैं फ्रांस को नहीं चाहता हूँ, इट हैज टू बी मेसी, लेकिन द वे डेरेन पुट इट ना, दैट जिरू भी है यार, मुझे याद है जिरू का भी लास्ट डांस है, बट हाँ बंदे ने एटलीस्ट जीता यार वर्ल्ड कप, फेयर इनफ।
आई थिंक मेसी डिजर्व्स, मतलब मैं जनरली बोलता नहीं हूँ, यू ऑल नो दैट, बट आई थिंक मेसी डिजर्व्स अ ट्रॉफी यार, इट हैज टू बी द थिंग। व्हाट इज फॉर यू द गोल ऑफ द वर्ल्ड कप? मैंने ऑलरेडी बताया था, नॉट क्रैकर्स, आई थिंक इट्स द ब्राजील का थर्ड गोल इफ आई रिमेंबर राइट अगेंस्ट साउथ कोरिया, टीम गोल था। वाओ, हो जियश, जियश व्हाट अ डेंजरस बॉल ब्रो, लेकिन यहाँ पे काउंटर पे आई थिंक, ओह लकीली फ्री किक मिल गया मोरक्को को। ट्रस्ट मी, अगर फ्री किक नहीं मिलता, एम्बापे वाज गोइंग ऑन द रन टू स्कोर अ गोल। भाई यहाँ पर अपील कर रही है मोरक्को कि यार कुश्ती लड़े हैं, एंड प्रीटी श्योर जिरू ने पुल किया है एननेसरी को, और चोमनी पुलिंग वन ऑफ द अदर प्लेयर्स डाउन, व्हिच आई डोंट थिंक सो, इतना क्लियर नहीं है। अगर पेनल्टी देते तो शायद दे कुड हैव स्टूड विद द डिसीजन, लेकिन प्रीटी श्योर इज नॉट अ फ्री किक, इट्स नॉट अ पेनल्टी। योवेटिच इतने गोल्स नहीं मारा था दो, कंपेयर टू नेग्रेडो। नाइस नाइस। At one point, City played with four strikers: Aguero, Tevez, Balotelli, Edin Dzeko. Beat that. By Indranil, there were a lot of teams here used to play late 90s or 2000s. Mein, na? Manchester United, man, they used to have a crazy number of forwards in the pitch, I remember. But it's half time, people. Half time. Half time, and it's France 1, Morocco nil with a Theo Hernandez effort. बहुत ही नैरो एंगल, बट एक आप बोल सकते हो मैच वुड हैव बीन निल निल इफ नॉट फॉर थियो हर्नांडेज, सिंपल एज दैट। क्योंकि इन दैट फर्स्ट फ्यू मिनट्स मोरक्को नहीं लग रही थी द टीम दैट दैट हैज बीन, यू नो, इन टर्म्स ऑफ डिफेंसिव अवेयरनेस, डिफेंसिव फॉर्मेशन, लाइक दे वर इन सिक्सेस एंड सेवंस हर जगह पहले फ्यू मिनट्स में, बट आफ्टर दैट यू वुड आर्ग्यू दैट मोरक्को हैज डन क्वाइट वेल। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ जियेश हैज बीन बॉलिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द हाफ, और ऑफ कोर्स यू नो दे हैव अ लॉट ऑफ यू नो, एक होता है थ्रेट व्हेन इट कम्स टू their defenders getting the box and scoring those you know, free kicks. That is something that they could have done. अगेन मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, बट आई थिंक द एफर्ट ऑफ द गेम आया था यामिक द्वारा यार। यामिक जो लास्ट में बाइसिकल किक किया था ऑलमोस्ट, ओ माय मैन, दैट डिजर्व्ड अ गोल यार ऑनेस्टली। लेकिन हाँ, थियो हर्नांडेज जो आर्गुबली ये मैच नहीं खेलना चाहिए था मेरे लिए, बिकॉज ही वुड हैव बीन सस्पेंडेड ऑफ बीइंग अ येलो रेड कार्ड अगेंस्ट इंग्लैंड। अगेन वो डिबेटेबल है, बट एसी मिलान प्लेयर है भाई, बैक करूंगा एब्सोल्युटली। थियो हर्नांडेज व्हाट अ प्लेयर, उनका रन जो है ना, दैट्स व्हाट मेक्स हिम डिफरेंट, and that is why he is there in the box thereabouts. Theo Hernandez ने किया बढ़िया गोल, but what do you think? मतलब what has been the who has been the player of the match? Again, Giroud with the post. Giroud का I think arguably you can say one of the better matches रहा है ये वाला match, despite him not getting a goal. Mbappe not getting a goal, भाई वो थोड़ा sad रहेगा towards the end. There was a moment मोरक्को को free kick मिला. I think there was a little bit softness in that, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है Mbappe would have gone and scored. अगेन ओनाही का बहुत अच्छा एक स्ट्राइक आया था, कर्लर आया था, विच लोरिस डिड नॉट एक्सपेक्ट, और लास्ट में उन्होंने ड्राइव कर दिया और सेव कर दिया फॉर अ कॉर्नर। बट इवन कोनाटे, आई हैव टू से, एज मच एज मैंने बोला था बिल्डअप में दैट कोनाटे और फोफाना टेस्ट हो सकते हैं अगेंस्ट जियेश और हकीमी, while जियेश हैज डन वेल, आई थिंक हकीमी के साथ आई थिंक दे हैव डन वेल, फोफाना एंड कोनाटे, आई थिंक बोथ ऑफ देम हैव डन रियली वेल, तो उनको भी देना पड़ेगा। चुआमनी का भी एक एफर्ट था, रिमेंबर दैट वाज क्लोज, but honestly I think it has been that first few minutes में they were five at the back and they changed the system, size getting injured, and yes, Amala came, midfielder आए और they went, you know, 4-5-1 rather than 5-4-1, और वहां पर कहीं ना कहीं I think it has helped them, and Morocco has looked into the game, so it is still 1-0। तो क्या बोल रहे हो भाई, is a Morocco goal coming? Remember, they don't score many goals, लेकिन as long as it stays 1-0, और एज मच एज क्रोएशिया ने कंसीड भी किया था आई थिंक फर्स्ट हाफ में, लेकिन दे वेंट ऑन कंसीडिंग। यहाँ पे डिफरेंसेस, दे हैवंट कंसीडड, जीरो इज द पोस्ट एट बेस्ट, बट मोरक्को भाई अच्छा एफर्ट रहा है उनका, दो इनफैक्ट ओनाही और यामी का बहुत अच्छा एफर्ट था, और जियेश भाई इसके जो डिलीवरी है बहुत अच्छा रह रहा है इन द लास्ट फ्यू मिनट्स। तो समय डाउन लाइन आई थिंक अ गोल कैन कम, मैंने बोला है दैट एक गोल विल कम फॉर मोरक्को, बट आई थिंक वही है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है फ्रांस का जो काउंटर है, इट्स डिफिकल्ट टू बीट दैट। देखते हैं आप लोग का लास्ट 10 मिनट्स मोरक्को वर गुड एग्जैक्टली। अंकित भाई, हु डू यू थिंक हैज बीन वर्स, नोलिटो फॉर स्पेन और छेदीरा फॉर मोरक्को? भाई छेदीरा, ऑनेस्टली
मुझे याद भी नहीं इतना गंदा परफॉर्मेंस कोई दिया। आई नो, सॉरी टू द गाई ब्रो, लेकिन इतना कोई गंदा परफॉर्मेंस दिया होगा ना नेशनल जर्सी, मुझे तो याद ही नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड कप लेवल, बाय द वे। इट बी लाइक एम्बापे विन सेकंड वर्ल्ड कप, होल पीएसजी क्लब एज गिफ्ट, एम्बापे विंस थर्ड वर्ल्ड कप, एम्बापे गेट्स यूरोपियन सुपर लीग एज गिफ्ट। ओह माय गॉड। अरे यार, एक्चुअली बोनी वाज गुड यार। विल्फ्रेड बोनी वाज गुड, ही यूज्ड टू डू अ जॉब। आई थिंक हिज होल्ड अप प्ले बहुत अच्छा था मानव यार, कम ऑन। अलवारो मोराटा चेल्सी, द स्टार्ट ही हैड क्वाइट अ गुड स्टार्ट। सच में आपको याद है तो ही एक्चुअली हैड क्वाइट अ गुड स्टार्ट। एक ट्यूनिंग विद एस्पिलिक्वेटा थी, डेविड लुइस एस्पिलिक्वेटा के साथ, नाइस। ही हैड ट्यूनिंग, them putting those long balls, them putting those crosses, and them getting goals. Lekin, come on, I think Wilfred Bony, I think probably has to get the nod वहां पर. Just about Morata was that bad यार for Chelsea. I really feel that, considering जो price tag था। ये फ्रांस चीटिंग है, फीफा की टीम है, प्रॉपर चीट कोड। लेकिन पार्थ एक ही गोल स्कोर किया अभी तक, नथिंग कैन बी सेड दैट इट इज ओवर। क्या आप बोलोगे कि 100% फ्रांस जीतेगी? 100% आप बता सकते हो? बेट लगा सकते हो मेरे से? नहीं, आई डोंट थिंक सो। बिग अप आदित्य, कैसे हो? नाइस टू सी यू। आपको टैकल अलर्ट सर, कल का डिस्कॉर्ड का चोक मत करना भाई। डिस्कॉर्ड में मुझे पता नहीं आशीष, एक काम करेंगे आशीष, आप मुझे मैसेज करिए, विल फिक्स अप अ टाइम। इंस्टाग्राम में ही ऑडियो कॉल कर देंगे, यू नो, दैट्स अगेन फॉर मेंबर्स स्पेसिफिकली आई एम सेइंग दैट आई माइट सेट अप अ टाइम। और हाँ, मैंने एक पोल डाला है आज, पीपल डू चेक आउट दैट पोल, बिकॉज instead of doing this, there is an app which probably is offering me that, so that's something that we could think about in the future. France is equal to all star African 11। हाँ लेकिन दैट इज अ डिफरेंट डिबेट विशाल, ऑनेस्टली। भाई जीरू, जीरू तो प्रॉपर फ्रेंचमैन है। फ्रांस, थियो हर्नांडेज बी, यू कैन आर्ग्यू नहीं। डू यू थिंक द फ्रांस डिफेंस इज फ्रेजाइल? आई थिंक रतन, यू हैव अ पॉइंट। फ्रांस का हर एक मैच में दे हैव नॉट गॉट अ क्लीन शीट। आज भी लग रहा है दैट यस, देयर कैन बी अ मोमेंट, जिएश का डिलीवरी बहुत अच्छा हो रहा है, बुफाल कैन गेट इन बिहाइंड, नेसेसरी। आई एम नॉट हैविंग कॉन्फिडेंस उसके साथ में। दैट्स द मेन प्रॉब्लम, दैट आई डोंट थिंक फाइनल थर्ड में इतना मतलब क्लिनिकल है बोर्को। भाई अगेन देखिए, पहला जो गोल था ना, जो थ्रू बॉल से आया था, थ्रू बॉल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, किसका था थ्रू बॉल यार? कोई बता दे मुझे। आई थिंक प्रीटी श्योर वरान का था, वरान तो ग्रीजमैन। एंड देन एम्बापे का शॉट आया था जो सेव किया था समाओ मोरक्को ने, एंड देन थियो हर्नांडेज शॉट। हाँ लेकिन आई कैन सी फ्रांस कंसीडिंग ब्रो, सच में बोलो तो। आई थिंक दे हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस मोरक्को, क्योंकि दे हैव नथिंग टू लूज। रिमेंबर, लास्ट 45 मिनट्स ऑफ देयर वर्ल्ड कप हो सकता है। Giroud, amazing shot. Morocco is very smart on set pieces. Onahi and Buffal, good game. भाई सब लोग 100 लाइक्स भी नहीं हो यार, क्या ही तो बोलो यार भाई, 100 लाइक्स कर दो एटलीस्ट। भाई अगेन मैं स्टार्ट बोलूंगा आप लोग को यार, मैं स्टार्ट बोलता ना, आपसे क्लियर हो जाता सर्टन थिंग्स, दैट भाई फॉर वॉट एवर रीजन आप लोगों को लाइक करने में पता नहीं क्या आपको लग रहा है यार। आई नो पीपल माइट ड्रॉप ऑफ व्हेन आई से दैट, इट माइट कम अक्रॉस एज रूड, बट ऑनेस्टली ब्रो, लाइक तो कर दो यार, इतना तो कर ही सकते हो आप। आई नो दैट काफी लोग, 60% लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं करते फॉर वॉट एवर रीजन, बट भाई करीबन 1000 लोगों ने देखा है अभी तक। आई एम जस्ट गिविंग यू अ स्टैट, और 100 भी लाइक नहीं हो यार, इतना तो कर दो एटलीस्ट एब्सोल्युटली। एंड डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन। पहला लाइन इन डिस्क्रिप्शन गिव्स यू समथिंग, of an opportunity to win you multiple jerseys as well as play and have some fun. Ziyech nice presence, especially last 15 मिनट में अनमोलदीप after half an hour mark, and Ziyech ने दिखाया है what he's made of. I think France Argentina will be a better match to watch. Okay, fair enough. I am with Indranil actually. I want Morocco to win just because they are doing a good job out there. Okay, quality does not matter. The way a team plays on a particular day matter. Actually, Vishal, वही है. Result matters. I think the proof is Colony. Will you argue? Will you say, भाई सब लोग बता दो, which is the team जो इस वर्ल्ड कप में बेस्ट लगी in terms of football? Just tell me. इस वर्ल्ड कप में सबसे बढ़िया ऑन द आई कौन सी टीम लगी आप लोगों को? In my personal opinion, it's not Argentina. Maybe it's France, but again, France भी डिफेंसिवली इतना अच्छा नहीं लगी है मेरे लिए. They have looked, shaky. मेरे लिए I think the team which has looked the best on the eye, जो you have seen and said, wow, they have played some good football. आप बोलते हो generally, which I don't believe in much, but you would say that maybe it's Brazil. Where are they now? You all know that where is Brazil. ठीक है. फर्स्ट हाफ दिव्यांश, नाइस टू हैव यू यार, मतलब अगेन लाइक कर देना भूलना मत।
मेरा फर्स्ट हाफ का यही है दैट फर्स्ट फ्यू मिनट्स में मोरक्को ने जो चेंज किया ना, वो जबरदस्ती का चेंज था बिकॉज ऑफ हैविंग मल्टीपल इंजरीज। दे वर कवरिंग फॉर ईच अदर, उनके बेयरिंग्स क्लियर नहीं थे, दे वर नॉट नोइंग व्हाट हैपेंड जब वो थ्रू पास आया वरान से टू ग्रीजमैन एंड एवरीवन वेंट। होता है ना बचपन में हम जाते थे बॉल के पास, सब लोग डिफेंड कर लो, सब लोग अटैक कर दो वाला चीज, एवरीवन वेंट देयर, रिबाउंड नो वन वाज देयर एंड थियो हर्नांडेज वाज देयर, और वहीं पर नैरो एंगल था, बुनू को बीट कर लिया उन्होंने। अपार्ट फ्रॉम दैट जीरू का मोमेंट था, ही मेड समथिंग आउट ऑफ नथिंग टू बी ऑनेस्ट। ऑनेस्टली एम्बापे डिड नॉट हैव द हाफ जो आप एक्सपेक्ट करोगे एम्बापे से, एंड देयर समवेयर ऑन द लाइन राइट विंग ऑफ मोरक्को को देना पड़ेगा क्रेडिट। एंड व्हेन आई एम सेइंग राइट विंग, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ जो नए डिफेंडर है दारी, हकीमी एज वेल एज जियेश, ओनाही, आई थिंक दे हैव बीन रियली गुड सच में। बट Ziyech has had moments in the last 15 minutes। उनाही अच्छा शॉट था कर्लर, उसके अलावा मुझे लगा नहीं कि दे विल स्कोर अनलेस वो यामिक वाला बाइसिकल किक हो जाता, तो दैट इज समथिंग। बट वही है, एक गोल है, इट इज वेरी क्लोज। इन नेसेसरी इज नॉट दैट फॉरवर्ड जो आप चाहते हो, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स टीम में। लेट्स बी ऑनेस्ट, एज मच एज द गाइस प्ले फॉर सेविया, आई डोंट थिंक एननेसरी हैज दैट, लगे नहीं है इस टूर्नामेंट में। बुफाल अच्छा किए बट इज येलो कार्ड रिमेंबर, तो कहीं ना कहीं आई थिंक वो थोड़ा सा अभी होल्ड अप इतना नहीं करेंगे जितना कर सकते हैं जनरली। हिज वर्क रेट, हिज होल्ड अप इज एक्चुअली बेटर देन एननेसरी, आई वुड से। लगी बेट, अगर फ्रांस हारी तो आई विल शेव माय हेड मुस्टैच एंड आईब्रोज। ओहो यार, मैं भी, मेरा मेरा भी प्रेडिक्शन तो वही है कि फ्रांस ही जीतेगी, लेकिन आई थिंक गोल कैन कम यार। फ्रांस अभी तक क्लीन शीट नहीं रखी है, प्लस द फैक्ट दैट दे हैव चेंज्ड, यू नो, और जियेश हैज नथिंग टू लूज, सो ही विल जस्ट गो फॉर इट। इट डिपेंड्स ऑन बुफाल कितना देर तक रहे बीइंग ऑन येलो कार्ड, लेकिन हाँ, लेट्स हैव दैट पार्ट, नो नो वरीज अंदर यार, चार करके रख लो, ठीक है। ठीक है सर, डिस्कॉर्ड फील्स वर्ल्ड कप बट इंस्टा कॉल देखते हैं भाई, वॉट एवर इज पॉसिबल आशीष, आई ट्राई माई बेस्ट। डिस्कॉर्ड पे ट्राई करते हैं, चलो भाई सब लोग, डिस्कॉर्ड का भी लिंक है नीचे, डू जॉइन ऑन डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड पे पहले ट्राई करेंगे, अगर नहीं होता तो देन दैट्स प्लान बी। इफ फ्रांस विंस देन इट वुड बी डिफेंस वर्सेस अटैक। It's already defense versus attack, Aj Ratan. It's already defense versus attack. But will you say defense versus attack? Argentina, yes, good defense, but I think Argentina ka midfield, bro. It has to be midfield battle because Enzo Fernandez आने के बाद they have been doing really well in their midfield. So Enzo Fernandez, De Paul, Messi drops back. I think McAllister बहुत अच्छा किए. Remember, he has been a fixture in the team. इंग्लैंड बाय इंग्लैंड फॉर मी ब्राजील लुक बेस्ट, इंग्लैंड लुक बेस्ट फॉर पुदिन। लेकिन वो देखो ना, दोनों ही ब्राजील और इंग्लैंड दोनों ही, आर दे देयर इन द वर्ल्ड कप फाइनल्स? नो, दे नॉट देयर इन सेमीफाइनल्स आल्सो। तो आप बोल सकते हो टूर्नामेंट फुटबॉल नीड्स बोथ ऑफ इट? बिल्कुल नहीं। ओके, बट इट्स जस्ट दैट दे आर नॉट गुड इन सिट बैक एंड डिफेंड स्टफ। बट डिड क्रोएशिया सिट बैक एंड डिफेंड? आई डोंट थिंक सो। इन दैट गेम मिड ब्लॉक रखी थी ज्यादा, कोई नहीं। थैंक्स यार रिजवान, दैट मीन्स अ लॉट। बिल्कुल आशीष, नो प्रॉब्लम भाई। सब लोग अगेन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द स्ट्रीम। साथ साथ में ये भी बताइए आपको सेकेंड हाफ में आपको क्या लग रहा है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? इज एम्बापे गोइंग टू बी लीडिंग मेसी इन दैट गोल्डन बूट? नॉट दैट मेसी केयर्स, बट इज एम्बापे गोइंग टू हैव हिज ब्रैगिंग राइट्स गोल्डन बूट का एटलीस्ट? नॉट दैट वर्ल्ड कप भी ट्राई कर रहे हैं ऑब्वियसली। और जिडू जिडू बोल रहे भाई अल्वारेज आके मुझे इक्वल कर दिए, क्या हो गया ऑल ऑफ सडन? तो जीरो बोल रहे मुझे भी चाहिए एक और गोल, और एम्बापे, मेसी और जीरो तीनों 5 गोल्स में जाएंगे वर्ल्ड कप फाइनल में। और ऑन द अदर हैंड यू कैन से दैट कम ऑन भाई, इंडिविजुअल स्टैट्स चाहिए नहीं व्हेन इट कम्स टू मोरक्को। वन गोल एंड मोरक्को इज इन द गेम, दे आर हैविंग पॉसिबली वन फुट इन द फाइनल्स। अगर एक गोल पहले मोरक्को मारती है, आई नो फ्रांस का ज्यादा क्वालिटी, दे हैव अ बेटर बेंच, बट ट्रस्ट मी देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ पैनिक, देयर विल बी। ओजिल इज देयर, वाओ इंटरेस्टिंग। 3-1 फ्रांस विन, ओके। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि मोरक्को का गोल आएगा, लेकिन फ्रांस विल कम बैक एंड स्कोर, यस, ईदर 1 और 2 गोल्स, यस। सो 2-1 और 3-1 में जा रहा हूँ फ्रांस के लिए। अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस फाइनल, वाओ इट गोना बी एपिक मैच भाई। हाफ टाइम है, दिस मैच गोस टू पेनल्टीज, अनमोलदीप बोल रहे हैं, इंटरेस्टिंग। Argentina is looking good in every aspect, whether it's defense, mid, or attack. It's just that they like to grind the result the way Argentina always play. Vishal, exactly. मेरे लिए key is their midfield and of course Messi factor तो है ही खैर, but I think Scaloni
स्कलोनी टैक्टिकली बहुत अच्छे हैं, तो आई डोंट थिंक इट्स अबाउट द डिफेंडर्स प्लेइंग आउट ऑफ द स्किन और प्लेइंग वेरी वेल और ऐसे ऐसे कुछ. आई थिंक इट्स जस्ट दैट उनका स्ट्रक्चर अच्छा है, दे एग्जैक्टली नो द रोल्स, एक दूसरे को समझते हैं, केमिस्ट्री अच्छा है ऑफ पिच, यू नो दे लुकिंग लाइक अ टीम. तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू द कोच, एंड वही है द डिफरेंस बिटवीन अर्जेंटीना एंड यू नो से ब्राजील और इंग्लैंड इस बार में. सच में बोलता हूँ, अपार्ट फ्रॉम मेसी फैक्टर, वो तो है ही. बट अगेन यार, जो भी लोग देख रहे हैं, अगेन डू नॉट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन. फर्स्ट लाइन शाउट आउट जाता है यहाँ पे एब्सोल्युटली टू स्पोर्टिकोस, ग्रेट वेबसाइट. ऑफ कोर्स दे आर गिविंग एक अपॉर्चुनिटी हमें टू विन मल्टीपल जर्सीज एट द कॉस्ट ऑफ वन प्लस समथिंग मोर ऑफ अ बोनस. यहाँ पे मोरक्को का एक चेंज दिख रहा है यार. मोरक्को इतना अच्छा बेंच तो नहीं था, आप क्या बोल रहे हो भाई? अगेन मैं दिखाना चाहूंगा आपको बेंच यहाँ पे. अगेन आई हैव अ कोल्ड पीपल, सॉरी, आई नो दैट. अच्छा नहीं लग रहा है बट व्हाटएवर. भाई मोरक्को के लिए कौन आ रहे हैं? अतियात अल्लाह इज कमिंग ब्रो. ये क्या हो रहा है? आर दे अगेन गोइंग फाइव एट द बैक, और आर दे हैविंग भाई इधर? ये क्या हो गया यार? बाय द वे अगवेड आज खेले नहीं है. दारी में दारी कैसे आ गए बीच में? अगवेड खेले नहीं है. मैं पूरा अगवेड अगवेड कर रहा था भाई. अगवेड इज नॉट इवन प्लेड दिस गेम. भाई ये फुटबॉल.com बिग अप. लेकिन क्या कर दिया आपने? कौन जा रहा है यार मोरक्को के लिए? इंटरेस्टिंग रहेगा. अतियात अल्लाह अगर आ रहे लेफ्ट बैक, तो will it be that Ziyech will play on the other wing and Hakimi plays as a winger? Is it possible? Let's see. भाई सब लोग सेकेंड हाफ शुरू हो रहा है. गेट इन योर सेकेंड हाफ प्रेडिक्शंस. मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ 2-1 और 3-1 टू फ्रांस. Morocco is winning. Wow. France 2-0. Mbappe will score. Morocco has been better than France, especially in the last 5-10 minutes. बिल्कुल last 10 to 12 minutes it has been Morocco, absolutely. Scaloni always parks the bus after one or two goal rather than killing or finishing the game. That makes opponents to come back, bro. नहीं, लेकिन कल तो नहीं था ना ऐसा इतना कंपेयर टू नेदरलैंड्स. आई थिंक दे हैव लर्नड वेल यार इन दिस टूर्नामेंट. आई थिंक साउदी गेम हैज मेड देम लर्न अ लॉट इन फैक्ट. या फेयर इनफ दिबानिक. ओके, यहाँ पे चेंज के लिए मैं देख रहा हूँ, कुछ फ्रांस ने तो कुछ चेंज नहीं किया है, प्रीटी श्योर. लेकिन मोरक्को का चेंज लग रहा है दैट देयर इज अ चेंज. डोंट टेल मी सो बुफाल इज गॉन ऑफ. भाई माजरावी इज गॉन ऑफ. माजरावी भी 100% फिट नहीं है. व्हाट इज दिस? नॉट ग्रेट. माजरावी आई नो थोड़ा शेकी लग रहे थे, बट जो बार्सिलोना वर्सेस बायर्न म्यूनिख हो रहा था, वो इट्स नॉट हैपनिंग एनी मोर. टाइम स्टैम्प तहा मेरा है 46-11, 46-12, 46-13, 46-14. ठीक है. यस, माजरावी गॉन. 3-1 एम्बापे, ब्रेस एंड जियश 1. ओके भाई, कितना कोल्ड हो गया मुझे यार. कोई नहीं. तो अगेन ग्रीजमैन देखो, ड्रॉपिंग टू स्पेसेस ब्रो, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रीजमैन. बट मोरक्को विनिंग द बॉल. मोरक्को विनिंग द बॉल, लेकिन ग्रीजमैन अगेन डूइंग वेरी वेल डिफेंसिवली. भाई काफी अच्छा मैच रहा है ग्रीजमैन का. जिरू ग्रीजमैन हैव रियली डन वेल इन माय पर्सनल ओपिनियन. यहाँ पे नाइस थियो हर्नांडेज और एम्बापे के बीच में आई थिंक यहाँ पे एक चैलेंज था भाई. हकीमी टोटली मिस्ड, लेकिन अमराबाद भी चैलेंज मिस कर दिए. क्रॉस आया एम्बापे का, नथिंग. कुंडे विद अ शॉट, वेल क्लियर्ड बाय मोरक्को. भाई फ्रांस हैज स्टार्टेड ऑन द फ्रंट फुट. बिल्कुल. ओहो, जैसे रोड्रिगेज, ऑफ कोर्स वी रिमेंबर हिम ब्रो. मतलब ऑलमोस्ट वन सीजन वंडर यू वुड से. हाँ, स्ट्रेट लेफ्ट बैक टू लेफ्ट बैक है, लेकिन थोड़ा स्ट्रेट नहीं बोलूंगा दिव्यांश, क्योंकि अतियात अल्लाह लेफ्ट फुटर है, वेयर एज माजरा इज नेचुरली राइट फुटर. तो हो सकता है इननेसरी के लिए वो बेटर डिलीवरी दे सके अटैकिंगली. और डिफेंसिवली मैं बोलता हूँ दैट आई वुड हैव प्रेफर्ड माजरावी, लेकिन इट इज व्हाट इट इज. अंकित भाई, आफ्टर द मैच आई वांट टू शेयर माय ओपिनियन विद द मैच. या डेफिनेटली शेयर करिए, व्हाई नॉट. आप आना चाहते हो स्ट्रीम पे? भाई एनीवन हु वांट्स टू जॉइन मी ऑन द स्ट्रीम, यू कैन ऑलवेज टेक अ गोट मेंबरशिप. देयर इज वन ऑप्शन. सेकंड है, एक सेकंड, एक, यू कैन, इफ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर ऑलरेडी, डू शेयर मी योर वर्क. बुनू शायद इंजर्ड है. इज इट अ पेनल्टी? भाई ग्रीजमैन ब्रो, व्हाट अ बॉल अगेन एम्बापे के लिए. नॉट अ फ्री किक, नॉट अ फ्री किक. एम्बापे वर्सेस हकीमी, पीएसजी. बट यार एम्बापे
का पैर शायद जाके लगा है बुनू के नी पे, बट आई थिंक बुनू इज फाइन, so कोई नहीं. Griezmann is on Kante mode for France. Everywhere on field, underrated performance. Kante mode तो नहीं बोलूंगा, लेकिन I hear you. Kante is Kante, bro. By the way, ESPN, bro, मतलब get a life. As much as I follow you, आपने बोला है Amrabat, भाई 70% of Earth is covered by water, rest is covered by Amrabat. I don't agree, bro. मतलब बहुत ही बढ़िया रहा है, but Kante level of coverage, please. आई डोंट थिंक एनीवन कुड हैव दैट जो प्राइम कांटे करते हैं करा है अभी नहीं, मतलब व्हाट प्राइम कांटे वुड डू as much as Amrabat has been really good. Nice defense by France, yeah. I must say Theo Hernandez has having one of the games of the tournament. Yeah, if only the bicycle went in, it almost did. लेकिन unnecessary on the rebound, he was dreaming. As a forward, you are expected कि आप anticipate करो उसको. आदिल तराप, yeah. यार हजार तो भाई डिफरेंट लेवल प्लेयर है, प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द सीजन एंड ऑल यार, ही इज अ डिफरेंट लेवल. बट ताराप आई ऑब्वियसली गेट इट व्हाई यू आर सेइंग. Man, Ziyech, who's the captain now, nice ball, but well cleared by France. भाई मैं रियली होप कर रहा हूँ आज फुल टाइम में हो जाए यार, एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए बिकॉज अब पीपल. भाई मच लव टू एवरीवन वाचिंग ब्रो. आई एम फीलिंग रियली अनवेल यार. आई हैव टू शेयर दिस. आई एम रियली नॉट फीलिंग वेल, इसलिए शायद आप लोग वेट भी कर रहे होंगे शॉर्टर वीडियोस जो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ लास्ट 2 दिन से, बिकॉज आई एम नॉट बीन फीलिंग वेल. बट कोई नहीं, पार्ट एंड पार्सल. यहाँ पे एक तो वेदर भी इतना चेंज हो रहा है, साथ साथ में माई मेडिसिन हैवंट हेल्प मी. भाई हकीमी, Hakimi and Ziyech bowling. यहाँ पे एम्बापे getting the ball. And look at that. भाई 3 लोग एम्बापे के पीछे, फिर भी एम्बापे एम्बापे. ओ माय गॉड, एम्बापे 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 एम्बापे. भाई टॉक अबाउट अंकार मेसी. अमराबाद ने जीत लिया. अमराबाद ने मेरा बात सुनकर जीत लिया बॉल कि भाई मैं भी हूँ कांटे जैसा, मैं बेटर हूँ, व्हाई नॉट. ओह मैन. How much you rate for Fofana so far? Are we seeing him in final or Rabi? Rabi has to start, bro. Fofana has got into some good positions attacking wise, लेकिन Rabiot उस position में होता तो strike करता ball को ना. I think Rabiot gives them opposition a goal threat यार. तो Rabiot has to start. और left footed है, natural है, experienced है. He can cover for Mbappe. भाई Mbappe getting injured. Don't tell me. अमराबाद का अच्छा challenge था in my opinion. What is the prime season of Kante? In my opinion, 2021. नहीं, it wasn't. It wasn't. Champions League owned. Champions League owned that season, Taha. But I think prime season, without a shadow of a doubt, I have to say 2017. Yeah, 2016-17 when we won the league on the canter under Conte after losing the first few games. I think it has to be 2016-17 for me. The year after he won the league with Leicester and the year that he won the season with Chelsea, merely it has to be that season. In fact, those continuous Sali was like awesome, bro. What a tackle, बिल्कुल. Thanks, Taha. Ankit bhai, Ada Turan or Griezmann for Atletico Madrid? I think Griezmann is just that Griezmann को इतना खिलाया नहीं जा रहा है. Griezmann एथलेटिको मैड्रिड और रियल सोसिएडाड के लिए एक्चुअली देखा जाए तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है पुदिन ग्रीजमैन का. तो यू हैव टू गिव इट टू. आदा तुरान वाज गुड फॉर एथलेटिको मैड्रिड, बट कम ऑन, ग्रीजमैन लेवल अलग लेवल है यार. Atletico Madrid have had quite a few good players यार over the decades. मैं तो बोलता हूँ yes they have won leagues but they should have even won one more. गोल आने वाला है. Come on, it should be a goal. Come on man, अगर better strike होता तो pretty much sure वो nailed down goal था मोरक्को के लिए. What a chance missed by Morocco in the box. Brilliant cross यहाँ पे आया from the right hand side. Pretty sure it was either Hakimi या Ziyech. Man, क्या मिस मैन. भाई मोरक्को ऐसे मिस करेंगे तो कैसे चलेगा. What a through ball. World class through ball. भाई कुंडे इज नोवेयर. कुंडे वाज नोवेयर बट कुंडे ने क्लियर किया है. मोरक्को ऑल ओवर फ्रांस मैन एंड शॉट. हाउ डिड मोरक्को डिड नॉट स्कोर इन दैट मोमेंट. अमराबाद विद द फाइनल शॉट यार, जस्ट वाइड. मैन नो वे.
what a minute. भाई व्हाट भाई एननेसरी तू ऐसे ऐसे कर रहा है, वैसे ऐसे कर रहा है, भाई एननेसरी तू जा यार, गो नियर पोस्ट, अटैक द बॉल. एननेसरी इज वेटिंग फॉर व्हाट, क्रिसमस? ही इज अ शिट स्ट्राइकर ब्रो. एननेसरी again, Konate and Kunde bro, just about saving France's ass. अच्छा, it was Boufal on the right hand side, not Hakimi. Boufal और एननेसरी कहाँ था यार? What rubbish striker man. एननेसरी man, what a rubbish striker. भाई अगर कोई better striker होता, pretty sure एननेसरी wouldn't have started this game यार. I know he got that goal against Portugal, which makes him a legend already in Morocco. भाई ये क्या था? जो क्लियरेंस किया ना कुनाटे ने, वेयर वर नेसेसरी वो, he should have just gone with a dive, just tried to get that ball in somehow. बूफॉल क्या वर्ल्ड क्लास क्रॉस था, वर्ल्ड क्लास थ्रू बॉल. देन नो वेज. रिपोर्ट कमिंग है कि अगर फ्रांस वर्ल्ड कप फाइनल पहुंची तो बेंजेमा वापस आएगा, वुड फील सॉरी. ना कुछ भी है आशीष, ऐसे रिपोर्ट्स को मत बिलीव किया करो यार. इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल, नहीं होगा. I know he didn't name 26 man squad, but pretty sure Benzema is not going to come back. यार आएगा भी तो I don't think he'll be allowed to come back. That's why you pick a 25 26 man squad. नहीं, यहाँ तक जहाँ तक मेरी समझ है, unless फ्रांस ने नहीं पिक किया था 26 प्लेयर बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग बेंजेमा, आई डोंट नो. वो हो सकता है, अगर हो भी होता भी है ना, भाई जिरू हैज अर्नड दिस स्पॉट. व्हाट इज सेइंग ब्रो? मतलब कम ऑन भाई, आई डोंट लाइक दिस ब्रो. आशीष, आई लव यू ब्रो, लेकिन आई नो आप टारगेट नहीं करो जीरू को, लेकिन जनरली मैं बोल रहा हूँ यार, व्हाट डज जीरू नीड टू प्रूव? व्हाट डज जीरू नीड टू प्रूव टू एनीवन इन अ फ्रांस जर्सी? मैन, ही इज हिस्टोरिकल यार. मतलब कम ऑन, आप जोक कर रहे हो प्रीटी मच श्योर. मोरक्को सिंस प्लेइंग 4-3-3 प्राइम आर्सेनल. लुक एट द मोरक्को कोच, खुश नहीं है फिर भी. भाई मोरक्को वो ये लास्ट 35 मिनट्स है यार उनकी वर्ल्ड कप जिंदगी का, एटलीस्ट फॉर टाइमिंग, तो डेफिनेटली दे विल गिव देयर ऑल. जैसे ही मैंने जीरू को प्रेस किया, जीरू लूजिंग द बॉल एज ऑलवेज. हाउ डिड कोनाटे डिफेंड दैट? इनफैक्ट एननेसरी जो उसके सामने था, भाई वो क्यों नहीं गया बॉल के लिए? व्हाट वाज ही वेटिंग फॉर? हाँ बिल्कुल. Then what a start to the second half. भाई ओहो जियश, टेस्टी बॉल यार. जियश, अमराबाद तो जियश with the ball, bowling bro. Ziyech is bowling. Why goal? 100%. Come on. How can Morocco not score? भाई उनके पास स्ट्राइकर क्यों नहीं है? इतने बढ़िया बढ़िया पोजीशंस में शॉट तो लो भाई कोई. अब शॉट लो और कुछ नहीं. Ziyech asking for a corner. I think he'll not get it. This time he'll not get it. But भाई Onahi, Ennesseri, कोई तो मारो भाई, शॉट लो फिर ही आएगा गोल. शॉट के बगैर नहीं आने वाला गोल आपका. अंकित भाई लविंग दिस कुंडे परफॉर्मेंस. भाई कुंडे का एक मिस्टेक था, फिर नेक्स्ट मोमेंट ही करेक्टेड इट और उसने क्लियर भी किया था. आई मस्ट से मेडल मिलेगा, खेल नहीं पाएगा. ओके ओके. Reports are also saying that Messi would miss the game against Croatia. हाँ रिपोर्ट्स यार, वो रिपोर्ट्स कौन है, कहाँ से आते हैं वो लोग यार, कहाँ से आते हैं? This, do you think this is the biggest underdog story ever? No, I don't think so. The biggest underdog story has to be Leicester City, bro. Entire season में 38 games यार, Leicester City has to be. या वो तो कोई comparison ही नहीं है. This is a tournament of 7 games. As much as it is definitely right up there. भाई मैं तो बोलता हूँ सबसे पहले लेस्टर सिटी, फिर ग्रीस, फिर मे बी यस फिर मे बी यस, एटलीस्ट एट टॉप लेवल जहां तक मुझे याद है. इनफैक्ट आई विल गो ऑन टू से दैट टर्की एंड दोज आर दो. व्हाई नॉट टर्की यार? लोग टर्की के बारे में क्यों नहीं बोल रहे? दोज आर दो. आई नो कंट्रोवर्शियल था थोड़ा बहुत, लेकिन दे डिड द स्टफ व्हाटएवर दे हैड टू. साउथ कोरिया 2002 में, उस समय नो वन एक्सपेक्टेड आउट साउथ कोरिया टू रीच दैट लेवल. विंटेज टिकी टाका फ्रॉम मोरक्को. निंजा टर्टल इज इंजर्ड. नहीं, ही इज फाइन. Morocco all over France. Morocco needs a good striker. Oh, can't believe it. Can't believe that Morocco hasn't scored. And that is where I'm telling you that France will come back and score. Why? It'll be too costly. Mbappe not looking himself. Apart from that one brilliant run जो अमराबाद ने किया था उनको टैकल. लेकिन I think
कहीं ना कहीं उनकी जो ट्यूनिंग थी ना विद राबियो, दैट इज मिसिंग इन दिस गेम. आई नो ग्रीजमैन हैज वर्कड रियली वेल, बट ही इज लाइक मोर हेल्पिंग, क्या बोलते हैं आपके, फोफाना दैन एम्बापे. आई नो पासेस अच्छे किए एक दो. अगेन हकीमी, जियश, बॉलिंग ब्रो, बॉलिंग, बुफाल. लेकिन ओनाही, एनएसरी, भाई शॉट्स लो भाई, आप शॉट्स, टेक शॉट्स. कौन से वाले शॉट? फुटबॉल वाले शॉट्स बोल रहा हूँ भाई, नॉटी बॉयज. बट कोई नहीं. No, I'm talking about international major tournaments. International major tournaments, it has to be Greece because they won the bloody damn thing, bro. 2004 में यूरोज में they won it. They won it. They absolutely won it. It has to be Greece. लेकिन in fact, if I'm not wrong, Greece almost did not qualify for the tournament भी. चेक रिपब्लिक भी काफी अच्छी की थी उसमें, ऑल्दो उस समय उनके अच्छे प्लेयर्स भी थे बहुत. लेकिन हाँ, ग्रीस देन दिस वन. ऑफ साइड है भाई एम्बापे, कम ऑन. प्रीटी श्योर ऑफ साइड है. इफ एम्बापे इज ऑफ साइड ना, इट नॉट बी गुड. और ये डिफ्लेक्शन ऑलमोस्ट गोल, प्रीटी श्योर ऑफ साइड था यार. ऑफ साइड है भाई, इतना देर आता है ऑफ साइड फ्लैग भाई. सब लोग, आई नो ड्रॉप, पीपल आर ड्रॉपिंग लाइक 9 pins. It will mean a lot that everyone watching here goes and likes my community post. भाई मैंने community में post किया है दोनों ही चैनल में, Almighty Blues FC and Almighty Sports Plus. Like a broken record, I go on saying every stream, but it'll help if you guys, everyone, like that as well as share it in your WhatsApp groups wherever possible. मेरा एक ट्वीट भी जाता है ऑटोमेटिकली. सो that's how it happens. Okay, big up to Nathan यार. Nathan, I just saw your message. I don't know if you're watching, but Nathan, मैंने just message आपका comment देखा. That's brilliant to know. Okay, फ्रांस को कोई दिक्कत ही नहीं. कभी 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 भी लोग बॉल डाल दो एम्बापे को. वही है ना, एक गोल आते दिख रहा है यार फ्रांस का. अब इतना मिस कर दिए चांसेस. ग्रीजमैन मैन प्लेइंग विद एक्सपीरियंस. ग्रीजमैन देखिए विनिंग अ फ्री किक, दैट्स व्हाट इट इज. इट सीम्स लाइक अर्जेंटीना विल गेट देयर चांसेस टू बरी अनलेस and until Alvarez does not become Higuain of 2014 World Cup. बिल्कुल विशाल, फ्रांस आर नॉट गुड डिफेंसिवली. फ्रांस का लीथल अटैक है, डिफेंसिवली वो अच्छे नहीं है. या एग्जैक्टली जैसे पैराग्वे के बारे में बोला था कोपा अमेरिका में, एंड इवन 98 वर्ल्ड कप में ऑलमोस्ट दे डिड द अनथिंकेबल. दे बीट फ्रांस ऑलमोस्ट यार, राउंड ऑफ 16 में. इट वाज आई थिंक ब्लॉन्क ने मारा था गोल, गोल्डन गोल, फर्स्ट गोल्डन गोल था बाय द वे वर्ल्ड कप्स में. उस समय गोल्डन गोल हुआ करता ना. तो पहला टीम होगा ना स्कोर जो करेगा एक्स्ट्रा टाइम, वो विनर है बस. दे डोंट प्ले द एंटायर एक्स्ट्रा टाइम देन. तो ही स्कोर दैट 116th मिनट में शायद मारा था, 160 या 116 मिनट में. दैट्स हेडर इफ आई रिमेंबर राइट. आया था ब्लॉन्क का, हु एक्चुअली मिस्ड, ही मिस्ड द फाइनल. यस, मोरक्को डिजर्व, लेकिन वो ये ना डिजर्व से हो जीते नहीं जाते यार टूर्नामेंट. देखते हैं हु कैन स्टेप अप यार. हु इज दैट गाय हु कैन स्कोर अ गोल. मतलब आर्ग्युबली मैं बोलूंगा, मालूम है क्या मैं बोलूं. आई नो माजराई फिट नहीं है, बट कहीं ना कहीं आई थिंक दे नीड टू गेट एक सब्स्टिट्यूट राइट बैक है ना. लाओ आप रिस्क लो, खेलो a proper old school 4-4-2 and play Morocco, play Hakimi as a winger, which he does in national team many times. अच्छा भाई cutback हुआ. This is similar to the Messi cutback of yesterday. लेकिन कुछ हुआ नहीं. Well defended by France. मार्टिन गैरिक्स, मार्टिन गैरिक्स को देखते हैं कैसे दिखता है. कैसे दिखता है भाई ये. भाई ग्रीजमैन ही बेटर लगता है नहीं, पता नहीं. एक सेकंड, क्रॉस आया जियश का. भाई जियश इज पुटिंग सम लवली परफॉर्मेंसेस यार इन दिस वर्ल्ड कप. अगेन एज अ डच फैन जनरली मैंने तो देखा है काफी, बट एज अ चेल्सी फैन इट पेन्स मी टू सी इट यार. फ्रांस लाइक सेट बैक बिकॉज दे हैव पेस अप फ्रंट. Deschamps is not happy though.
डेनमार्क, या डेनमार्क, यस, अगेन मैंने डेनमार्क बोला है, डेनमार्क ऑफ द 90s, दे डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स पीपल डोंट नो अबाउट। ग्रेट पॉइंट। देखो वही डिफरेंस होगा ना विशाल, मेसी नॉट जस्ट बाय हिमसेल्फ, ही इंस्पायर्स द एंटायर टीम। एज मच एज वी से जिरू का भी लास्ट चांस है, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, यहाँ पे बिल्डअप विल बी एम्बापे वर्सेस मेसी, अगर फ्रांस जाती है, जो लग रहा है। ऑल्दो आई जनरली बिलीव दैट जिरू, नो मैटर व्हाट, कितना भी करे ना, कम ही रहेगा हमेशा फॉर हिम। हकीमी टू आम्रबात, आम्रबात डेंजरस पास, ग्रीजमैन लर्किंग भाई, ग्रीजमैन लर्किंग, यू हैव टू बी केयरफुल विद दोस पासेस। एक काउंटर हुआ और फ्रांस स्कोर कर सकता है, दैट इज हाउ डेंजरस दे आर। अब देखिए अभी हकीम जियश रोम कर रहे हैं, उनका रोल अलग ही है। राइट साइड से बहुत क्रॉस डाल दिया, हकीम जियश बोल रहे मैं लेफ्ट साइड में जाता हूँ, बुफाल टू जा थोड़ा राइट साइड में, लेकिन बुफाल भी लेफ्ट साइड में दिख रहे, तो दे आर अटैकिंग फ्रॉम दैट साइड। अरे यार गंदा पास भाई, गंदा। बुफाल का ही था शायद, नहीं। चलो एक और चेंज आ रहा है मोरक्को का। Who's coming? I don't know. Let's see who's coming in. By again, for people who are not subscribed to the channel, I highly recommend subscribing to the channel. It just takes the press of a button. Same, अगर like करे तो brilliant रहेगा. And don't tell me Giroud is injured. Giroud को push को किया जा रहा है. Is he substituted? Giroud substituted 65 minutes में. क्यों भाई? 1-0 ही अभी. Marcus Thuram, what a moment, bro. Semifinal of the World Cup. भाई, you all know Lilian Thuram 2006 में came back out of retirement. 98 World Cup में he scored that goal, the only goal that he scored. So that's a moment for Marcus Thuram, जो आते ही लगे हैं थोड़ा सा, अरे भाई just about missed, almost he got it, he got in यार, well done. It's a goal kick. I think दारी ने अच्छा किया इस मोमेंट में, but yeah, again I can if I can request everyone to like, share and subscribe, yeah, do consider doing that. And do let us know, yeah, how do we get to the next level in terms of subscription, because I generally believe we can go to the next level. And necessary coming off, Bufal also coming off. ये Bufal वाला जो substitution मुझे समझ में नहीं आता. I know he's on yellow card आज, but 66 मिनट में आप ले जा रहे हो Bufal को. I think he could have given 75 minutes at least. हमदल्ला और अबुकलाल आ गए भाई. I think यहाँ पर आप देखोगे France will take it from here. I don't see Morocco scoring, honestly. I hope I'm wrong. I want a good finish to the game. लेकिन मुझे लगता है फ्रांस might just get one more goal. ओ भाई कितना कितना गर्म पानी करके रखो ना, जीभ जल गई ऑलमोस्ट. I seriously want Messi to finish his last World Cup game with a hat trick and also one assist. भाई विशाल 4 गोल मांग लो यार तब. You know what? You won't believe. If he gets 4 goals, leave Batistuta was up जो beat किया है भाई. He'll beat Miroslav, or he'll equal Miroslav Klose. Think about that. All time. It's great to see who wants the position on the ball in the final, because both teams want to sit back and go on breaks. Yeah, लेकिन मोरक्को ज्यादा अटैक की है सौरव सेकंड हाफ में. I think they have really looked like taking the game to France. It's just that they're not having the final pass or final shot नहीं आ रहा. वो एक इशू रहा है. Again, last 5 minutes में France has come back well. लेकिन generally मैं बोल रहा हूँ second half का. France winner, हाँ. I believe France winner is coming. I generally believe that. I generally do. लेकिन again people, let's go back. भाई तो फ्रांस आई थिंक लाइक फॉर लाइक ही हुआ है. तुराम आए हैं फॉर जिरू. दैट इज व्हाट हैज हैपेंड. आई डोंट सी अ tactically difference, any difference from France. Whereas Morocco, again उन्होंने चेंजेस तो किया है. आई एम नॉट श्योर हमदल्ला और अबुकलाल कहाँ खेलेंगे. आई थिंक अबुकलाल इज अ स्ट्राइकर जहां तक मुझे याद है. हमदल्ला नंबर 9 है तो वो भी स्ट्राइकर है. तो दे आर प्लेइंग विद 2 स्ट्राइकर्स नाउ, एंड इट माइट बी लाइक अ 4-4-2 नो फॉर Morocco.
नहीं उत्कर्ष, तो वही हुआ ना, पहले 5 मिनट में एक्चुअली मोरक्को ने अटैक किया था, देन दे लॉस्ट द बेयरिंग्स द मोमेंट फ्रांस गॉट ऑन काउंटर, दे लॉस्ट द बेयरिंग्स, एक पास आया थ्रू पास एंड दे लॉस्ट इट। नाइस क्रॉस यहाँ पे बाय ग्रीजमैन ऑन द कॉर्नर, कुंडे विद द बॉल, वेल प्लेड बाय कुंडे ब्रो, वेल प्लेड। एम्बापे, भाई एम्बापे गोल, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट एम्बापे गोल ब्रो। चलो, बूनो के लिए कैच, तो किया था उत्कर्ष, शुरू में किया था, लेकिन वही इतना जल्दी जब गोल आ जाता है ना, दे कैन नॉट गो अटैक अटैक। क्रोएशिया वही मिस्टेक की थी, दे जस्ट कुड नॉट गेट देयर स्ट्रक्चर अगेन जो पहले 30 मिनट पे थे। तो आई थिंक मोरक्को डिड द राइट थिंग। सेकंड हाफ में हाफ टाइम टॉक हुआ, बिफोर हाफ टाइम दे लुक बेटर, आफ्टर हाफ टाइम दे लुक बेटर, आई थिंक दे डिड द राइट थिंग, दे वेटेड फॉर अबाउट हाफ एन आवर जस्ट टू काइंड ऑफ गेट बैक द स्ट्रक्चर। और साइज भी इंजर्ड थे, रिमेंबर माजराई इंजर्ड थे, तो आई थिंक कहीं ना कहीं दैट इज अ फैक्ट, यू कैन नॉट हाइड दैट फैक्ट ना। Closer has 16, Messi has 11. So for that, he need 5 goals, I think. Messi के total 11 ही हुए क्या? एक सेकेंड, I thought Messi went to 12 yesterday, नहीं क्या? एक सेकंड, मैं चेक कर रहा हूँ। मेसी, हाँ 11 है, 11 है, करेक्ट है विशाल। तो 5 गोल्स चाहिए बेसिकली। हाँ, क्लोजा का 16 तो पता है ऑब्वियसली, राइट। तो 5 गोल्स, यस, थैंक यू। आई यूज द रेफरेंस ऑफ इट, नहीं कैरेक्टर्स को तो अवेयर नहीं है, बट आई नो जनरली स्पीकिंग सेनफिल आई नो, बट कैरेक्टर्स का आई डोंट रिमेंबर ब्रो। भाई यहाँ एक फ्री किक दिया है दारी ने, इंपॉर्टेंट पोजीशन में, कैन एम्बापे और एनीवन एल्स डू समथिंग? मार्कस तुराम ने जीता है, मार्कस तुराम हैज लुक्ड लाइवली, बोलना चाहूंगा। आई थिंक मोरक्को वाज द सरप्राइज ऑफ द वर्ल्ड कप अलोंग विद जापान। हाँ, सरप्राइज ऑफ द वर्ल्ड कप, यू हैव टू से मोरक्को यार, मतलब मोरक्को हैज टू बी द सरप्राइज ऑफ द वर्ल्ड कप, नो टू वेज अबाउट इट। जापान सरप्राइज तो नहीं हो गया यार, मतलब कम ऑन, ऑलरेडी जब ग्रुप से आए थे पता था डिफिकल्ट ग्रुप था जर्मनी और स्पेन के लिए, बिकॉज ऑफ जापान। मैं तो बोलता हूँ आर्ग्युबली क्रोएशिया, आई नो वो लास्ट वर्ल्ड कप रनर्स अप थी, आई नो वो नेशंस लीग में सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई की है, बट क्रोएशिया इन द लास्ट 18 मंथ्स हैवंट लुक वो टीम जो लग रही थी 2018 में, और इतने सारे गोल्स नहीं है। तो मैं तो बोलूंगा क्रोएशिया एक्चुअली सरप्राइज इज वेल, लेकिन मोरक्को हैज टू बी द सरप्राइज ऑफ द टूर्नामेंट फॉर मी एज अ टीम। नहीं यार, डेम्बेले एक्चुअली डिसेंट मोमेंट्स रहे, लेकिन ज्यादा लेफ्ट साइड से अटैक करती ना फ्रांस बिकॉज ऑफ एम्बापे। चलो, गोल आने वाला है, और वो बच गया यार, जस्ट अबाउट बच गया यार। मार्कस तुराम अगेन चांस। योर फेवरेट प्रीमियर लीग बॉक्सिंग डे मेमोरीज ब्रो, ये इंद्रानी बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा है मुझे। बॉक्सिंग डे में द थिंग विच आई लाइक, और आप लोग पता नहीं बिलीव करोगे कि नहीं, और ये दिस गोज राइट टू माय स्कूल टीचर, माय प्रिंसिपल एंड एवरीवन ब्रो, एंड ये स्कूल से चला आ रहा है, एंड प्रीटी मच शो माय फैमिली आल्सो इनिशियली डिड नॉट नो, बट लेटर ऑन दे फिगर इट आउट। तो बॉक्सिंग डे स्कूल से, और स्कूल टाइम से बोल रहा हूँ, ठीक है, आई एम इन बंकिंग। बंकिंग मतलब या तो छुट्टी लेता था प्रॉपर, एंड मैं जब इवन एट वर्क व्हेन आई हैव बीन मैनेजिंग टीम्स एटसेट्रा, मैं या तो हाफ डे लेता था या छुट्टी लेता था, ठीक है, वो हमेशा से रहा है। इनफैक्ट क्रिकेट मैच इंडिया को होता तो छुट्टी लेता था, अगर इंडिया का मैच नहीं तब तो हाफ डे डेफिनेटली लेता था मिनिमम। तो मेरा बेस्ट मेमोरी आर्ग्युबली, और अदर शॉकिंगली, नॉट अ विन है, एंड अगेन बीइंग अ चेल्सी फैन मैं शेयर कर सकता हूँ, क्रेजी गेम्स मतलब ओवरऑल होते हैं बाकी टीम्स के लिए भी, लेकिन एक 4-all गेम हुआ था, और मुझे याद है इट वाज माइकल बैलेक हु स्कोर्ड इन दैट गेम लेट। एशली कोल ने एक हैंडबॉल दिया था, इट वाज अगेंस्ट एस्टन विला, जहां तक मुझे याद है, हाँ एस्टन विला थी प्रीटी श्योर। 4-all, इट वाज अ क्रेजी गेम ऑफ फुटबॉल ब्रो। तो लास्ट सेकंड में इट बिकेम 4-all, आई रिमेंबर दैट। ठीक है, एक बार वो हुआ था, एक बार एक क्रेजी टॉटनम के साथ हुआ था एक बॉक्सिंग डे, क्रेजी मेमोरीज ब्रो, एज इन बॉक्सिंग डे इज ऑलवेज गिवन समथिंग, ऑफ कोर्स एशेस, there have been boxing ashes day test in cricket, इंडिया ऑस्ट्रेलिया काफी रहे, मतलब देयर बीन सो मेनी बॉक्सिंग डे मेमोरीज ब्रो, सच में। मतलब ऑनेस्टली इन द फुटबॉलिंग कैलेंडर ना, और ज्यादा कैलेंडर में आप बोलोगे ना कौन सा मेरा बेस्ट डे है एज जस्ट जनरली अ पर्सन ना, मैं बॉक्सिंग डे चुनूंगा, दैट इज द बेस्ट डे, स्पोर्टिंग बोनांजा जो बोलते हैं ना, एवरीथिंग गोइंग ऑन, आई लव दैट डे। मोरक्को कैन डू लाइक नेदरलैंड्स, लाइक अटैकिंग लास्ट 10 or 15 मिनट्स। एक्चुअली कल विशाल अच्छा याद दिलाया, क्रोएशिया ने इनफ किया नहीं यार, दे डिडंट लाइक बोम्बार्ड
with high balls and stuff like that, यार जो करना चाहिए था अर्जेंटीना को. Can France do that? I think they can do that to Argentina if they go to finals, क्योंकि they have a Giroud, they have a Theo Hernandez. France can do that. Marcus Thuram and Giroud. Imagine if they are trailing, they'll get on Marcus Thuram and Giroud. And यहाँ पे Marcus Thuram अच्छा ball, but I think Fofana is not a striker. वहीं पर Rabiot मिस कर रहे हैं. This is the moment जो मैं बोल रहा हूँ. Rabiot को मिस कर रहे हैं फ्रांस. मोरक्को एंड क्रोएशिया प्लेयर्स बिजी नेक्स्ट ट्रांसफर विंडो. हाँ, ग्वाडियोल ले लो, लिवाकोविच देख लो, आप देख लो मोरक्को के अमराबाद देख लो. क्वाइट पॉसिबल ब्रो. Hakim Ziyech, definitely. He might move, I feel, because he's not happy at Chelsea. उनका ड्रीम मूव था, बट ग्रीजमैन शायद हैज वन अ फ्री किक. बैलक सो अनलकी यार, बिल्कुल. बट वन ऑफ माई गोट्स यार, मतलब मैं तो बोलता हूँ, मैं ऑल टाइम चेल्सी 11 मैंने डाला यार बैलक को. यू आर सरप्राइज्ड, आई नो, विद मिडफील्डर्स लाइक लैम्पार्ड, हु इज आल्सो देयर बाय द वे, मैकेलेली, कांटे, एसियन. मेरे लिए लैम्पार्ड, बैलक एंड एसियन वाला मिडफील्ड वाज ऑसम ब्रो, ऑसम. दैट थ्री, व्हाट अ मिडफील्ड. Ruled that midfield for a couple of seasons. The best nil-nil matches you ever saw. The best nil-nil matches I've ever saw. That's interesting. ये fairly recent actually. मैं बोलूँगा it was a heartbreak in the end. So again, I know Chelsea bias में बोल रहा हूँ, लेकिन Liverpool made it that good as well. तो Liverpool Chelsea के जो matches हुए ना, generally the best nil-nil matches ever saw has to be all Liverpool Chelsea matches. Many matches have been nil-nil between Liverpool and Chelsea over the years. Some of the best matches have been there. Recent भी हुए और पहले भी. Be 2000s or 2022. भाई मोरक्को अटैकिंग, लेकिन आई थिंक फ्रांस डिफेंडिंग वेल. आई थिंक फ्रांस ने रखा है अपना स्ट्रक्चर लास्ट फ्यू मिनट्स में. बॉक्सिंग डे मतलब December 26 ब्रो. तो बॉक्सिंग डे, द रीजन, एनीवन नोज व्हाई इट्स बॉक्सिंग डे? आई थिंक आई नो. मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है फ्रॉम बीइंग देयर अब्रॉड एज वेल इन फ्यू बॉक्सिंग डेज. तो क्रिसमस के बाद ना, फॉर पीपल, स्पेशली पीपल हु सेलिब्रेट क्रिसमस माइट नो दैट एक बोला जाता था दैट द मॉर्निंग आफ्टर द क्रिसमस यू विल सी योर गिफ्ट बॉक्सेस आउटसाइड नियर द क्रिसमस ट्री. वो सैंटा विल कीप इट. ठीक है, दैट इज वन रीजन व्हाई इट्स बॉक्सिंग डे. बॉक्सेस बॉक्सिंग डे, नॉट बॉक्सिंग वाला बॉक्सिंग. ठीक है. सेकेंड इज ऑफ कोर्स बिकॉज आप गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हो with your relatives, with your friends and families, वो सब. तो again gift boxes, I think it's basically that. So that is the day when you know you box your gifts, you gift your boxes. Other way. ये हो गया थोड़ा सा जनरल नॉलेज. भाई शॉट नहीं लेना आता यार उनको. वो स्ट्राइकर ही उनमें स्ट्राइकर नहीं है यार. निल निल मैचेस की बात कर रहे थे ना यहाँ पर. ताहा क्या प्रॉब्लम थी यार चेल्सी में? ये 2022 का ही बोल रहा हूँ, जो एफए कप और लीग कप था. वी वर आर्ग्यूबली बेटर एट टाइम्स, बट वी डिडंट हैव द स्ट्राइकर. या मी टू यार. पहले तो फर्स्ट फ्यू इयर्स तो वही सोचते अपन कि कुछ होता होगा. जो टीम हारेगी मुक्का मारेंगे. इंटरेस्टिंग. इट्स कॉल्ड एम्प्लॉयज गिव्स. एग्जैक्टली वही गिफ्ट बॉक्सेस. मोरक्को प्लेयर को क्या दिक्कत है? भाई मोरक्को प्लेयर्स तो पता नहीं, फैंस तो आर लाइकिंग इट. अगर देखिए, अच्छा फुटबॉल खेल रहे हैं यार. दे आर प्लेइंग गुड फुटबॉल. भाई कुंडे, वेल डन इन दैट मोमेंट. इज इट अपडे कमिंग? एक सेकंड, अपडे लग रहे हैं ना? pretty much sure it's update. So अब भाई update is coming. You all know. औसत सुना मैं लोन में अभी. तो update has come in. अब देखते हैं whether he can be that man. Again, जो भी देख रहा है, do not forget to like the stream यार. एक like target है. Let's reach the target. Talking about update, भाई Dembele is going off. कि भाई update पिच पर आ गया तो Dembele कैसे रह सकता है? यहाँ पर तो rivalry है for a certain club साथ साथ में. I don't know, ironically, लेकिन नहीं होनी चाहिए. But anyway, भाई एवरीवन, अगेन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द स्ट्रीम और शेयर करिए हो सके तो. अगेन मैंने ट्वीट किया है. इफ यू कैन रीट्वीट विद दिस लिंक, ब्रिलियंट.
मुआनी आए हैं, कोलो मुआनी हैज कम इन, फ्रैंकफर्ट के प्लेयर फॉर फ्रांस, एंड डेम्बेले इज गॉन। तो फ्रांस खेल रही है अभी विद प्रॉपर सेंट्रल कोर। अब इतना विंग प्ले नहीं देखने को मिलेगा शायद, लेकिन यू कैन नेवर से नेवर, राइट, विद एम्बापे, कैन यू? एक सेकेंड, मैं अपने आप को रिट्वीट करता हूँ, मेरे को, मैं करता हूँ अभी। भाई एक सेकेंड, एम्बापे का गोल आ रहा है लग रहा है, एम्बापे को गोल आ रहा है भाई, वेल प्लेड, गोल आ गया, अरे गोल भाई, एम्बापे क्रिएटेड इट, आई मस्ट से भाई, कोलो मुआनी स्कोरिंग फॉर फ्रांस, एज मच एज एम्बापे, सेम चीज हुआ वापस, सेम चीज, जो बंदे के पास बॉल है ना, उससे बेसिकली आप डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हो, बाकी जो रिबाउंड है, दे आर एंटिसिपेटिंग डिफेंडर्स, सेम चीज, रिबाउंड गया उसके लिए, पहला गोल जैसे गया था, द सेव रिबाउंड वेंट टू अ थियो हर्नांडिस, इस बार भी सेम चीज हुआ, द सेव रिबाउंड वेंट टू अ कोलोमिया मोआनी ऑन द अदर पोस्ट, कम ऑन ब्रो, मोरक्को, दे शुड हैव लर्न पहले वाले मोमेंट में, बट आई मस्ट से यार, इस मोमेंट में आई थिंक काफी अच्छा किए थे दोनों मिडफील्डर्स, एम्बापे से ही क्रिएट हुआ था, लेकिन एम्बापे क्रिएटेड, एंड देन तुराम बैक टू एम्बापे, एम्बापे ने अच्छा स्टेप ओवर किया, बीटिंग 3 men, एंड डिफ्लेक्शन गया टू मोनी, हु स्कोर्ड द फार पोस्ट, कोलो ओपी, ब्रिलियंट, नाइस नाइस, एंजॉय यार, Atletico City this season second leg. Good one. Imagine the scoreline remains same and Morocco scores in additional time. अभी तो नहीं हुआ यार, गोल हो गया। भाई ये फैन कौन है फ्रांस का, बार बार इसको ही दिखा रहे। या इट इज अर्जेंटीना फ्रांस, लुक्स लाइक इट इज। 10 मिनट है, अगेन 10 मिनट ही थे नेदरलैंड्स के पास। कैन मोरक्को डू समथिंग? भाई इनफ शॉट्स नहीं लिए मोरक्को ने, अभी क्या ही तो करेंगे, दे हैव टू स्कोर मैन, दे हैव टू स्कोर। एंडोम्बेले, बिकॉज आई थिंक ज्यादा एक्सपीरियंस है विद द नेशनल टीम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पुदिन, राबियो, हाँ, और अगेन गेंडोजी, यू कैन आर्ग्यू दैट he's had a good season as well, just like Ndombele. Ndombele is not a starter, is he, Napoli में? तो he plays a lot of games, लेकिन starter नहीं है naturally. Okay, interesting. No problem, Morocco well played, you won the hearts, will surely meet. Okay. अच्छा, मुंबई दर्शन कर रहे हैं ना आशीष? हाँ भाई, काफी सब्सक्राइबर्स है मुंबई में। It seems like God does not want Mbappe neither to score or assist at least before the final. The final is Messi versus Mbappe proper. Huh? By the way, Giroud भी score नहीं किए. I know Giroud fan talking here. But Griezmann, man, what a game he's had. I know Mbappe ने वो create किया वो वाला moment, but I think first goal Griezmann ने create किया था, really, right? Varane and Griezmann, you can say that. But हाँ, again, Mbappe, good play in that moment, सच में बोलो तो। Again, you have to give it to the coach यार, Didier Deschamps knows his stuff. मोनी आए, स्कोर कर दिए। You have to give it to Didier Deschamps कहीं ना कहीं, नहीं? पहला गोल है शायद उसका, फ्रांस का। अगेन पीपल डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द स्ट्रीम प्लीज, एंड अगर आप शेयर करो तो ब्रिलियंट है। मैंने वापस से ट्वीट मैं कर ही रहा था, तभी गोल मार दिया, लेकिन कोई नहीं, ट्वीट तो गया है, वी कैन रीट्वीट दैट विद दिस लिंक, इट विल बी ऑसम। अब तो यार फ्रांस डिफेंड करेगी, कैन फ्रांस कीप अ क्लीन शीट, वो बड़ा एक क्वेश्चन। ऑलरेडी करेंगे करेंगे अनमोलदीप, करेंगे हम टुवर्ड्स द एंड करेंगे, व्हेन वी रिव्यू दिस, विल स्लाइटली बिल्ड अप टू दैट। ऑफ कोर्स हम परसों भी आएंगे लाइव, कल हम लाइव आएंगे ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस पे, ठीक है? एवरीवन वाचिंग रिमेंबर, 100% तो इज नेवर 100% ब्रो, it just takes 2 more minutes. Any Real Madrid fans in the house? You must be knowing. No pun intended, लेकिन that's a fact. कर सकते हैं भाई, चेंजेस तो हो सकते हैं। I know Morocco is not Real Madrid, Morocco is not Netherlands. ओहो, व्हाट अ बैड पास! इसको बोलते हैं कैसे पास नहीं करते भाई मोरक्को। अपडेट तो काफी लेट आया, नॉट दैट ही वुड हैव चेंज एनीथिंग, बट जस्ट सेइंग,
देन मोरक्को डिडंट, आई थिंक बुफाल को जल्दी सब्स्टिट्यूट कर दिया मेरे ख्याल से, दे शुड हैव केप्ट बुफाल। जब तक बुफाल थे ना, दे हैड मोर पोजीशन, आई थॉट समवेयर डाउन द लाइन उनका जो प्रेस था काफी इफेक्टिव था। नॉट रियली ब्रो, नॉट रियली, इट्स नॉट ओवर टिल इट्स ओवर, बिल्कुल। Morocco reminds me of the Seinfeld episode where George, before losing the plot or making stupid comments, says, "That's it from me. Thank you very much." Okay, भाई, this is for all the Seinfeld, fans यहाँ पर. Thanks यार शेयर करने के लिए. I just hope Italy make it to next World Cup. Italy और Netherlands का रहा यार, they missed a lot of World Cups. Imagine what if वाला सीन हो जाता ना. लड़ाई हो गई, ये क्या हो गया यार, लड़ाई जबरदस्ती को हो रही है. अगेन याद करिए वो बाइसिकल किक द फर्स्ट हाफ यामिक का. आई नो जीरू बोलेंगे भाई मेरा भी था पोस्ट में, भूल मत. यामिक खुद ही लड़ाई कर रहे हैं यार, क्या हो गया. वरान के साथ लड़ाई, ओके इंटरेस्टिंग. हाँ यार देखा था आशीष, मैंने देखा था. आपका लास्ट कमेंट देखा था. अगेन पीपल, देयर ऑलवेज अ वे टू प्रायोरिटाइज योर कमेंट्स, आपको पता ही है. लेकिन मच लव टू आशीष, एब्सोल्युटली. इटली बी लाइक, इसकी गारंटी नहीं दे सकता. देखो यार उत्कर्ष, इज इजी टू से दैट द काइंड ऑफ पीपल दैट यू हैव एज मैनेजर्स आर नॉट, मतलब नेक्स्ट लेवल नहीं है इन टर्म्स ऑफ द मोमेंट्स. बट वही ना, इट इज ऑल्सो अबाउट लक ब्रो, समवेयर ऑन द लाइन इट्स ऑल्सो अबाउट लक. मुझे लगता है दैट सबकॉन्शियसली व्हेन यू नो दैट यू लूज अ कपल ऑफ पेनल्टी शूटआउट्स, इंग्लैंड का हमेशा से था कि यार ये भी हारना ही है, मतलब फैंस न्यू इट, कॉन्फिडेंस लेवल लो था. Confidence is a big thing in football, bro. Momentum, confidence. Whereas France did well early on in 90s, just when the golden generation was starting. So I think they took a lot more confidence from that. 2006 World Cup, maybe I remember people coming back, the stars. एक सेकंड, अच्छा लूपी हेडर है बट टू नो अवेल. जियेश गेटिंग द बॉल, जियेश ऑन द फार पोस्ट, हक दिया, हक दिया. हाँ लेकिन देखो यार, इट्स इजी टू से, यूसीएल की बात करते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इट्स नॉट इजी टू विन. जो जिडान का बात हुआ था इनिशियली स्ट्रीम में, आई स्टिल थिंक जिडान एंड यूसीएल इज वन ऑफ द रियली गुड मैन. ऑसम रिकॉर्ड है भाई यूसीएल में, यू हैव टू गिव इट टू द गाय. थ्री पीट, इट्स नॉट इजी, इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट. लाइक he's been part of that, as well. Ancelotti is a goat manager, I feel, because it's not easy to win your UCLs, bro, इतने सारे. तो you need a lot of luck, you need a lot of determination. It's a combination. और somewhere down the line is momentum. आप अगर initially successful team हो तो आपके team को it gives a lot more confidence. So when it comes to semifinals, finals, it's about that. England have been to a lot of quarterfinals. They lost a lot of penalty shootouts, याद रखिए. अगर इटली क्वालिफाई होता तो how far they would have come. राउंड ऑफ 16. मैं ज्यादा इटली स्ट्रांग नहीं समझता ये वाली टीम, दे आर नॉट टू स्ट्रांग. हाँ राउंड ऑफ 16 ही मैं देखता ऑनेस्टली. मैट बेस्ट क्वार्टर्स. हकीमी डूइंग वेल, बट क्या हुआ, हकीमी को ऑफसाइड दिया, अरे. देखते देखते नहीं, लेकिन सुपरस्टार्स विशाल, हाँ ये चीज बता सकते हैं कि फ्रांस में अभी तो खैर बहुत सारे सुपरस्टार्स है. पहले भी सुपरस्टार्स हुआ करते थे, लेकिन यस, अ लॉट ऑफ प्लेयर्स डिड नॉट प्ले अब्रॉड. So they had a lot of players playing in the French league as well, a lot of times. तो एक टीम स्पिरिट नेचुरल बनती थी वर्सेस इंग्लैंड, यू कैन से दैट, बट आई डोंट बाय दैट ऑनेस्टली. जीएस गोस्टेड इन बैक फाइव. हाँ यार बैक फोर में होते ही प्लेड वेल, एक्चुअली गुड ऑब्जर्वेशन डेरेन यार, बिल्कुल यू आर राइट. नाइस 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 टू सी यू डेरेन ऑलवेज. 98 फ्रांस और 2018 फ्रांस. मैं नॉस्टैल्जिक होकर 98 बोलना चाहूंगा, बिकॉज एज मच एज पीपल वुड से दैट या जिडान वाज ऑलरेडी इन हिज प्राइम, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ब्राजील टू विन दैट वर्ल्ड कप. 2018 वाज आई एक्सपेक्टिंग फ्रांस, थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशंस थे.
तो आई वुड गो विद 98. ब्राजील वाज टू स्ट्रांग 198. महासंग्राम होगा फाइनल में. वो ये अभी अभी तो लिटरली स्टॉपेज टाइम नहीं है. एक गोल मार दो भाई मोरक्को. सोशल मीडिया ऑल्सो समवेयर ऑन द लाइन. आजकल वो भी है इश्यू. योर ऑल टाइम फेवरेट जर्सी ऑफ क्लब एंड कंट्री. भाई माय ऑल टाइम फेवरेट जर्सी, आई थिंक आई एक्चुअली हैव इट. क्लब का आई नो, आयरॉनिकली इट्स नॉट चेल्सीज, विल यू बिलीव इट. इट इज एसी मिलान्स. जो काका का जर्सी है मेरे पास, आप लोगों ने देखा ही है बहुत बार. तो दैट इज वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट जर्सीज. एंड आई कैन इमेजिन काका, काफू एक्सेट्रा वेयरिंग दैट जर्सी ऑल द टाइम ब्रो. हाँ, लेकिन चेल्सी का आई रियली लाइक्ड. I have one jersey, white jersey. I think I've worn it once. I can show that as well. वो original है from Stamford Bridge, by the way. Yeah, yeah. My brother went to Stamford Bridge and got it for me. वो लंदन गया था, ठीक है. तो वो ओरिजिनली स्टैमफोर्ड ब्रिज से है. ओह, शॉट ऑन गोल ब्रो. तो वो भी अच्छा है. वाइट जर्सी है, आई थिंक 2006 का ऑल्टरनेट जर्सी है. एंड कंट्री के लिए आई थिंक इट हैज टू बी, मैंने बोला भी है काफी बार, 2008 का यूरोज का नेदरलैंड्स का जर्सी, दैट आई रियली लाइक्ड. एंड बट ऑन एक्चुअली यू विल बी सरप्राइज्ड, मुझे पेरू का जर्सी अच्छा लगता है बहुत. पेरू, पेरू का अच्छा लगता है, विच हैज अ मोनाको फ्लेवर टू इट. आई लाइक देयर जर्सी ओवर द इयर्स, यू वोंट बिलीव इट. पोर्चुगल का 2006 का वर्ल्ड कप, बैटल ऑफ नूरमबर्ग, आयरॉनिकली आई लव दैट जर्सी. आई लव दैट जर्सी पोर्चुगल का. ओके ओके भाई, 5 मिनट है. 6 मिनट, सॉरी, 6 मिनट of stoppage time, bro. I also feel Gaza's goal in Euro 96, the English team felt more pressure from the media. Southgate's miss against Germany, Wembley started their unfortunate run. Yes, yes, absolutely. वो ये इतने सारे जो मिसेस हो जाते हैं ना, मीडिया बैकलैश बहुत ज्यादा होता है इंग्लैंड का. तो जो मिसेस दे कम टू माइंड फर्स्ट, वेदर यू आर प्लेयर और अ फैन. तो सबकॉन्शियसली और लेस कॉन्फिडेंट. भाई मोरक्को किड क्राइंग ब्रो. डोंट क्राई, बी प्राउड ऑफ योर टीम. कम ऑन, सेमीफाइनल्स ऑफ वर्ल्ड कप. यार यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं इंडिया को एक वर्ल्ड कप मैच देखने. Imagine out of nowhere, Julian Alvarez wins Golden Boot. He has 4 goals. Huh? He can. He can get a brace. Why not? Indrani, why not? Talk about City fans, waiting for one player to do well, or he might be that guy. लेकिन again, it'll be interesting भाई. Mbappe आज she's not scored. अब देखते हैं what happens. Remember, I think next match के लिए Montiel, I think is available. Indranil, so it'll be interesting. Argentina will go a little bit defensive with Montiel or continue with Molina. Jack, why will you get hate? This is facts, bro. This is absolute facts. Again, for people who think that football is all about goals and assists, sorry, that's all I can say to them. Hazard wouldn't have been Hazard if Willian wouldn't have been the team. Mbappe, what acceleration, man! लेकिन Hakimi knows his game, bro. Come on. अभी लास्ट में भी Mbappe trying for the golden boot और goal. लेकिन हाँ, विलियन, मतलब between 2014-16, I think Jack, I've said it million times. He was my best player during that time. Morocco fans were too harsh against Portugal in CR7. अर्जेंटीना फ्रांस, यार थोड़ा सा मैं, बहुत डिफिकल्ट चॉइस है यार मेरे लिए वो. मेसी शुड विन, ही डिजर्व्स इट एब्सोल्युटली. एंड आई वांट अर्जेंटीना टू गेट ओवर द हुडू ऑफ फाइनल्स यार, रिसेंट टाइम में जो है. लेकिन साथ साथ में मैं चाहता हूँ फ्रांस नहीं भी जीते, तो दैट मीन्स अर्जेंटीना. लेकिन मुझे याद आता है भाई, जीरू का भी लास्ट चांस है. डिफिकल्ट है यार, काफी डिफिकल्ट है क्वेश्चन. उस दिन नेचुरली आप देख लेना मैं किसको सपोर्ट कर रहा हूँ बस ना. लेकिन मेरी टीम तो है नहीं खैर, तो ज्यादा न्यूट्रल ही हूँ. लेकिन एक होता है ना सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दैट डे. ओहो, व्हाट अ मोमेंट हो जाता है यार, स्कोर हो जाता है यहाँ पे. भाई मोरक्को फैंस क्राइंग ब्रो, व्हाई? बिल्कुल. आई एम सो शॉक्ड दैट ही हैज बीन इन टॉटनहम ब्रो. आई एम सो शॉक्ड. नॉट दैट ही इज लाइक ऑल टाइम बेस्ट गोलकीपर और समथिंग, लेकिन भाई
आई थिंक ही इज अंडररेटेड गोलकीपर मेरे लिए। या इंग्लिश मीडिया तो अलग ही है। हाँ, वही बहुत बहुत मुश्किल टेक है यार, ये बहुत मुश्किल टेक है। आई वुड हैव टू गो विद अर्जेंटीना ब्रो, सच में बोलो तो, बिकॉज़ फुटबॉल विल बिकम बोरिंग बोरिंग विद टू, एंड आई नो मेसी फैक्टर इज ऑलवेज देयर, ही डिजर्व्स इट एंड ऑल दैट एब्सोल्युटली, लेकिन मैं बोलता हूँ ओह व्हाट अ रन! ये क्या हो गया? भाई मोरक्को का क्या रन है? अभी भी गोल में गोल मत करना तू। अरे हाउ डिड मोरक्को नॉट स्कोर? भाई मोरक्को का ऑलमोस्ट गोल आ जाता, इमेजिन लास्ट 2 मिनट्स क्या होता भाई, कुंडे जस्ट अबाउट सेविंग फ्रांस एस। आई एम टेलिंग यू अर्जेंटीना बीट कर सकती है फ्रांस को। व्हाट वाज दैट अबाउट? हाउ डिड मोरक्को डिड नॉट स्कोर? हाउ डिड मोरक्को डिड नॉट स्कोर उस मोमेंट में? क्या हुआ इस मोमेंट में? वो ये जीरो फैन हूँ भाई, तो पता नहीं यार मैं क्या बोलूं, लेकिन वो ये फ्रांस मैं चाहता नहीं हूँ बैक टू बैक जीते, लेकिन इफ दे विन भाई, whoever wins deserves it. I don't think we can argue that, नहीं? हाँ यार कर्स व्हाट कर्स। हाँ, बाइसिकल किक ट्राई करते हुए। ओहो, मोरक्को ऐसे क्यों नहीं खेले यार पहले? बहुत ही लेट किया यार मोरक्को। कम ऑन। Theo and Zero to Ankit, भाई दोस्ती है या दुश्मन? Morocco, भाई what an ending. Imagine if that had been a goal in the last 2 minutes, would have been crazy. Fateh in the house, Fateh, भाई It was a better France game than last night, though. taking it. France take it, bro. Yeah, I think they're just so good. I'm a bit worried for Argentina right now, but yeah, okay. लेकिन अर्जेंटीना देखो, ऐसा नहीं कि मोरक्को ने चांसेस नहीं क्रिएट किए, जस्ट दैट मोरक्को डिड नॉट हैव दैट गाय टू फिनिश यार, नहीं? Especially the number nine. Like, how is he in the team? How is he? Who is he? I एननेसरी don't know. सेविया के लिए खेलता है भाई, एंड ही डज वेल फॉर सेविया, ही डज He डिसेंटली does वेल। well. हाँ, ही इज नॉट टू बैड इनफैक्ट, मैं तो बोलूंगा। Wow. ठीक है, वही है ना, ही काइंड ऑफ डिपेंड्स ऑन पीपल अराउंड हिम। ही इज नॉट अ नेचुरल नंबर 9 टू मी, लेकिन दे आर Bufal. I was shocked Buffalo's substitute so early. Yeah, I mean, I don't understand why because he was giving them a lot of problems. Amrabat again hasn't been his 100%. He gave the ball Yeah, away in I the think last minute. I can't believe it. the He big finished. problem, Ankit, for this World Cup is games have they've narrowed down the schedule because of the time, and I feel like no, you should not be doing that. You should give teams the time, the proper time to recover. Every team has had to play every third day, the group stages. I mean, you have to give But them the uh, proper. Fateh, that is where you get a squad. By the way, France are in the World Cup final, people. भाई फ्रांस जो हमने क्रोएशिया के बारे में बोला था कल, दैट दे कैन क्रिएट हिस्ट्री एंड बी ओनली द फोर्थ यूरोपियन टीम टू एक्चुअली गेट टू बैक वर्ल्ड कप फाइनल्स. France has done it. They have done one better and they've done it. And who would have known, yeah, that Kolo Muani, out of all the people coming and scoring that goal, created by I know Mbappe, you can argue. First goal again, Theo Hernandez and Kolo Muani getting the goals. भाई किसी ने predict किया था बोल बता दीजिए. But again, I think Griezmann, pretty sure भाई सब लोग का मैन ऑफ द मैच सबसे पहले बोलिए यार. For me, hands down it was Griezmann, bro. I don't know what about you, Fateh. I thought Yeah, where absolutely. I was they think lost Griezmann, the match, Morocco? totally Griezmann. Yeah, I mean he pulled the string so well. He's been so good this whole tournament. I mean, wow. Yeah, I don't know. Griezmann, I think he did a lot of defensive work, yeah, today. But Exactly. Fofana, you can argue that Fofana was able to even bomb on because of Griezmann doing defensive work. Imagine. मतलब वो ले रहा था Fofana का जगह, और Fofana was going on his runs, and because Mbappe का जो position था clear हो रहा था. But अगेन मैं इस रेटिंग से अग्री नहीं करता हूँ, बिग अप टू फुटमॉब यार, लेकिन मैं अग्री नहीं करता हूँ. Ziyech played a tremendous game, awesome game he played, Ziyech. The guy did not have enough support up front. That is all. I know यहाँ पे ओनाही को ज्यादा मिला है because I think they go by shots on target, goals, assists. I think उससे जाते हैं rating if I'm not wrong. लेकिन वही if you actually watch a match, Onahi actually arguably missed couple of chances. ठीक है, he should have done better. लेकिन unnecessary bro. Again, he came off early, and जो बाद में आया अबुक लाल, हमदल्ला, not they were almost not there. Let's be honest. Atiyat Allah did well after coming on. Yamik, भाई what if Yamik का जो bicycle kick था, अगर वो गोल होता, Oh the man, game would that have been chance, different, right? that would have been some. You were just asking me about, the best goals, and I mean, to score this when you're 1-0 down in a semi final, if it had gone in, wow. I mean,
That would have been one for the ages. But yeah, it's not to be. But it's been a great story. I think both Morocco and Croatia, they can take a lot of heart. And And विशाल ने कंफर्म भी किया, देखो ये सच है, एन3 वाज लास्ट सीजन इन no, टॉप 5 El टॉप स्कोरर्स ऑफ Nesri ला is लीगा. no, no, no. I'm not talking about El Nesri. I'm talking about Hamdallah. ओ हमदल्ला. एन3 भी भाई, दो द वन वेयर कोनाटे ने क्लियर किया, याद है? कोनाटे ने बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड परफॉर्मेंस है कोनाटे, डिस्पाइट प्लेइंग लेफ्ट सेंटर बैक. थियो हर्नांडेज और कोनाटे, कोनाटे बहुत अच्छा गेम था उनका भी, ऑफ कोर्स थियो गेटिंग द गोल, लेकिन कोनाटे ने जो क्लियर किया था ना, ब्रिलियंट क्रॉस Hmm. बाय बुफाल, Brilliant. Yeah, 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 yeah. जो Yeah. अर्ली सेकंड हाफ में था. आई Yeah, थिंक वो क्लियर, इट वाज अ क्लियर केस ऑफ एन नॉट बीइंग अ प्राइम स्ट्राइकर ब्रो. एज एन, आप सेमीफाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप खेल रहे हो फॉर योर कंट्री, यू आर ऑन योर हील्स इन दैट वेरी मोमेंट, एंड दैट्स शॉकिंग टू मी. मतलब the guy should have just dived with his head or leg or what not, with his knee. He could have saved. I think Konate, as much as he gets the credit, NSRE should get a lot of discredit उसके लिए. Kunde, Kunde missed, he made mistakes, Hmm. but Yeah. दो बार कुंडे ने बचाया फ्रांस's ass, and दो both those times it could have been a goal towards the end. So Kunde did well at that last moment. In fact, Ziyech has 2.8 rating. 8.2 हो गया यार, उल्टा पढ़ लिया होगा या उल्टा डाल दिया होगा उन्होंने. अनमोलदीप, Ziyech was fantastic bro. हम कौन सा मैच देख रहे थे दिन? No, I think they had a lot of success down that, especially in the early in the second half. Like Ziyech, Hakimi, and that other guy. They had broke the damn run of Jersey. Yeah, absolutely. So I think they had a lot of success down there, and I'm really, really amazed how every French game is just about that part of the pitch. Like Dembele, you don't even get to see Dembele. Like, what's going on? Like, why are other teams getting sucked into this? I mean, okay, नहीं, they आई थिंक आज नहीं दिखा डेम्बेले टूर्नामेंट में, फिर भी दिखा यार काफी. मतलब आज इट वाज ऑल अबाउट दिस लेफ्ट even फ्लैंक. आई against थिंक England, Ankit, even against England, we didn't see Dembele. Come on. and it was surprising. Why? Because second half में Atiatala had come on, and you had Mazraoui going off. So I was surprised कि they did not even target that. लेकिन it's just that the fact that they did not expect maybe second half में इतना मोरक्को आएंगे, पेल देंगे. Yeah, मतलब Morocco was मतलब literally bombarding balls bro in the second body. half, Yeah. But I first think they 20 just 25 minutes. it was just that lack of quality that yeah, Yeah, sad. But but anyway, people by France in the World Cup, by Morocco, Abhi are now the fact that Morocco are going out. I know the fans are crying. I think they have to be proud of themselves. I don't know, everyone. You tell me, भाई Morocco का जो achievement रहा है, where do you rate in the history of football? मैंने तो third बोला है after Leicester and after Greece. At least what I have seen in hmm. terms of as in one I that mean, you they're the don't expect. first African team that has gotten there. But you saw South Korea also, 2002, and हाँ, that was South also Korea and quite Turkey good. also to some extent you can say in Turkey, 2002. yeah, 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 yeah. हाँ, There's लेकिन always this one team, Ankit, because see, '94, our first World Cup, that was Sweden. Nobody, and Bulgaria. बल्गेरिया, हाँ, Yeah, that fair was, enough, fair Croatia enough. '98. Obviously, now everybody thinks Croatia. अनमोलदीप कंफर्म कर, जीएच इज 2.8. ऐसा क्या किया भाई जीएच ने? मतलब कुछ तो गड़बड़ किया जीएच ने ऑफलाइन. बट एनीवे, मेसी विनिंग वर्ल्ड कप एंड गोइंग टू पीएसजी reminds me of history, especially pre-crusade moves of Morocco invaded Iberian Peninsula only to be defeated by okay. Yeah, yeah, That's some history there, right there. Mbappe will create problems. Bhai, lekin Argentina and France, bro. The World Cup final that maybe many were waiting for. Of yeah, course, जैसे आज build-up हुआ था, it's going to be Mbappe was Hakimi, and we did see that battle a lot of times. At times Mbappe won, at times Hakimi won. But it's going to be, imagine a Messi and Mbappe build-up, yaar. मतलब two PSG lads. But for me, even last dance, as much as people build up, जो semi-final था, Croatia versus Argentina, people build up LM10 LM10. मैंने खुद build up किया था Modric का. But Giroud, somewhere down the line, I think the fact is he was substituted early on. How hmm. impressed are you with Marcus Thuram? I thought he was doing really well, Aj. And see, the thing is that Marcus Thuram is being linked with Inter, but then suddenly now news has been coming up that Bayern Munich are, probably going to hijack that deal because they might just spend on him in Jan. He's a free agent in the summer. So Oh, yeah, okay. he was very good. Yeah, he was very good, and I think we played against him in the Champions League last contest second season. So we've already Mhm. seen. So yeah, I think he's a very good player. He got very seriously injured, Ankit.
He was out for a very long time, I think ACL or something. So he's got the pace even now. So that's very good. या मार्कस तुराम लेकिन डू यू सी एनी टैक्टिकल चेंजेस आज जैसे फ्रांस दे प्लेड कोनाटे एंड कोनाटे डिड ब्रिलियंटली must be Brilliant, said. yeah, brilliantly. So do you see Konate because Argentina Messi factor you have to take into account. You cannot go without Yeah, that. yeah, तो yeah, you I know can't हम deny बात it. करेंगे परसों वापस लेकिन क्या लगता है मतलब what is your gut feel about France's tactics for that big final? See, I think it serves France to be sitting back to let Argentina have the ball, but I think the Argentinians are going to do exactly the same as well. They will not probably want to have. Absolutely, I think Di Maria playing, but I don't think Scaloni will. I don't think he's going to change I don't anything. Argentina, why will they change? And also because Di Maria did carry an injury into this tournament, so maybe as an impact sub later on. हाँ, impact. Hmm. Interestingly, he never even came on yesterday. It is an Yeah, interesting yeah, point to note. So I think somewhere down the line, I think he's not fit. I think pretty much not fit sure out. chance in. So he'll be an impact player if need be. But if they need width, that is right. Otherwise, I think they'll just go with the usual. In fact, I can see Argentina going with two banks of four. तो Yeah, टू जो exactly. गए थे कल तो टू आई जो कल थिंक गए थे. एक थॉट हो सकता है क्योंकि फ्रांस के पास इतना विट है टॉकिंग अबाउट डेम्बेले थियो हर्नांडस ऑफ कोर्स and of course Mbappe. So they might actually, play five at the back, Argentina, Yeah. but I think doesn't make sense. Tagliafico did brilliantly, and I think he वो handle कर सकता है Dembele को. That's just my personal opinion. But yeah, look at the France team, यार. मतलब exulting with joy by back-to-back World Cup finals. By for many of them, I think about 6 or 7 people are there, if I'm not wrong, from that squad. So that's brilliant, bro. Again, Griezmann, Yeah, Giroud, Varane, Griezmann, Mbappe. Mbappe, Giroud, Yeah. Rabiot. Rabiot, Rabiot, I'm not sure, but Loris was there, of course. Torres, yeah. Uh, then who else was there? I'm pretty sure यहाँ पे और The भी शायद other मिस कर रहा हूँ but Hernandez. anyway the 5.9 बढ़ा दिया हाँ हमारा थैंक्स मोलदीप ने शेयर किया मे बी दे हर्ड अस आई डोंट नो और वो कैसे हेयर करेंगे भाई सब लोग जो भी आए लाइक कर दीजिए स्ट्रीम को एक सिंपल सा टारगेट है डेफिनेटली मींस अ लॉट इफ यू कैन जस्ट लाइक द स्ट्रीम फ्रांस क्या हाइट एडवांटेज लेगा फाइनल्स में बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कल मैं फतेह मैंने बताया भी था जब मैं लाइव था why didn't Croatia do what Netherlands did? They had in Petkovic and they had in Yeah, Perisic. yeah, yeah, Why yeah, didn't yeah. they do that? Exactly. I was I so think they shocked. just They gave up. that second goal just completely, I think, collapsed the all the tactics that they Huh, could but have. there's nothing to lose now at that point. You are going out anyway. They didn't, and I think it was also a weird substitution where they took off Brozovic and lost that edge in midfield because but they said there was नहीं some मुझे injury. मुझे क्या लगा फतेह द मोमेंट दे टुक ऑफ ब्रोजोविच मैं मुझे लगा 4-4-2 जा रहे हैं दे आर जस्ट गोइंग bombarding that Yeah, yeah, yeah. That's Petkovic what I and also thought. but they did He, not. but they did not. Yeah, it was very weird. But Very weird. I think this is a good point because height advantage you can say. But at the same time, Lord Voldemort ke header, nice name by the way. Uh, Giroud though definitely is there, part of it. A problem with Giroud is that he in the last 3 games he has been subbed off around 70th minute or before. So I'm not sure if it goes to extra time if they can go that way. Remember, this is something that they can usually teams go for is the plan B. Yeah, ठीक है तो with Giroud not being there in the 75th minute के आगे quite possible I can see that substitution coming in. मैं यहाँ पर yeah. बोलना चाहूंगा stick out my neck and say फतेह if the Hmm. game goes deep unlike popular opinion I think Argentina का game है अगर Yeah, if the yeah. game goes deep. Put it down, Lautaro Martinez, 116th minute winner. Oh, people, Lautaro Martinez, दो important moments भाई the penalty against Netherlands and this one that is what Yeah, you would say. Let's see मैं again लेकिन मैं मुझे अभी भी बोल रहा हूँ favorites have to be France bro. The fact yeah, that they I are think World so. Cup I think champs. they're a very complete team. Like we are. If you try and find holes, where are the holes? And yeah, man. I mean, in all finals, France. They have been in all finals, major finals from Euro 2016, France that is, except for They Euro won. 2020. Acha, Euro 2020. Yeah, वहां पर भी 2016. स्विट्जरलैंड ने उनको सरप्राइज कर दिया था याद है तो आपको वो Yeah, नो yeah, yeah. But that बिल्कुल stat that they've since we've grown up, Ankit, that they've been in 5 finals. I mean, wow. I'm in two I'm both the sides मैं एक सेकंड पर बोल रहा हूँ कि नहीं भाई फ्रांस को डोमिनेशन नहीं कराना है आई डोंट वांट देम टू विन and definitely Messi deserves it and all that.
But at the Four. same time याद आता है जीरू के लिए भी लास्ट चांस है भाई कहीं ना कहीं. Four World Cup finals, not five. 98, 2006, 18 and 22. हाँ बट वॉट एवर द फैक्ट इज 3 वर्ल्ड कप जीत जाएगी अगर जीते ना. हमारे होते हुए That'll be crazy, bro. too much, too France, much. such a small Yeah, country. हम इंडिया कहाँ है भाई? Just think about it. Loris might win second World Cup, not yours. Again, यार, I think Fateh has heard a lot of times from me. भाई, Loris, मतलब will you. people finally rate him a little bit at least I think after yeah, him winning? because I see he's done nothing wrong this World Cup. He's been very solid this World Cup. But then so much of that is the defense that they have. I mean, they just you know, and I mean, it could all have been different if Harry Kane was not such a bottler and not such a Spursy player. But then he said Loris is a Spurs player, so I'm just kidding, man. I like Conte a But lot. वहां So पे वो exactly the Loris himself is exactly so. But exactly, like anyway, that's what I'm saying. पुदिन बोल रहे लिचा शुड स्टार्ट. आई डोंट थिंक सो दैट लिचा स्टार्ट करेगा. हाँ, मैं लास्ट मैच में फतेह गया था दैट Hmm. yesterday against Croatia I would have seen Licha Yeah, Lisandro Martinez yeah, starting at left back, yeah. which he has done at times in the past. He has done for few minutes at least. लेकिन So, Tagliafico had a brilliant game. I think he yeah. he went under the radar and he played brilliantly yesterday. Again, it depends on basically how he can tackle and Dembele, how it goes in the game. लेकिन start तो शायद ही करेगा. अगर back five जाते हैं ना Putin, only then I can see Lisandro Martinez starting, which I anyway don't see going because I think McAllister and Enzo Fernandez have done brilliantly in midfield. De Yeah, Paul, yeah, by yeah. he has to be there. In the final. नहीं? Copa America final में he was the guy who actually got the assist. Remember? This is De Paul. and Paredes is now at Juve, right? Yeah, Paredes. He actually has a PSG. job. Uh, So, लेकिन it's between Paredes and Di Maria more than Lisandro Martinez. What the way I see it. Di Maria अगर fit है 100%, नहीं which नहीं I doubt, you don't want only to then. put Di तो Maria Paredes as ही a खेलेगा ना. hmm. हाँ. I think the whole Dembele, age. Loris, Varane, Mbappe, Giroud, Griezmann from last World Cup winning team. Thanks Vishal for sharing that. Yeah, actually 1, 2, 3, 4, 5, 6 people. चलो तो and arguably भी नहीं यार everyone is starting right. हाँ, everyone is starting for France. Yeah, That is a big deal. Again याद रखिए लास्ट वर्ल्ड कप 2018 में क्या हुआ था क्वार्टर फाइनल्स में. द गेम ऑफ द टूर्नामेंट आर्ग्यूबली अपार्ट फ्रॉम round of जापान बेल्जियम 16. आई वुड से. नहीं, Round of 16. Last दैट World वाज Cup, round of क्रेजी. 16. Ankit, not quarterfinals. हाँ, राउंड ऑफ 16 इट्स 2:40 इन द मॉर्निंग तो होता है. बट Hmm. हैविंग सेड दैट वाज इट नॉट पवार्ड who scored that goal? Pavard who scored that goal. Yeah, तो that पवार्ड game was. पवार्ड ऑन द बेंच हियर. प्रीटी मच श्योर कुछ भाई फ्रांस को चेंज क्या करना है. ओनली थिंग इज आई थिंक midfield Fofana goes off if Rabiot is Rabiot fit. comes on if Rabiot is fit. Yeah, but Konate stays. hmm. Upamecano का क्या हो गया? What are those injuries? I don't know their injuries. Upamecano was on the bench actually, the way I see it. लेकिन it might be minor, it might not be major. और Konate it was the other way around rather. Konate actually tournament शुरू किया था. And there have been reports saying that he wasn't fit and that is why Upamecano played. So he Hmm. just came back. But I think it might have been a little bit of both. No Dybala will become Mario Götze goal. Okay, so Dybala आकर मारेंगे Mario Götze वाला It's difficult for me to extra see time. Dybala even getting a chance, but yeah, if he does, then yeah, why not? Lautaro Martinez काकू का भूत. Have you seen Argentina versus Croatia? हाँ, ये क्या क्वेश्चन है? Of course. Loris will have to channelize his Spurs skills. Let's go France. भाई सब लोग ये बोले सब कौन कौन फ्रांस को सपोर्ट कर रहा है ये बता दीजिए. आई नो अर्जेंटीना फैंस तो काफी है मुझे दिख रहे हैं. मैं यहाँ पर स्प्लिट हूँ थोड़ा. आई एम रियली स्प्लिट. आप देख लेना ऑन द डे क्योंकि मेरी टीम है नहीं यार. आई विल स्पीक ऑन द डे जो फील है. लेकिन ऑनेस्टली मेसी डिजर्व्स इट. एट द सेम टाइम मैं Yeah, बताऊँ no, यार I'm जीरो को on team लास्ट वर्ल्ड कप Argentina. में जिताए थे फिर भी क्रेडिट नहीं मिला Yeah. था. तो इस बार क्रेडिट के साथ जिताओ यार. मैं तो नहीं बोलता हूँ. नहीं नहीं. हाँ यार वो होता है वो था. इट्स बैंटर. It's okay. Sometimes as long as it doesn't cross the line. In 1986 World Cup, Morocco lost to Germany, and Argentina beat Germany in the final. I hope that Messi gets it, because Mbappe has a lot of time on his hand to get, but Yeah, and the fact that Messi has never, but जैसे वो also, अर्जेंटाइन रिपोर्टर ने बोला ना, whether Messi loses or doesn't lose, Messi, I think he's proved enough in this World Cup. Just like Zidane had proved enough in 2006 for me.
No, 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 no. You have to नहीं? win it. No, I mean he's proved enough, but then still, I think हाँ. we need him to win. I think our generation like plus France winning two back-to-back World Cups and they have so much talent coming in. That does not bode well, man. Like Ankit will get bored. भाई सब लोग जो देख रहे हैं भैया वी आर सीइंग करीबन 55 लोग देख रहे हैं आई होप एवरीवन इज सब्सक्राइब टू द चैनल यार जस्ट टेक्स अ प्रेस ऑफ अ बटन एंड अगेन शाउट आउट देयर ऑफ स्पोर्टिकोस को बिकॉज दे आर पावरिंग अ स्ट्रीम एज वेल एज दे आर वेबसाइट टू चेक आउट और वो मौका दे रहे हैं हमें with a little investment to get up to two jerseys, one a very rare आपके training jersey of your club or a country at the same time a jersey uh, plus something else to play with, so it'll be brilliant. Do check it out, link in the description. पहला ही लाइन है. Loris 1-0. Yes, Neeraj against Spurs. You think Neymar will play another World Cup? He's too young to retire soon. Yeah, yeah, absolutely. I लेकिन think so. इंजरी प्रोन है बंदा ना थोड़ा सा और he started very early, remember, people Very who early. start very Yeah. early. Did he play the 2010 World Cup? No. I don't know about World Cup, but as a player, man, he's been there from his teenage days as a sensation. Neymar was that, right? Santos. Santos, yeah. हाँ, तो मैं तो बस आई एम थोड़ा बहुत चलो I don't think फुट he was मॉब there यहाँ 2010. पे स्पॉन्सर नहीं कर रहे फिर भी उनको मिल रहा है अनमोलदीप से. थैंक्स अनमोलदीप. आई टेक थैंक्स इन देयर बिहाफ. इट्स ऑल हैरी केन्स फॉल्ट. ओ माय गॉड बेचारा. ऊपर मैंने कहा फीवर टुडे. ओके, नथिंग सीरियस. देयर इज वेदर चेंज इन कतार सो प्लेयर्स गेटिंग इल. Chalo, I thought he got cold because cold is contagious and I have a cold. Don't Yeah, I misunderstand people. know. Is Benzema available? भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं अफवाह है यार that Benzema will be back for final. ये कहाँ से No, that आते हैं will न्यूज happen. कहाँ से आते हैं ये होते ये है कौन ये लोग यार. ओ अरशद वारसी वाला कमेंट याद आ गया भाई. Honestly, even if he say hypothetically, I don't think it's allowed. Firstly, secondly, अगर allowed भी हो आए भी तो is there a point about Giroud being dropped as from starting 11 as well as Benzema is better than him? No, No, right? no. No, 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 no. That can't happen. I think that's why even think about it, man. It's not going to happen. Exactly, man. And Giroud has been beautiful. He hit the post. Remember that could have been 2-0 Oh, and game and over. it And was we were just a normal एक ball in no space yeah, था. He created something out of exactly. I nothing, right? mean, yeah. So that point about how Argentina are going to counter not just Griezmann and Mbappe but also Giroud. Oh my God, I'm scared. I'm Inkara scared. Masih, no Netherlands, no party now. फील टू फ्रांस के लिए है अंकित भाई. ओके, फील तो फ्रांस के लिए. तो भाई फ्रांस फ्रांस के लिए आ रहे हैं कुछ कुछ वोट्स. बेंजेमा मिसिंग 2 वर्ल्ड कप्स. या इट्स सैड बट दैट्स हाउ इट गोस समटाइम्स यार. इट्स जस्ट डेस्टिनी बोल दो या कुछ भी बोल दो. बट हाँ, आई एक्चुअली बिलीव इन दिस. आई एक्चुअली बिलीव इन पिज्जा अगेन. भाई बाइसिकल किक दिखा रहे हैं भाई. वो Yeah, अगर that's वो what I was जाता ना saying. यामिक का. This game would have been something if Morocco had. But again, we discussed this that the one thing they did not need is the early goal to concede. Like don't go in, and that just I don't know how Morocco started. I think there were too many unfit players, and they took off Sayes. I think that was a bit Yeah, but then I think that formation was more because of players' injury yeah. rather than the tactics alone. Yeah, Vishal Bora, you know that what will be the best scenario for Mbappe to lift second World Cup? Will lifting 25th edition of it, and that it'll be more iconic for him. Okay, You mentioned somebody mentioned Neymar, Ankit, but how old is Griezmann? I mean, without Griezmann, do you think this France is as good? Who comes in and replaces Griezmann if he's yeah, not there? Griezmann is only 31. Yeah, huh, very good point. Yeah. Griezmann is 31, so you Yeah. never know. But the way Griezmann plays, I don't think he relies on pace anyway. So I think Griezmann might just play till 35. I have a feeling. और वो बहुत ही But crucial है for this France unit. yeah, but his impact, his age, we don't know. So let's see. करेक्ट डिपेंड्स. लेकिन हाँ, ग्रीजमैन जिरू भाई दोनों ही पोटेंशियली लास्ट वर्ल्ड कप्स. जिरस्टीशान मैंने देखा था क्योंकि ऑफ टॉपिक था, मैंने नहीं लिया था इतना देर तक. बिग अप आपको एब्सोल्युटली. अभी ले लेते इतना इतना देर से आप हो. आप करीबन 2:45 बजे आप फिर भी बने हो. अगेन थैंक्स फॉर बीइंग हियर यार ब्रो. इफ जेरार्ड Not a टेक्स ओवर द थ्री लायंस देन 2026 वर्ल्ड कप इज कमिंग होम. मैं तो बोलता हूँ नहीं. नो, सॉरी ब्रो. जिशान, आई नो यूर अ लिवरपूल फैन बट but ऑनेस्टली it's too early, bro. Come on, but he was very successful at Glasgow Rangers. He is bro. Come somebody on. who can. Scottish League and World Cup, if you're talking. But then how is Scaloni? Like Lionel Scaloni had no हाँ, लेकिन स्कलोनी ने as I mercy. did not rate him as much 18 months down the line. कोपा अमेरिका और फिनिसिमा का परफॉर्मेंस देखा मैंने in terms of major moments.
Then I'm like, okay. So what I'm trying to say is, he could get there, lekin risk is far higher compared to someone who's a little bit more proven at some level. Yeah, I think with England you get a lot more. Say, or Gerard being Gerard will get a lot of pressure, bro. I don't think that's needed. Mm, Unnecessary. Already England manager has so much pressure. Imagine Gerard being Gerard, and mm, plus थोड़ा सा दो रिजल्ट नहीं आएंगे. The fact is, come on, वो नौसिखा मेरा मैनेजर है. एस्टन विला नहीं संभाल सका, यहाँ इंग्लैंड mm, बना दिए. तो I don't agree with this, Jishan. Uh, Again, Lampard, Gerrard both will do well eventually. I feel that, but it's early for them. That's what I meant. I hope you don't get it wrong. Almighty Blue will be supporting France as they are blue. David Sharma is a France fan, I think so. French coach already said no. No for what? Benzema. Hmm, Benzema. Okay. I think if game goes deep, France will have advantage as their players. I actually feel the other way around. Lotaro Martinez, आप rule out कर रहे हो. Dybala, he can be your X factor all of a sudden. You never know, bro. Coman has not had any minutes. बहुत surprising नहीं लेकिन. Coman, I know he wasn't Woman, 100% fit. Moani yeah, has I had think, more minutes than Coman in this yeah, tournament. yeah. बहुत Maybe he's not surprising fit. लगा मुझे. Yeah. Kamavinga again not being used enough. Turam has had too many minutes, but I think Neeraj, मैं तो आर्ग्यू करना चाहूंगा बिकॉज ऑफ फ्रांस इंजरीज ना. आई थिंक बेंच इज इक्वली स्ट्रांग यार दोनों का. पता नहीं क्या बोलोगे फतेह. I mean, we can't predict, you know. I think even if you have pace, I think Argentina's defense will be much better than what Morocco did, you know. Like, I think we always saw that lack in quality. And I don't think Argentina will be that attacking. They'll be very physical. Today, Morocco was very physical with the French. And I think the Argentinians will be even more physical. So, and look, pace or no pace, I mean, even the Dutch did bring on a lot of players, but the Argentinians, you know, they managed to survive that from coming the psychological impact of, you know, being 2-0 up, then it's 2-2 with the last kick, but they still survived and they won the penalty. So I think they're up for it. It's not going to be, you know, भाई चिन्मय, टॉक अबाउट इंग्लैंड. और अब जीशान आप सुन रहे हो यार, इज एन इंग्लैंड फैन एज वेल. चिन्मय कैसे हो भाई? नाइस टू सी यू ऑलवेज ब्रो. बिग अप. Southgate to stay on. Deschamps doesn't play so much of attractive football. Have a look at the possession in the important games for proof. Just need one result here or there to ensure a trophy. In fact, I think Deschamps is brilliant tactically, you can argue, because of the fact that he knows exactly when to kind of press and when to not press. जो हम बोलते थे एंचेलोटी का over the years. Remember, Ancelotti had that thing in him. His teams were never that pressing वाला system, लेकिन they chose when to press. I think yeah. Deschamps in a strange way बहुत similar है. बट Hmm. या अगेन आई नो फतेह आपको जाना है भाई. फतेह जाते जाते आप बता दीजिए. मैं तो कुछ और कमेंट लूंगा एंड देन आई जस्ट एंड द स्ट्रीम एट 3. लेकिन फतेह, एक होता है गट फील, एक होता है दैट टैक्टिकली हम जो फुटबॉल देखे उसके बारे में आप बता रहे हो. दोनों दोनों के हिसाब से बोलो. फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑफ कोर्स, फाइनल फ्यू वर्ड्स फॉर मोरक्को, बट या डू गिव योर प्रेडिक्शन, अर्ली प्रेडिक्शन फॉर द फाइनल ब्रो. My early prediction, I think, is gut feeling is Argentina will lift it, but they lift it in extra time. It'll be a very cagey game. You know, I don't think, I think both the teams will really respect each other. It will not be like the round of 16 game, very few goals. And yeah, some sort of Messi magic to Lautaro Martinez is how it ends. And for Morocco, yeah, I think, you know, I think the scheduling really trouble them. You need more rest, you need more recovery. They probably didn't have that greater squad, and yeah, I think well done. And they've got that one extra game against Croatia, so go all out for that and win. You know that get that third, the medal, whatever bronze. ओके, Yeah, ओके. लेट्स सी. हाँ, बाय द वे थर्ड प्लेस टीम भी है, हम वो भी कवर करेंगे भाई. लेट मी जस्ट चेक इट. कब है ये थर्ड वाला थर्ड प्लेस टीम? आई थिंक Saturday I think या सो प्रॉब्ली वन Friday or Saturday. पहले वो है एंड देन लेट्स सी. बट एनीवे, ग्रेट टू हैव फतेह यार. फतेह, थैंक्स फॉर कमिंग ऑन. आई नो काफी लेट है, Man, 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 लेकिन ऑलवेज गुड टू सी यू यार. एंड होपफुली man, हम मिले man, man. फॉर दिस थर्ड प्लेस Absolutely. टीम And मैच Chinmay एज is वेल. right. Messi is going to run riot. Let's go. या All right, देखते हैं guys. who gives the better of whom. चलो Yeah. फतेह, All होप ये right. हो जाए everyone in the chat. I'll just take a few more comments and I'll end the stream as well, bro. But I'm here for final few minutes. Yes, Chinmay, absolutely, we hear you. मतलब again, honestly, people would want one of the goats to kind of win it, but again, at the same time, there's an argument कि यार एक जीतेगा तो भाई you start another debate again, which is unnecessary. But it doesn't matter. It doesn't matter. Goat is a goat for a reason for me, and both of them have been goats. But if Messi wins it, pretty sure यहाँ पर, you know, people in football would love to see that, honestly. लेकिन मैं as a
मिलान फैन एज अ चेल्सी फैन भाई, कहीं ना कहीं जिरू का भी मुझे लगता है दैट इट माइट बी लास्ट गेम एज एक्चुअली अ फ्रेंच प्लेयर, आई फील दैट, अगेन आई माइट बी रॉन्ग, लेट्स सी. 2-1 Argentina, 2-0 Argentina. One of our centre back will come with World Cup, Licha or Varane. Ah, that's interesting to know. बिल्कुल फतेह ओपी. 4-3 Argentina, the reverse of 20. Uh, हाँ, कल कल आई थिंक एवरीडे लाइफ ने शेयर किया था. आई डोंट नो इफ एवरीडे लाइफ इज इन स्ट्रीम, बट आई गॉट अ कमेंट. If I'm not wrong, was it Portugal Uruguay? Then it was Portugal Morocco, and it was Croatia and Argentina. तीनों का रिवर्स हुआ है, जो 2018 में हुआ था ना, इस बार रिवर्स हुआ है. तो कहीं ना कहीं दैट माइट हैपन. बट अगेन आई नो चेल्सी वाला जो था वो तो खत्म हो गया है. जीएश इज नॉट विनिंग द वर्ल्ड कप एज मच एज चेल्सी फैंस वुड वांटेड, मोरक्को फैंस वुड वांट इट. Messi deserves the trophy more than anyone. हाँ, मतलब usually I don't say this, but the fact is that it is a fact. Usually I don't believe in this statement, but with Messi, I think the fact is that कहीं ना कहीं he will feel something missing. But honestly, even if he doesn't win, यार Messi fans, Argentine fans, मैं आपको बोल रहा हूँ, worst case, even if he doesn't win, I don't think it's the end of the world. I think he's done enough for me. He has to be in the top 3-4 goats anyway of the world of all time. ठीक है. जीरो वन अ वर्ल्ड कप एग्जैक्टली, लेकिन मेसी यार, मेरा आर्गुमेंट ये रहा है ना, जीरो वन अ वर्ल्ड कप बट ही नेवर गेट्स द क्रेडिट फॉर दैट. जीरो इज स्टिल आर्गुएबली द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर इन फुटबॉल फॉर हिज लेवल. भाई बंदे ने फ्रांस का ऑल टाइम गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड ब्रेक किया है. बंदे ने इस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा किया है. बीइंग एट, आप बोलते हो ना मेसी एट 36 व्हिच इज ब्रिलियंट. आई नो मेसी इज मेसी, नो वन कैन बी मेसी. इट्स अ डिफरेंट प्लेयर वी आर टॉकिंग अबाउट. लेकिन जीरू को क्यों नहीं मिलता है उतना ही प्रेज? आई एम जस्ट वंडरिंग ऑल द टाइम. तो दैट इज समथिंग दैट आई से. I know different player, not that skill इतना नहीं है, but he is actually very skillful than what people think. और प्लस मैं मिलान और चेल्सी फैन हूँ यार, थोड़ा सा तो होगा यार. यू वांट योर प्लेयर्स टू विन एंड दैट सिंपल एज दैट. तो बट हाँ, मेसी इज अ गोट एंड ही डिजर्व्स इट. मैं एक्चुअली अग्री किया, तो आई डोंट नो व्हाई दैट कमेंट इज कमिंग. बट एनीवे, फ्रांस 3 अर्जेंटीना 1 प्रेडिक्ट कर रहे हैं. दिस इज अ प्रेडिक्शन फ्रॉम मुदित. Imagine Messi winning the cup and then playing on Park de Princes. I feel it'll be close and high scoring. PSG and United players getting the World Cup. And guess what? Messi scoring all 4 goals. Wow. भाई 5 चाहिए to I think equal closer. If Deschamps wins it, if Deschamps win it, then why would they replace him with Zidane? नहीं, it's almost like if Messi wins the World Cup, I don't think he needs to continue anyway. At least national team के साथ में. तो that is like हो गया भाई, the last dance. He's achieved that everything. It's almost like with Deschamps, 2 back-to-back World Cup जीत जाएगा. Imagine that. I think it's done for Deschamps. Yeah, come on. Is Giroud better than Suarez? No, he isn't. But what's your point? What's your point, bro? आप कंपैरिजन में क्यों उतर आते हो भाई? मेसी मेसी डबल गोट, मैं आपको रेस्पेक्ट कर रहा हूँ. Why are you coming down to comparisons? Did I say Giroud is better than Suarez? Why is that question coming? Did Suarez win a World Cup, and did Suarez, as in do this in this World Cup to be where Giroud is? No. But does Giroud get that level of praise from people? Be honest as a neutral. Okay, that is my point. I don't know this question why it's coming and why I'm taking this in question. I don't know why. Don't piss me off, bro, at 3 a.m. in the morning. But much love to you for coming on and staying till 3 a.m. It means a lot, but that doesn't mean I've aakar, question karoge for something which I have not even compared. And if you followed the channel for the last 1.5 years, you'll know that I'm as neutral as fair as anyone is, honestly speaking. Winning two World Cup isn't bad for go-karting racer, isn't it, Benzi? Oh my god. 1-1 and then penalty shootout decider. Wow, that's going to be heartbreak. Heartbreak, यार. वो मैं चाहता नहीं हूँ, honestly. Let's see. It might happen though. It'll be close. Close to definitely रहेगा. Again, I'm saying it. अगर deep जाता है, जितना deep जाता है, I think it is better for Argentina. That's what I feel. Comparison तो आप cringe वही यार, बिल्कुल. No comparison there. Suarez or Giroud is pressing for exactly. And I think यहाँ पर हम national team का बोल रहे हैं in World Cups. So I think this is a different level altogether. Again, मैं सिर्फ generally बोल रहा हूँ that I don't think I didn't even bring Suarez in the picture. I don't know why you brought it here, bro. I have no idea. Giroud, does he get the credit what Giroud is? Am I comparing with anyone? No, he doesn't get. Honestly, doesn't get the credit what he deserves. Simple as that. That was the point. Anyway,
That's a different point. If Messi wins it, I don't know how I'll react. Tears coming, surely. हाँ वही है. It depends on the moment, bro, when it happens. गोल्डन बूट यार चारों के बीच में है चिन्मय. चारों के बीच में. एम्बापे हैज 5, मेसी हैज 5, अल्वारेज हैज 4, जिरू हैज 4. तो चारों के बीच में है. अगर दो गोल मारते हैं अल्वारेज या जिरू, brace, if they get a brace, which is quite possible, why not? A brace is quite possible. If Zidane can score a brace, why not, them, you would argue that, nahi? But then I would say that why not, as in bring it on. Lekin if Messi gets a goal and if Mbappe gets a goal, if I'm not wrong, Messi wins the golden boot. Not that he cares anyway, वो तो world cup चाह रहा है, we all know that. If game goes deep, we won't be left with nails. भाई अगेन मैं तो चाहता हूँ एक क्लोज गेम हो. आज भी एंडिंग मोरक्को ने किया कुछ बवाल, लेकिन आई थिंक इट वाज टू लेट, लेट्स बी ऑनेस्ट. लेट्स सी इफ आई हैव सम स्टार्ट क्वेश्चंस फ्रॉम बिफोर जो अभी ले सकता हूँ. हाँ ये वाला. भाई पार्थ बच गए आप. पार्थ ने बोला था आज लगी बेट अगर फ्रांस हारी तो आई विल शेव माय बियर्ड मुस्टैच एंड आईब्रोज. चलो नहीं हारी फ्रांस आज तो, दैट इज हाउ इट इज. बट ब्रिलियंट टू नो दैट. And let's see, bro, I was 12 in 2014 and cried a lot. After 8 years this Sunday, I want to cry again, but with the tears of happiness, please. Yeah, I can understand why. Are Anurag, yaar, much love to you for just being supportive of the channel. It means a lot. Finalissima, Copa America, World Cup, next Messi. Wow. You know what? It's written in the stars. As Zlatan ne bola hai famously, it is written there. It is written for Messi to win it. Again, मैं बोल रहा हूँ France winning it I don't want, honestly. The reason being is because भाई दो बैक टू बैक वर्ल्ड कप्स, 3 वर्ल्ड कप जहां जब से मैंने शुरू किया था वर्ल्ड कप देखना, watching all the games, I feel that it's a bit too much of a dominance. uh, don't want the occasional Messi penalty. हाँ अगर Messi जीतता है and gets a proper nice goal of the century type of goal, that will be the ideal moment for Argentina fans. Like, honestly, Messi won't care, bro. Chinmay, Messi won't care whether it's penalty, whether he scores, does not score. जैसे कोपा में हुआ था, he will not care who gets the goal. It's about Argentina winning. Same thing I think France would say. As much as Mbappe wants to score the goal, we all know that. But I think World Cup takes precedence any day. If Messi wins the World Cup, हाँ भाई ये हेटर्स अब हेटर नहीं रहे यार, जहां तक मैं समझता हूँ. इट शुड बी हाई स्कोरिंग फाइनल. हाई स्कोरिंग तो शायद नहीं होगा यार, आई डाउट इट. अर्जेंटीना डिफेंसिवली अच्छी है, मिडफील्ड बैटल रहेगा. यस, एज मच एज फ्रांस डिफेंसिवली अच्छी नहीं है, आज दिखाया यार बेटर डिफेंस. तो आई डोंट सी इट हाई स्कोरिंग फाइनल. आई कैन सी मल्टीपल गोल्स इन दैट, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम जोड़कर मैं बोल रहा हूँ. अर्जेंटीना और फ्रांस, विच टीम हैज मोर चांस? भाई ऑन पेपर कुशाल मैं जाऊंगा चांस फ्रांस के साथ, लेकिन जितना डीप जाएगा गेम, आई थिंक अर्जेंटीना इज बेटर. एक ग्रिट, डिटर्मिनेशन प्लस एक बेटर डिफेंस, और उनका बेंच आर्गुबली इज एज गुड एज फ्रांस, कंसिडरिंग फ्रांस के जो इंजरीज रहे. आई नो मार्कस थोड़ा बहुत अच्छा लगे आज. आई नो अगेन कोलोमोनी स्कोर्ड, लेकिन हैज कोमन गॉट सो मेनी मिनट्स, हैज कामाविंगा गॉट सो मेनी मिनट्स? नहीं. वेयर अर्जेंटीना के पास में आई थिंक लोटारो मार्टिनेज, एज मच एज इज नॉट लुक गुड, उसके पास है क्लच मोमेंट. आई स्टिल फील दैट they still have a Di Maria coming back from injury. They still have a Dybala who's hardly got minutes, I know. तो उनके पास भी है options यार. Papu Gomez, we all are forgetting. He might be fit for the final. Who knows? I feel Scaloni will field a team to counter Griezmann. अच्छा, तो आपको लग रहा है, there was a comment पहले कि Guido Rodriguez can play, but I think Paredes will do a job. Paredes will do a job on him. That's what I personally feel. Enzo will be a main passer as well as a tackler, लेकिन Paredes will be a, जो एक होता है ना मार्किंग मैन वाला चीज Paredes कर सकते हैं. स्कलोनी को सलूट बिल्कुल. आई थिंक अगेन मोरक्को के कोच को सब आई थिंक सलूट भी यार. आई थिंक दोनों हैव बीन द कोचेस ऑफ द टूर्नामेंट फॉर मी. आज थोड़ा गलत कर दिया तो इसलिए स्कलोनी को ज्यादा दूंगा मैं. इफ एम्बापे विंस देन ही विल बी माय बिगेस्ट विलन. ओ माय गॉड, नोबडी विल इवन केयर ऑफ ओन. एग्जैक्टली, दैट्स द होल पॉइंट. या न्यू जनरेशन मैनेजर. इनफैक्ट काफी लोगों ने स्कलोनी को कंपेयर किया है टुकल से. जो उनका टैक्टिकल माइंडसेट है ना, टूकल से कंपेयर किया बहुत लोग. अरे भाई थैंक्स यार, थैंक्स पिज़्ज़ा, एब्सोल्युटली गुड नाइट टू यू एज वेल. लेकिन वी नेवर स्टॉप स्ट्रीमिंग, वी हैव बीन स्ट्रीमिंग ऑलवेज. वी स्ट्रीम बिफोर द वर्ल्ड कप एज वेल. क्लब फुटबॉल विल बी बैक. यहाँ पर हम कवर करते हैं टॉप 5 लीग्स एज मच एज पॉसिबल. ट्रांसफर मार्केट इज ऑन, तो वी विल ऑलवेज बी स्ट्रीमिंग ब्रो. और नॉट जस्ट यहाँ पर,
हमारा एक दूसरा चैनल भी है ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस, सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दैट एज वेल. अगेन इट मीन अ लॉट अगर आप लाइक कर सको. भाई सब लोग अपना लाइक टारगेट रीच हो गया ना, सब्सक्राइब टारगेट भी रीच करा दीजिए यार, फाइनल फाइनल तक हो सके तो प्लीज. लेट्स गेट टू 7K एज मच एज पॉसिबल. गोल्डन ग्लोब, हाँ, गोल्डन बॉल यू मीन. गोल्डन बॉल मेसी यार, ऑलरेडी मेसी के घर में पहुंचा दो. एज मच एज ग्रीजमैन बहुत अच्छा रहा है, मेसी. मैं खाली बोला था अगर मेसी सेमीफाइनल नहीं जीतते तब ग्रीजमैन को चांस था. नाउ दैट मेसी हैज वन एंड ही हैड अ मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस उसमें भी, तो मेसी यार. लेकिन गोल्डन बूट देखना पड़ेगा अभी. आई स्टिल फील दैट एम्बापे हैज अ गोल इन हिम. या दिवास, आई हियर यू. Playing against Argentina for once in the World Cup, I don't know why. Well, you have supported every team who is playing against Argentina for once in the World Cup. I don't know why. Wait 1 second. So Madridista, I have supported Netherlands because Netherlands has been my team from 1994. I'm not like a fan who's become a Netherlands fan yesterday. तो वो है रीजन. और आई ऑलवेज न्यू दैट नेदरलैंड्स अर्जेंटीना होने वाला है क्वार्टर फाइनल्स. उसके बाद में एंड आई ऑलवेज सेड, अगर आप मुझे फॉलो करते हो फ्रॉम वेल बिफोर, आई हैव बिन द फैन ऑफ अंडरडॉग्स एंड दैट इज व्हाई मैं चेल्सी फैन बना था द वेरी फर्स्ट प्लेस 1999 में. दैट्स हाउ इट बिकेम. सो फॉर मी इट इज अ फैक्ट दैट आई ऑलवेज सपोर्ट द अंडरडॉग. प्लस अगर मेरी टीम नहीं है, दैट इज इंडिया और नेदरलैंड्स आर नॉट देयर, आई विल सपोर्ट द टीम व्हिच हैज मोर चेल्सी प्लेयर्स और मिलान प्लेयर्स ब्रो, बिकॉज मैं दोनों को ज्यादा सपोर्ट करता हूँ एज अ क्लब फ्रॉम अगेन लेट 90s. तो दैट इज क्वाइट नेचुरल. आप सपोर्ट उनको, आप यू हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर, बट ऐसा नहीं कि यार आई वांट अर्जेंटीना टू लूज और समथिंग लाइक दैट. प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. सो आई डोंट नो व्हाई इज दैट, बट अगेन I don't know if I might have misunderstood your point. Scaloni's inspiration Ancelotti. भाई Ancelotti is again I'm a huge Ancelotti fan. आपको पता ही नहीं है, पता है कि नहीं, आप जितना देखते हो मेरा चैनल. If Argentina wins, all will cry. Football fans, Messi haters, and Messi fans. Ha! This is an important one. This is a nice comment. भाई comment of the day ये है absolutely. Will Messi win Golden Ball? 100%, 100% लिख कर ले लो मेरे से, लिख कर ले लो. मैं अभी स्टैम्प पेपर पर लिखने को तैयार हूँ. अनुभव 100 गोल्डन बॉल तो जीत रहा है वो. या मतलब ठीक है, मतलब पास का पास है, फॉरगेट यार, मतलब मच लव टू यू. माय कंपनी वांट्स टू स्पॉन्सर यू, हाउ कैन यू कांटेक्ट यू? भाई द अननोन गाय आई हैव, दैट्स नाइस टू नो, ग्रेट टू नो इन फैक्ट. You can contact me on my email ID, and my email ID is there in my about section of my channel. तो go to my about section, you can write to me on my email ID. वहां पर मेरा email ID आपको मिल जाएगा. चैनल में about section होता है, right, when you go to YouTube channel. तो दैट इज वन वे. सेकेंड वे इज यू कैन डीएम मी, सिंपल एज दैट. आप डायरेक्ट मैसेज करो मुझे. all my streams have my contact below, and that's contact of Twitter, Instagram and Facebook. मैं Twitter और Instagram तो 100% देता हूँ. So you can contact me on Instagram, DM me, or you can send me a message on Twitter if you are following each other. But yeah, definitely it's Almighty Blues FC on Twitter, Almighty Blues FC on Instagram, and Almighty Sports 2 दूसरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है. दोनों में से कहीं भी कर सकते हो आप. और यू कैन जस्ट गो ऑन almightycricketTV@gmail.com, which is my contact information about section. आपको मिल जाएगा. Thanks again. Now we'll talk about it. Messi and Peter Drury. We have some unfinished business. So, bye if you don't mind. ये मैं ऑफलाइन लूंगा यार, but again I don't want to remember the bad memories. I am a Messi fan, but even if Argentina win World Cup, I'll respect Ronaldo, keeping the GOAT debate aside, because he motivates me to do a lot of hard work. That is the way to look at things, yeah. Brilliant, brilliant, that absolutely. Golden Glove. Golden Glove, I think by clean sheets, if I'm not wrong, Bunu का ही रहा है सबसे ज्यादा. I think it'll be Bunu. It'll probably be Bunu. Pretty sure it'll be Bunu, right? And I think not just clean sheet, he has been very effective in this tournament. Livakovic can have a say. Chesney might have a say अगर वो जाता deep. लेकिन I think I'll have to go with the हाँ Emi Martinez, why not? लेकिन I think clean sheets Bunu. I'll go with Bunu. हाँ यार, why not? Both can win. I don't think ऐसा कुछ रूल है, दोनों जीत सकते हैं. देखो विशाल ने शेयर कर दिया. भाई विशाल, बिग अप यार, एब्सोल्युटली. या बुनू, मुझे भी लगा एब्सोल्युटली मेसी हैज अ ग्रेट चांस ऑफ कलेक्टिंग ऑल द अवार्ड्स. इनफैक्ट मैंने ये पोल इसलिए डाला यार, आई जेन्युइनली बिलीव दैट. बट अगेन यार, थैंक्स अ लॉट फॉर एवरीवन टू बी हियर. भाई इट्स पास्ट 3 AM. ब्रिलियंट स्टफ. लेकिन as always, like I said, a fan channel for all to see, and we'll be back very soon. We'll be live tomorrow. आज in fact we'll be live on Almighty Sports Plus. हमारा दूसरा चैनल है, चेक करिएगा डेफिनेटली. Get
closer to our subscribe target as well as like target, just the press of a button. Membership is available on this channel. Check out the perks. बहुत सारे चीज आने वाले वहां पर. And yes, remember, भाई परसों यहाँ पर भी वापस लाइव आने वाले. There will be videos, shorter videos as well coming back. I'm not 100% well abhi bhi, but great to have you all. Congratulations to France. By history created fourth European team to go back to back World Cup finals. ब्रिलियंट स्टफ. लेकिन अर्जेंटीना वेटिंग भाई. मेसी एंड अर्जेंटीना, अब देखते क्या होता है. कमिग्रेशंस ऑब्वियसली टू क्रोएशिया कल के लिए, और आज ऑब्वियसली मोरक्को. बट यार दोनों टीम्स कैन होल्ड देयर हेड्स हाई. एब्सोल्युटली मैं बोलूंगा 100%. नो प्रॉब्लम अंश, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. चिन्मय भी बिग अप यार. चिन्मय, अनुभव, मेसी, डबल गोट, विशाल तिवारी, डेविड, अनीश, अनुभव, अननोन गाय, पिज्जा, मेड्रिडिस्टा, अनीश, पता नहीं, विशाल मेड्रिडिस्टा, आई थिंक मैंने ले लिया, दिवास, डेविड भाई, आशीष, सबको बिग अप यार. एब्सोल्युटली कुशाल भाई. सब लोग भूलना मत टू लाइक द स्ट्रीम. एंड रिमेंबर, देयर इज समथिंग इन द डिस्क्रिप्शन. वो चेक करके सुना. इट इज जस्ट अ सिंगल लिंक, पहला ही लाइन इन डिस्क्रिप्शन. Do check it out. It is something interesting. आप जीत सकते हैं potentially 2 jerseys, if not more, and some bonus to play along with a little investment, which is worth it. And trust me, they know their stuff. Sporticos, that is. And अभी के लिए good night, and मिलते हैं वापस आज Almighty Sports Plus पे और यहाँ पर भी as always. Bye. Good night.